श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुण श्याम राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम
कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण
श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण
श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम आप सभी को मेरा हृदय से नमस्ते, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 12वीं अखिल भारतीय दिव्यांग कॉन्फ्रेंस में। और आप लोग आए इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, हम दिल से आपका स्वागत करते हैं। इस वर्ष की जो हमारी थीम है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड डिसेबिलिटी इंक्लूजन, अर्थात कैसे हम ना कि सिर्फ दिव्यांग जनों का उत्थान कर सकें, कैसे हम प्रकृति के साथ समन्वय में रह करके इकट्ठे भारत और विश्व को सुरक्षित कर सकें एवं आने वाले वंश, आने वाली पीढ़ी के लिए भी ऐसा कार्य करें कि उनको उसका आनंद मिले, लाभ मिले। आज हम देख रहे हैं दिल्ली में जो प्रदूषण है, शायद ये आज की स्थिति नहीं है, ये पिछले 20-25 वर्षों का जो कृत्य है जो हमें भोगना पड़ रहा है। इसी प्रकार से अगर हम प्रकृति एवं सारे विश्व को एक साथ ये संदेश देते हैं कि अपने बारे में न सोच करके आने वाली पीढ़ी को भी उनके भी बारे में सोचें, तो ये उचित होगा। इसी कारणवश इस साल की हमने जो थीम रखी है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड डिसेबिलिटी इंक्लूजन। आज अगले 2 दिन हम इस पे बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, विषय रखे जाएंगे एक्सपर्ट्स के माध्यम से, और इससे कुछ निचोड़ निकलेगा उसको हम इंप्लीमेंट करने का
प्रयास करेंगे। लेकिन 12वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस डिसेबिलिटी की शुरुआत करने से पहले हम आह्वान करते हैं भगवान श्री गणेश का, जो सारे विघ्नों को हरते हैं, जो आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जो रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं और हमारी बुद्धि, हमारे विकारों को कम करके बुद्धि में प्रगति लाते हैं। मैं सबसे विनती करूंगा कि सब खड़े हो जाएं और श्री गणेश जी का स्मरण करें। जब ये गणेश वंदना चलेगी तो मेरी आप सबसे विनती होगी कि अपने मन में ओम श्री गणेशाय नमः का मानसिक जाप करते रहें। क्या हम गणेश वंदना लगा सकते हैं? जी। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसताराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धन्यवाद। आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। गणनायकाय गण इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण विषय से, पार्टनरशिप्स। एक दूसरे के बिना हम अपूर्ण हैं, एक दूसरे के साथ के बिना हम अपूर्ण हैं। हाउ कैन वी कोलैबोरेट एंड क्रिएट अ स्ट्रक्चर which can not only uplift ourselves but everybody else. To discuss more about it, I'm going to call my dear friend Shri Atul Bhatnagar ji, who is the advisory board member of Sarthak Educational Trust. But before I give an introduction, let me play a short video. Let me get a short video reach out to all of you about Sarthak, how it started and what we have done in last approximately 17 to 18 years. So can I request the team to play the Sarthak short film, please?
विश्व में दिव्यांग लोगों की संख्या 1 बिलियन के करीब है और भारतवर्ष में 100 मिलियन दिव्यांग लोग हैं। – 2004 में मेरा हेरिडोमैक्युलर डिजेनरेशन के कारण से आंखों का विजन चला गया। जब खुद इस प्रॉब्लम से जब गुजरा तो ये निश्चय किया कि इस तरह का एक संस्था बनाया जाए विच कैन गिव लाइवलीहुड टू पीपल विद डिसेबिलिटी ऑल अक्रॉस इंडिया। अपना एक हाथ ऊपर करो सब और राउंड राउंड मूव करने हैं। स्टॉप। बहुत सी डिसेबिलिटी ऐसी हैं जो बचपन में अगर हम उसके ऊपर काम करें तो उसको मिनिमाइज किया जा सकता है डिसेबिलिटी को। उस सोच के साथ सार्थक का अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम हमने 2014 में शुरू किया। सार्थक के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो मार्केट ओरिएंटेड स्किल्स में है और उनको रोजगार से कनेक्ट किया जाता है। पहला प्रोग्राम जीत है, जॉब एंटरप्रेन्योरशिप एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। दूसरा प्रोग्राम हमारा डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तीसरा प्रोग्राम हमारा कैंपस कनेक्ट प्रोग्राम है और फोर्थ हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पेशली फॉर पीपल हु आर विजुअली इम्पेयर्ड। सार्थक ट्रेनिंग सेंटर नहीं, एक फैमिली की तरह है। एक पर्सन को इस काबिल बनाते हैं, वो डिसेबिलिटी भूल जाते हैं। जो मुझे लाइफ में सक्सेस मिली है आज, जिसके बदौलत मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, उसमें सबसे बड़ा कारण सार्थक है। मैं सार्थक को अहम भूमिका देता हूँ। मैं आज जिस प्लेटफॉर्म पर हूँ वो सार्थक की वजह से हूँ। मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई है और एक सिक्योर जॉब मिल गई है। 2016 में हमने रियलाइज किया कि सार्थक अकेला हर दिव्यांग जन तक नहीं पहुंच सकता। हमें जो एनजीओज हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ पार्टनरशिप करना पड़ेगा और उसी सीरीज में फिर हमने 2016 में इस प्लेटफॉर्म को बनाया जिसका नाम इंडिया डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट अलायंस आइडिया है। How does a person feel empowered? When he or she has all the information that is reliable and it is something that they can use. So CAP Sarthi is giving you that information. Gyan Sarthi is giving you the tools by which you can train yourself. After that, where do I get employment? That's where Rozgar Sarthi comes in. The very purpose that I came into the fold of Sarthak was because Sarthak is also engaged in skill development of PWDs all over India. So through those centers, we plan to reach out every single PWDs who excels on these life skills which NAI sort of undertakes to test and skill up people. डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल का जब मैंने हाथ पकड़ा तो मैं ऊर्जावान हो गया। क्या सोच है, क्या गहराई का सोच है, कितना व्यापक दृष्टिकोण है, कितना सार्थक प्रयास सार्थक का है। ग्लोबल रिसोर्स सेंटर एक तरह का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड भारतवर्ष में जितने भी डिसेबिलिटी हैं उनके लिए, अगर हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिहैब की बात करें, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्किल की बात करें, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एम्प्लॉयमेंट की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करें, वो सब एक ही प्लेस पे हर पर्सन विद डिसेबिलिटी को छोटे से बड़े तक मिल जाएंगी। सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल जी ये पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट की ओर से। दो 2008 में जो एक व्यक्ति से शुरू हुआ था वो स्वप्न 2030 में 1 करोड़ दिव्यांगजनों से
एक नया माइलस्टोन अचीव करेगा। हम इन सभी विषयों पे बात करेंगे आज और कल के दिन, लेकिन अभी के लिए मैं अपने मित्र श्री अतुल भटनागर जी, जो फॉर्मर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के, उनके नेतृत्व में एनएसडीसी ने बहुत बड़े प्रोजेक्ट किए स्किलिंग के पूरे भारतवर्ष में, जो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के सर्विसेज इंडस्ट्री में स्किलिंग का इम्प्लीमेंटेशन एनएसडीसी ने किया। उसमें बहुत सारा श्रेय श्री अतुल भटनागर जी को जाता है। ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर with over 20 years of banking experience. He has passed out from IIT Kanpur and he has worked with esteemed organizations like Citibank, HSBC, Barclays. He has been a pioneer in ensuring that skill development, आपके हुनर ही आपकी पहचान बने, इसके लिए अतुल भटनागर जी ने बहुत मेहनत की। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अतुल जी। Good morning to you all, and thanks Siddharth for that glorious introduction. Now, we are starting the first panel discussion, and there are going to be a series of other panels in the during the day. The agenda is already there, and some of you would have seen it. Now, about this panel, our session will bring together government, corporate partners to strengthen collaboration for disability and inclusion. Now, key highlights would include that we are talking about SDG 17, SDG 17, where the focus is strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development. Now, the 2030 Agenda for Sustainable Development is universal and calls for action by all countries, developed and developing, to ensure that no one's left behind. It requires partnerships between governments, private sector, and civil society. Here, civil society will be represented by me, Sarthak Education Trust. And the SDG goals can only be realized with a strong commitment to global partnership and cooperation. Now you'll see that our panel has a mix of people from the government. The lady from the government is not here right now, but will be very soon here, and corporate honchos, I would say. So let me just bring to the table now first Mr. Rajiv Taneja. He is from Honda India Foundation. Ms. Richa Kapoor from EvaluaServe. Please continue. Mr. Prabhakaran Balasubramaniam from Mahindra Auto. And Anantika Singh from Pernod. We are awaiting the arrival of Manmeet ji. Yeah, Ms. Manmeet ji. She is the Additional Secretary for Department of Public with Disabilities. So I would introduce each panelist when we bring forward a question for them to answer or give their opinion on. This program is going live on YouTube and Facebook, so it's got a much wider audience than the people sitting in this room. So let me start now. Of course, Manisha Patilji from Diversity, Equity and Inclusion
leader from Amazon is not here. She had to cancel at the last moment. But may I just mention, look, how when we talk of partnership and collaboration, there's already something tangible that has come up, and that is the Global Resource Center in Gurgaon, Sector 45. And that's thanks to Amazon giving a pretty substantial support to get that made. So it's already one example, and there are many more, of course. But I'm saying if you go to the Global Resource Center, which I request everyone should go sometime or the other, you will see how these collaborations are creating something new, something for the people with disabilities. So it's not something that we're going to be talking about for the first time and then create a chart, but the road is already made. Now it's a matter of taking off from there. So let me start with Rajiv Taneja. Rajiv Taneja is a seasoned professional with over 3 decades of experience in the automobile manufacturing sector. His career spans diverse domains from engineering and production to information technology, reflecting deep industry expertise and adaptability. He now serves as the CSR head at Honda India Foundation, where he leads initiatives focused on community development and responsible growth. Rajiv's journey showcases consistent excellence, strategic insight, and a commitment to meaningful social impact. So Rajiv, please tell us about Honda India Foundation. What kind of a program do you have for people with disabilities? How's the management looking at it? And how are you fitting it with all your projects that you have right now running? Over to you. Hello. Good morning, everyone. So I am Rajiv Taneja and I represent Honda India Foundation. Thank you for having me here. Honda India Foundation is a CSR arm of all the Honda Group companies in India. So there are 9 Honda companies, Honda two-wheelers, Honda cars, Honda power products, and so on, R&D. Like this, we have 9 companies. And this Honda India Foundation is kind of umbrella for all the group companies of Honda in India. Now, we formed this foundation in 2019. And since then, we actually decided on the 5 major pillars or domains we would call where we are, serving the community. The first one is the road safety. The second is the environment sustainability. Then it is healthcare, skilling, and rural development. Now, starting with the first pillar, which is road safety. India is still one of the largest, the maximum deaths happen in India compared to the overall world is still the largest deaths which are happening in India. So Honda being a mobility company, we decided to focus more on the road safety aspect because I think it is an area which is a kind of neglected in India. From the CSR perspective also, if you see, companies are spending their money in various areas, various SDGs, but road safety is something which is not being focused. And because the maximum deaths are happening because of the accidents and the careless attitude of the people. So this is one area where we thought we need to work, and almost like 35% of our spendings go in the road safety domain. Honda has taken a target of 0 traffic collision fatalities on Honda automobiles, continuously working towards this area. Second, the environment sustainability. Again, there we have taken, globally, we have taken a target of becoming carbon neutral by 2050. So various activities are also being done in this area. And the other areas like skilling, healthcare, and the rural development, which I spoke about. Now coming to skilling. Skilling, we have almost now trained close to 13,000 beneficiaries, and this is the 3rd running year when we started this program.
See, we are working for providing skilling to in almost now eight domains, and the idea is not just to skill the people, it is skilling to employment. So at Honda India Foundation, we ensure that anybody who comes for this program, it's like a 3-month vocational program, they get 100% employment guarantee. And the courses are like retail, apparel, beauty and wellness, ITES. Then we have the future skills like solar PV, EV technicians, GDAs, and hospitality sector. So these are the eight domains where we are providing skilling. It's a vocational course for 3 months, and then we thought that why not venture into the PWDs area. So the skilling was being provided, but until now we were not focusing on this domain. So that is how recently we signed a MOU with Sarthak, and we will be now training the PWDs. We have kind of adopted a center at Bangalore, and this is how our journey will begin with Sarthak now. Thank you. That's very encouraging to hear that you've got a separate program for PWDs. And now I'd like to introduce Ma'am Manmeet Kaur Nandaji. She serves as the Additional Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, where she leads national initiatives for disability empowerment, inclusive policy formulation, and social welfare for reforms. With a distinguished career across key government roles, including the Cabinet Secretariat, she has been instrumental in strengthening disability inclusion frameworks and driving collaborative efforts with state and international bodies. Manmeet ji, it'd be nice to know what kind of policies, and you've done some groundbreaking work. Now, how to take it forward? You've got in the panel a lot of people from the corporate side. And one of the things we were talking offline was, look, is there, when it comes to CSR, can there be, I wouldn't say a quota, but can there be very active discussion within the corporates of how CSR for PWDs can be allotted, so that it doesn't become a case of having to keep seeking approvals and getting the benefit of doing CSR anyway. So over to you, and anything else that you'd like to inform, because this is a forum which is going live and it's there on social media channels. A lot of people will benefit from your views. Thank you. Thank you, Mr. Bhatnagar. A very good morning to everyone here, everyone also who's joining us online. I only wish to, I hope the online content is completely accessible. Is there a sign language interpretation that is happening? All right. And there is a focus on the sign language interpreter while we speak. And there is also closed captioning available. Great. So this is the first step that the department looks at. How accessible are we to our stakeholders? And if they can hear us, and if they can see us, and also hear and listen to us through different mediums of communication, we have broken the first barrier. And that's the second level that we would look into, is forging hands with many companies like on the panel here in the audience, both online and offline. CSR plays an extremely important role, like the non-governmental organizations, the parent communities, the caregiver communities, the various schools which are both funded by the government, partially funded, or privately run. There are many players in this entire ecosystem, and together with that convergence, along with the department, have we been able to come wherever we are standing today. So my deepest regards, and I convey my thanks to everyone who has worked in the field of disability so far. But this is just the tip of the iceberg. And it is through convergence with the private sector and with private organizations and the NGOs that we need to take this work forward. Why so? The budget of the government will be a restricted amount.
but the requirements of the disability sector are only increasing. And with the RPWD Act, where the number of categories of disabilities increased from 7 to 21, the estimate of number of people with disabilities in our country, we are still looking at the 2011 census. There are a lot of people who are still getting addressed by private stakeholders in our country today. And I think with CSR approach, the last mile connectivity can fit in beautifully here. We at the department have signed MOUs with more than 101 startups working in the field. They are not just startups in assistive technology or high-tech technology. They are startups who are also, through the use of AI, creating apps that can help in teacher training, apps in which teachers can monitor the improvement and progress of the PWD students. It is through apps like this, there is something known as a mood meter, where you can understand and the mood of the PWD individual who has either come to you for counseling, or he or she is mentioning what mood he is in today, and you can adapt your therapy session, your counseling session, your teaching session accordingly. Because mental therapy, mental knowledge about individuals' space, mind space, is also very important while we provide rehabilitative services to them. We are also conducting Purple Talks in our department. We have had a series of Purple Talks, maybe 3 of them. Purple Talks are again dialogue with the private sector, where we engage with corporates, we engage with stakeholders, we engage with research organizations, we engage with academia, understand what is being studied and read about, the different new technologies that are there, how new startups coming up with assistive aids can be utilized in this entire forum. Our biggest CPSU and the only CPSU in our department and under a Section 8 is ABILYMPICS, that provides assistive aids and technologies across the length and breadth of the country. ABILYMPICS itself manages to raise about 100 crore CSR on their own. But I think that again is a very small amount. There are many people who exist there but do not know where to spend their CSR money. And I think the CSR financing should not be short term. I think that is one change that we should look at, especially when corporates or private individuals or high net individuals want to invest in this particular sector. I think this sector requires at least a 3 to 5 year cycle, because with the CSR we would want to provide not just assistive aids or a scholarship at one point of time. We would want to provide rehabilitative services, therapies that take a long period of time. We want to use this money to retrofit physical infrastructure or the digital ICT systems to make them more accessible. And this retrofitting again is a work in progress. It always needs to improve. There are digital formats that need to improve and improve their accessibility over a period of time. We also need to ensure that the CSR money is being used effectively, matching the requirement of the ecosystem, the mandate of the government and the sector, and the SDG goals as well. So I think over a period of time, and I look at the future in which we could also probably have a dashboard where we can reflect how CSR funds are being used, and then take that forward to understand how better we can improve them and which areas we could use them more effectively. I'll end my comments as of now. Thank you. Thank you. I believe, ma'am, you have to leave a little early, so I'll pose your question right to you at this moment itself. You talked about ABILYMPICS reaching out, and that's where, I mean, Sarthak can help, because we've got a mobile app called Cap Sarthi. And the whole idea is to reach every single PWD in the country. And that app also has, I mean, other than training programs and job requirements and your legal rights and
what are the opportunities in the area that you have. In fact, we were even wanting to put in some matrimonial alliances. Where will PWD find a partner? Not easy to the social media itself. Now, that's where I think Alimco and kind of collaboration with Sarthak can popularize their products and get a much wider adoption with them. So just a thought that came to mind, that look, this might be a good thing to take forward. Absolutely. I think we are using Alimco to forge further alliances with corporate sector. Yesterday itself, we had a company, I can't mention the name, but they are bringing a high-end device which will improve learning, and which will improve learning for the visual impaired. It helps in tactile learning so much so that I can read a graph properly. I can see a diagram very well, and will also, with the use of that technology, with my skilling, and when I get employed at a corporate, I can also present and make PowerPoint presentation, and also understand a PowerPoint presentation while it's being showed on the big screen. So this is the kind of technology that we want to finally introduce into our schools, in our skilling centers, because we are finally looking at the employability of the person with disability. We want to make them an active member of the society, giving back to the GDP of the country, helping his family and not being a burden, because they don't require that sympathy. They require an empathy and understanding. And when we talk about reasonable accommodation, is the system needs to accommodate to an individual. The individual does not need to accommodate. And we primarily forget that when we talk about reasonable accommodation. Alimco will be very happy to forge an alliance with Sarthak to be the bridge and to get access to further CSR funding, and also dissemination of information of different government programs, our skilling programs, the activities at our various national institutes, our composite regional centers. We also have early interventions and detection for children below the age of 6, so that we can identify disability right at the very early stages, provide effective intervention. Again, primary aim is to ensure that children with disabilities are brought into the inclusive education system very, very early on. Thank you, ma'am. And just another request that next door we are having this National ABILYMPICS Associations competition. These are national competitions. So these are children or people who have been selected from various parts of India. They are competing now, and they're going to form the national team of India to go across in 2027. And this is a very big competition, really, because last time around, India sent 13 people and 7 won medals. So this is an international thing. So your presence there would be a big booster for people there. I will certainly go and have a look there. And I also want to mention that our CDS, though ABILYMPICS would have different forms, but there is our CDS center at Gwalior, which we have a big facility. So if you ever want to use that facility for the training or for in-house, where you can have a training for all the participants for the ABILYMPICS, you can always come down to the Gwalior Center and have a look at it. We also are entering into an MOU with the Andhra Pradesh Medical Medical Devices Zone, AMTZ, in Visakhapatnam. They themselves also have a very big para sport area, again mentioning that they have huge space and hostel, boarding, lodging facilities, and they also are very happy to invite and host teams like the ABILYMPICS and the para athletes there, who can use that big facility. It's all completely accessible. So there are no issues there. And then to keep everybody under one roof, under one area, and to train them in their different specific skill sets, I think these centers can be looked at. Excellent. That's we need that infrastructure to be able to groom people to represent India at the international level. So it will be a fantastic thing to do. Yes, ma'am. So you're welcome to continue, or I will leave only at 11:15. I'd mentioned that I can stay only till 11:15. I thought you. I was worries. told that you're going to leave faster than that. Very glad to have you. Please. Now, next I'll come to Richard Kapoor, who is a professional whose journey
bridges creativity, compassion, and corporate impact. She transitioned to the development sector, leading initiatives in education, health, and women empowerment. She is now serving as Global ESG and CSR lead at EvaluServe, driving responsible growth and meaningful community impact. So, Richa, my question to you is, you are coming from the software industry bit, and how are you viewing that people with disabilities can integrate with the software industry on a large way, yours being an example only? Thank you. Thank you, Mr. Bhatnagar. And thank you everyone who has joined us online and are present over here. So, as Ms. Manmeet was saying, that system should align, not the individual. So I'll start from here. EvaluServe is a global IT/ITS organization providing services to large organizations. We are present across 18 plus countries. And here I represent the thoughts of everyone in the organization. So I think there are a lot many disabilities which are unseen. And we focus only on the parameters that we can see. If I talk about software industries, we can collaborate with people who have disorders and like learning disorders, who have neurological issues. And at EvaluServe, we think that every learning starts at our place. So we are providing a lot many facilities to our own employees. I'll just start here with an example. Whenever we have a job opening, with that application, we would never have a question that whether a person has disability or not, because we feel that it should be equity where it should start with. And once everyone is equal at that level, giving the credentials, and when a person fits in a role, then we would decide whether the person has that skill or doesn't have that skill. I think it's not the disability that it should decide with. So with software industry, there are many new softwares that has come up with, and which, as Ms. Manmeet has also told, that there are a lot many devices that are focusing on gauging the emotions, gauging the how the person is feeling, and then we can do the learning. So EvaluServe has also partnered with organizations which are doing work on intellectual disabilities also. And it's a life cycle approach, starting from the child, and then we are building that child into a adult who can be employable. And we have partnered with Sarthak so that we can co-create partnership, and we can take it at a level where that mature young adult can be accepted in the society, forming an ecosystem that gives them equity, the resources that are actually required for them to become empowered. That is what is required. Thank you. Thank you. I'm very happy that you were stressed so much on equity. And Sarthak's got this learning management system called Gyan Sathi. It's actually a LMS which was meant for, or rather had been in the market for all other people, but then they have advanced it and they have enhanced it for people with disabilities also. So such a system can actually work in any organization, and it gives you an equal opportunity to all to learn and improve. And it's got AI-based stuff, so it can also. So I'm very gauging with emotion. That's even I need that actually. So that's a very good enhancement for any system. Okay, next I'd like to come to Mr. Prabhakaran Balasubramaniam, who has over 3 decades of rich leadership experience across reputed organizations including GE, Tata, and Dalmia Cements. For the last 16 years, he's been serving as the head of admin, security, and CSR at Mahindra & Mahindra, where he leads initiatives fostering operational excellence and social responsibility. So Prabhakaran ji, what is, I know you are running a very big factory there, so many people, etc. What kind of steps
has Mahindra as a company taken for accommodating people with disabilities, especially you are in the manufacturing sector. One initially feels कि look, better to go into a software firm rather than a automobile firm. But please give us your views on how you're going to take this forward. Thank for you. people with Thank you for asking me this question. And first of all, good morning to everyone. Basically, this event that is the first time I'm attending this event as a panelist. I am very grateful, happy to be here. Number one. Coming back to your question, sir, that Mahindra and Mahindra presence in India almost at all locations, and we have auto sector and the farm sector. So we have two divisions. But coming back to your question that disability, how we are contributing, we are doing a lot of projects for disabled people, without any doubt. But what I am saying is that there is no compulsion. There is no compulsion as of date that you have to undertake a project for disabled people. That is what we are trying to focus. Why can't we say allocate some budget every year for disabled people, and to know, and with collaboration with other neighboring manufacturing sectors, as what is required today for them, what kind of job roles that we can create for them. Accordingly, the skilling can happen. But having said that, we have already started this for the last few years, and this year also we have signed up with Sarthak for around 300 students to be trained in skilling program, because the market requirement is going to be increased. According to the requirement that we're going to face, we need to have resources in place. For having resources in place, we have to have the right people in place. That, I always talk about the education. Education is something that we need to educate people properly, so that in the future, these people can be absolutely trained and deployed properly. So we are very much focusing on disabled people, how we can take them up, how we can educate them, how we can train them. And it is not only just as that CSR initiative, right? If I train people, say 1,000 people, how will I make sure all those 1,000 people are employed? That's another challenge that we are having. It's not only employment. How the employment is going? Is it going in a short time, or they are finding their own career from that from that particular angle? So all these things we always review. It's not that we have done as a part of CSR initiative, we have done something and left it. So we have a database as how many people have been trained, what skilling that we have provided, which place they employed, and what is their future. The future is very important. To me, that's very important. So we can place some people in one of the organizations, but from there, how they are going to travel. So that's something very important. We all should think about that. And always, I remember that I also feel that the government, the central government, state government, both, they are trying the level best. Absolutely, they are trying the level best. They cannot create job opportunity, or they cannot educate everybody as required today. But we are the people, private sector, need to understand as how we can collaborate, how we can go out and support these people. As rightly Madam Manmeet said that this particular category of people is increasing day by day. How we are going to tackle the situation, and how we can get the feel that they are also important to us, and how we can get them the feel that they are also normal people like me and you. So that's something we need to work on. We need to equally get the respect for them. We need to equally provide them the opportunity of job. We need to provide the skilling, training, education, everything, so that we are ready to face tomorrow and the future.
So, Yeah, please. My only urge to the corporate sector is primarily is that we need to look at job profiles at your different companies. It needs to be broken down into simpler subcomponents and identified with the person with disability who can do that kind of job. And I also believe that on the job skilling is far more a useful way of and making that corporate job or the skill set for a person with disability more adaptable like that. For example, in the department, we have also again through a memorandum of understanding and through our Indian Sign Language Institute, and we also work with people with hearing disabilities with our another national institute at Mumbai. We started this on-the-job training program with Lemon Tree. Lemon Tree has now employed many of our hearing impaired persons with disabilities at their housekeeping. And I think the hospitality sector is one place where employment is really increasing. In fact, there is EXL, which is again a software company, who have also employed people with people with neurodivergence also in their white collar positions. We also have, along with Unikey and Gopal Krishna Foundation, also given on-the-job training for children, and it's probably ongoing somewhere, for the blue turquoise, like a rosettery, a brewery. Blue turquoise, we've also done it with another coffee place. We also have employed kids with hearing impairment at Baking Go. And I think now we are coming up with our third batch there. There is another solar panel engineering company who has also come forward to take in people with disabilities. So I think what is lacking is that we look at employment of persons with disability as I'm just broadly saying that. I don't mean to identify particular companies in doing that, but it's broadly seen that, okay, we need to check this box and we need to employ 1 person, 2 persons, or 10 persons. I think when we move away from that and move away to the fact that we need to create accessible working environments, create SOPs that are accessible to people along the disability spectrum, identify jobs that they can do very well, create buddies at work where non-disabled people are a buddy to a freshly employed person with disability, and ensure that their first 1 or 2 months is taken on smoothly. Then I trust me and believe you me, these people are the most sincere, most hardworking, and extremely good workforce to have within the organization. Thank you for bringing this point out, especially with Lemon Tree. In fact, we've got stats from Lemon Tree saying that in the hospitality sector, in the housekeeping, they have a person with disability does 21 rooms, and a normal so-called able-bodied person does only 18 rooms, because these people don't take time to do WhatsApp break and telephone break and whatever. So they are very committed, and they're very loyal. They don't jump jobs just because somebody's giving 1,000 bucks extra, and they perform very well. So that productivity itself is something that I would expect everybody to really know and ruminate about it and make it happen, that you take people with disabilities. Second thing, during COVID, when it became very clear that people weren't able to move out from the house and work from home became a concept. Now that's a silver lining for people with disabilities. Why? Because some of the HR people that I'm part of, many WhatsApp groups, they said, look, we want to now strip away on a job which can be done from home, see whether a person with disability can do it from home. You don't have to move out. Correct? And you can do all the follow-ups, and with all that you need is a Wi-Fi and a Zoom call, and that's it. You're employable. And then you can be reaching any part of India. So you don't have to step out of the house and worry about accessibility and all the other things that
are usually talked about. So these are things by which you can increase the number of people that are coming out. One fun fact, I have a neurodivergent group D employee at office, and he reminds me every single day, Madam, aaj fir se aap late aaye hain. So they are punctual as well, along with being loyal. Thank you. Thanks for that. Yeah. Pardon? To add something. Yeah. Basically, we have experienced in India that wherever we go, I have been to many Indian banks for some or other work. There I have seen the person who's disabled. He faces the customers, and he's such a very professional person who sits over there. And the kind of welcoming he gives, and the kind of work that he does, and I felt that the person is more and more talented than others. And at the end of the 5 minutes, 10 minutes, interaction with them, I always salute that person, because he is very fast and he is very professional. And the respect he gives people, I think we must learn from these people. That's what I need to say. Thank you. Thank you. Second, the responsibility of these people, it's all lies with every individual, every citizen of this country. So my appeal to everybody, why only public sector, private sector, even in our societies, we can do some sessions, we can collect data, surveys, and we can help them out. If we want to do, we can do it in the very big, professionally we can do, and we can achieve, we can come out of the situation, and we can also make them comfortable in the society. Thank you. Okay, we just take a diversion. We want to put this Global Resource Center, there's a small video for it, just a 2-minute video, and then we'll come to Madam Anantika. Yeah. Sarthak Educational Trust is a brainchild of Dr. Jitendra Agrawal, who lost most of his eyesight overnight due to a rare eye condition. From a one-man effort to setting up an entire organization with 26 centers across India, from free training and job placements for 8 youngsters to over 1 lakh youngsters, it has been a long, rewarding journey for Sarthak. In the process, it has created ties with over 100 CSR groups, over 5,000 corporations and more than 1,000 NGOs under the India Disability Empowerment Alliance that has directly or indirectly impacted 15 million lives. क्या सोच है, क्या गहराई का सोच है, कितना व्यापक दृष्टिकोण है, कितना सार्थक प्रयास सार्थक का है. Sarthak Global Resource Center approaches the issue of empowerment in a holistic manner. It starts with Vision in the Dark, a meticulously curated immersive journey that makes visitors experience life with visual impairment. This changes perceptions not only towards the visually impaired, but the disabled community at large. Having experienced some of the challenges, a visitor can then look at some of the solutions by visiting Sarthak's Ability Museum, where a quiet revolution unfolds. Assistive technologies from the simplest to the most advanced, designed for empowerment and inclusivity. From technology, we turn to human intervention. It begins with children. Sarthak Center of Excellence for Early Intervention is run by a team of psychologists, occupational therapists, speech therapists, vision therapists, and special educators, providing personalized therapies and group programs for children of all age groups. We then come to the issue of young adults and employment. SGRC boasts of multiple resources in the field of vocational training, such as SGRC Retail Lab, training PWD students from across India in both online and offline modes.
SGRC also houses the offices of the National ABILYMPICS Association of India. It has facilities for training candidates and hosting competitions and conducting activities across India. All of this to promote skilling as well as enable India's brightest PWDs to shine on the international stage and bring glory to the country. Sarthak is creating a collaborative ecosystem where startups, disability experts, corporate partners, NGOs and investors come together to develop solutions for India's PWDs. Global Resource Center is first of its kind international standard infrastructure in the country where we have all the services for all disability. The prime objective of GRC is to monitor our program digitally and physically across the country in 20 states and covering 300 districts and around 1,000 locations in the country. The second objective is to empower each disabled person in the country. So Sarthak alone cannot empower each disabled person. That's why we have empowered with 1,000 NGO partners called IDEA, where we are bringing them to train them on their programs. At the heart of India's journey towards a more inclusive future stands the Sarthak Global Resource Center. This center is not just a leader in disability intervention. It is a groundbreaking milestone for the non-profit sector in India. Thank you. Now, let me come back to the panel now. Ms. Anantika Singh is the General Manager, CSR at Pernod Ricard, India, where she leads the company's nationwide social impact and sustainable strategy. She has championed initiatives in environmental stewardship, gender inclusion, and community well-being. Avantika continues to drive CSR programs that seamlessly blend conservation, inclusion, and innovation. Avantika ji, your industry is slightly different. It raises spirits a lot. So we would like to know how you can include people with disabilities. And you know, that's one thing I just wanted to have for the entire panel. We've got a very large distribution retail network through which your products and services go out, especially everywhere you can reach every part of India. So whether you're a distributor or a retailer or a service showroom, whatever it may be, why can't people with disability be employed there? Because they are under your direct control. I mean, when you sign an MOU with one of your distributor, retailer, you've got the, let's say, the power to say, okay, look, we want so many people to be employed or such percentage. Because the reason I'm bringing this up is, it's also known that 75% of the people with disabilities are in the rural areas. They are in tier 3, tier 4 and those kind of towns. So I don't expect corporates to be setting up shop there, but your products are being sold there. So whether it's, at the main center or there, you can work with this collaboration. We are talking of collaboration in this particular panel anyway. So yeah, ma'am, can you please? Sure. Thanks for that question, Atulji, and good morning to everyone present here and everyone joining online. Before I really jump into what we can do at the distribution centers and at production centers, I just want to take a pause and step back and talk a little bit about the philosophy of inclusion at Pernod Ricard. So as an organization, we believe that people need to be valued, and every individual has the fundamental right, so to speak, to thrive. Therefore, when we when we work either on the business front or in the CSR space, my teams and I, we're constantly challenging each other on the definition of both diversity and inclusion. What does it mean to be diverse? What does it mean, to be inclusive? I'm going to come to, what we can practically do. But if you permit me, I'll also talk a little bit about what our learnings have been through this journey. So I won't say that we've been in this space for very long, but whatever work we've done since 2018, we've been
associated with people with, disabilities or differently able people. And we've had some learnings along the way. I think one of them is to start young, right? Start right from education. How can we ensure that people with different abilities are able to get access to education, whether it is through tuitions, whether it is through special training teachers, um, you know, that's the start process. We then kind of handhold them into the employment space and the pre-skilling space, make sure that they are well assimilated into the workspace. I mean, all of this, we've done and we've got impact numbers to speak, but I think the critical learning is that it takes commitment. Working with any form of divergent people takes commitment, not only for the person with a disability coming in, but also for the corporate or the team that's trying to absorb that person in their day-to-day workspaces. And that takes time and effort, and without commitment, it's not going to come. I'd also say that, needs, they're key, because as corporates we don't have the resources. The government, the corporate, the civil societies all need to come together for this cause. We don't have the expertise also in most cases. We are trying to figure out what the right avenues are, what the right pathways are for us to work in a more meaningful way with people with different abilities. And we don't have very often the luxury of timelines, because it's a very tightly monitored sort of area. So how do we ensure that this commitment becomes real beyond, I think what ma'am said, just checking a box. We can do one or two examples or pilots where we get people in and, we kind of work with them, but what will it really take? And I think that's where the collaboration or the platform needs to come together and really simplify it for corporates here or those listening online, to really say that this is a piece of a puzzle that I can tackle, right? When we talk about people with disabilities or diversity or inclusion, it's a really big canvas that we're talking about, and therefore there are different organizations that have different roles to play. How can we simplify this for organizations that might be committed but haven't had the chance to really think about where is it that they can play to really make a difference? And that's where I think a platform really makes sense, right? Once we do that, then one of the low-hanging fruits is what you mentioned, right? Like in your distribution networks, you put it in an MOU that one of them, of the people that you hire, some of them have to have different abilities. And how do you ensure that that happens? But I feel in the absence of that, we're all sometimes clutching at straws, because you need a strategy to say that, look, this is how I'm going to make a meaning, this is how I'm going to create impact and make a meaningful difference. And that takes time, right? So for us to be part of this platform and to join hands with Sarthak is also, how do we get on a platform where someone explains this to us and tells us that, look, here's a really easy way where you can contribute to a much bigger cause. So I'm going to pause there, and I'm going to say that I think that's one area that needs a little bit more perhaps brainstorming and, saying that we've mapped it out. Here are the resource gaps, here are the skill gaps. If you focus on this through your CSR networks, then your business networks can pick this up, and that's how you create shared value. But that's how I would place it. Thank you for that. One small deviation again, diversion rather. I'd like to call Mr. Kalraji, and along with him, Pradeep Singh Kharoleji, who is the ex-Civil Aviation Secretary, Government of India, and Director General of the National Testing Agency. We just wanted to felicitate him. Mr. Kalraji, can you just come and give him a memento, please? Mr. Kharoleji had to leave just now, so just thought we'd speed this up and felicitating him. Thank you,
Mr. Karoleji, for having come here. Now, we're nearing the end of the session. Are there any questions in the audience that you'd like to put up to the panelists? Please let us know, and who you want to address it to. No questions. Everybody seems, yeah, please go ahead. Can someone, Tarun, can you please bring a mic to her? Hi, good morning. My question is addressed to Nanda ma'am. I just wanted to understand from a policy perspective, we have some great policies that are in place to assist people with disabilities, but I think a lot of times what is the biggest hurdle is the implementation part of it, because there are so many stakeholders that come into picture when we're talking about implementing any kind of policy. So what do you think from a private sector perspective? So I'm representing a family philanthropy. From a family philanthropy perspective, from a private sector perspective, how do you think we could play a role in getting stakeholders together, and how can we work with the government to make implementation of certain policies easier, so that there is more accessibility and inclusivity for people with disabilities? Thanks. I didn't get your name though, and I didn't get the Anushka. name of your foundation. Upadhyay Foundation, and my name is Anushka. Great question, Anushka. So we are, and we've realized that in the government we do implement, or we're great on the policy space for making a scheme, but we make it so intertwined in documentation that we finally move away from the ease of that, the reason or the basic mandate of that policy. And we have at the department tried to take several steps to reduce that burden. For example, through API integrations, we try and take whatever information we have for our UDID card holders, and if they are beneficiaries into another scheme, then we don't ask for it. Very recently, we have simplified our scholarship program that we provide to pre-metric, post-metric, top class, and even to PWDs who have secured admission in the top QS ranking 500 universities. And happy to announce that even as we speak today, there are about 17 or 18 PWDs only this year who have cleared and gone abroad to study. But I have realized that the issue remains in our documentation, and we are struck by that. We are trying to do an innovative pilot project as of now with Ek Step Foundation Bangalore. We are trying to create a purple portal where we on one hand have the PWDs who require different issues. It could be assistive aid of a cost which is higher than the core team or the ADIP program can provide. Have people who would be requiring a scholarship, but they do not have the necessary documentation as per the program of the government. Or it could be that they require some kind of rehabilitation, professional counseling, therapy services, which don't get covered in any kind of insurance scheme, etc. So these are the HABs here. And we're also trying to bring about the providers like HNI or family trusts or corporate sectors on the other hand, who know that there is something that we need to do. We have that policy within the corporate, but we don't know what are the ways to ensure that it happens fast. So we are trying to bring that portal of the demand, the people who raise the demand and the people who can fulfill the demand. And as we speak, we are trying to do a pilot study at Ranchi. It is primarily in the scholarship scope right now. We are identifying students who are eligible for government scholarship. However, because of lack of documentation, it could be as simple as they don't have a bank account that is connected to their Aadhaar and then linked. The EYC circle is not complete, or they
my program requires a monthly certificate signed by the respective revenue official and they have unable to get it, or it's simply lack of empathy at the school level where the principal has just not forwarded the application on time, or that there is a common facility center which is where they can, if it's visually impaired, he needs to get his credentials verified and it's just not functioning. There are as lame excuses like that, or there could be something else. So we are trying to list them as pale purple dots. That means purple that they are eligible because they are PWDs, but they are pale purple because they don't fill the governmental requirements. So we are trying to use footwork for ground soldiers to identify them right now through our different network of NGO partners. So we will have validated people whom you as providers can give whatever CSR or help that you can do. So we are trying to bring that plane, and I believe that while we were talking about this pilot and creating it and doing it, many NGOs have joined hands with us. We have somebody called Buddy for Study, again, who wants to provide tuition services to these kids to help them do better in class and school. But they also have, again, a portal which gets CSR funding from partners, and they verify those beneficiaries and identify them and help for smoother CSR transition. So I think what I can gather is that there is a lot of funds waiting to be given to the sector, but you don't know how to do about it. So maybe a specific CSR conference workshop where we can have people who want to do stuff, may not have very clear SOPs. I think we should all brainstorm together, get hold of that. Another 5-6 months, I'll have my pilot study recommendations out by the end of March. And I think in April, we can look at this and take this conversation forward. Absolutely. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. As far as bringing a platform or getting a platform for everybody to come on, Sarthak has started this idea, Indian Divyangjan Empowerment Alliance, because we are finding that a lot of good work is happening in different pockets of the country, but they're very small. They can't scale up. They don't even have, let's say, the wherewithal to be able to do a presentation, to maybe fill up a tender or whatever it may be. There are more than 1,000 such NGOs which have been brought together on this platform by Sarthak, and that can be a good starting point. You should join hands with me on my purple portal. I was very surprised by the mood meter. So I'm like, purple portal mood meter. That's Teach India, who provides language skilling, and they take up kids right from class 10, and they teach them a BCom right through, and they have employed 90% of their kids. They have about 3 centers. They have used this. I don't know what that app is called. I was trying to speak to Aman right now while I was sitting here. It's called Happy Meter. So they all need to clock in their mood when they come into the class, so that the teacher can adapt the class directions and that classroom to their mood meter that day. Fantastic. Now that's something I've learned this. Now we're going to be winding up now. Rajiv, you've heard all the people out here today and got some new views and some new ideas. What's your takeaway from here? Okay. See, basically, I think 2 takeaways. One is that as corporates, we need to, identify, put a structure in place. For example, as Honda, we have a policy of inclusivity for female diversity. Similarly, we need to now maybe add, PWD's inclusivity also as a policy. That is one. Second, again, like we were discussing, as a community, we don't need to, sympathize with the PWDs. We need to empathize. I think that is the main takeaway. We need to create opportunities for such people to not only to skill them, but to give them employment, to make sure that they actually lead a dignified way. Thank you. Richa, would you like to say about it?
So the takeaway is that we should sit in April together. Okay. Yeah, that is very important because I think it will give everyone a platform to discuss what we can do best together. Because as the theme and as the objective of this discussion is how to co-create environment for people with disabilities. One more thing that I would like to say after I've heard all of us is that I think we are doing programs specifically focus on this theme, but I think all our programs can interweave this subject together. If we are working on education, if we are giving scholarships, why not give them that opportunity? Why are we trying to make a different niche program for them? They are part of us only. So I think anything we are doing, it could be environment. If we have farmers on the field, why can't a farmer who has some learning disorder, we can train them. So let's, I think, try to co-create that system where we are aligning the systems for them and not making anything which is a separate system. Very Thank important. you. Yeah, very important. Because, you know, the PWDs that I have interacted with, they all just said, look, we want to be embraced or accepted. We don't want to be set aside. In fact, that person talked about, we don't want a quota. You know, we don't want a quota. Quota is something that we try and say, look, make people think and go in that direction. But they said, we don't. We just want to be accepted the way we are. That is a very powerful statement I heard. Mr. Prabhakaranji, what would you like to say? Closing comments. I think after hearing from everybody, very interesting stuff has come out. I think we need to do a lot. And we are at very basic sort of, situation. So the time has come that we should go back, talk to a management as what we are, where we are, how we can develop this for setting up a goal, or the goal is already there to achieve. So whatever goal that we are going to achieve, that should be sustainable goal. Because there's one area that it will be there. So we have to realize that we are there for them to take care of everything. So Thank you. I think, recently, what has happened that we are making one office facility. There, people suggested that, no, we should make one washroom for specially abled people. My personal concern was, I was trying, you don't have to implement, but I can put up my things. No? I spoke to my management. Why we need to create and putting a signal of specially abled? Why we are giving that feeling to the person, Why can't we have one common washroom where you have everything inside so that anybody can go and use the toilet? I mean, we have started talking, with those kind of things. So today, if you receive 2 people as a final candidates with one PWD, 100% sure that no, we will hire the PWD. So that is for sure. No. So we will work together, we will try a level based, and also we will allocate some more budget in our CSR funds to take care of this call. So with that, I would like to thank everyone for this opportunity given to me. Thanks. Thank you. Anantika ji, what would be your comment? Again, I'd say that, like everyone else, there is a long way to go. And I think for me, what success will be like is if in a couple of years, today we are talking about why can't we do this? Why can't we incorporate them into
workspaces or school systems or what have you. But I think the vision should be to get to a day where this is not a why can't we, but like it's the norm, right? Where they are passing through the system, or there are some jobs that are for them, right? Like where they are best positioned or best skilled to take up those jobs, whether they're in hospitality, whether they're in on some software or technology platform. I think that would be the vision, and that's what we should all get behind. Thanks. Thank you. Ma'am, would you like to add any final comment? I've spoken too much anyway. Okay, thank you very much, everyone. I, in fact, just wanted to add to what Mr. Prabhakaran just said. In terms of accessibility, we don't have to look at workspace. We look at our own home. I mean, I keep saying that another maybe 15, 20 years, my eyesight will be diminishing, my thinking capacity will diminish. God knows if I be in a wheelchair, but if I am on a wheelchair, then I should be able to enter my loo, the toilet with my wheelchair. Why should I have to look outside in my home? So if you, in fact, we did that. We opened the entrance to that when the house was being made. And why can't I have my Maggie sitting on my wheelchair? I can put the pin and do it. Why should a mobile charger plug point be down below and you have to bend? And we can do it maybe now, but why not another 15 years for me at least? So these are things, if you look from the home side, actually accessibility starts from home. When you start thinking like that, and then you take it forward, then obviously lots of things will change. As you rightly said, why should we have to say specially able? I mean, you should be accessible at all times. Okay. Now, so I just have a few mementos to give. Thank you for being here. And ma'am, Manmeet ji, aapko, I think Vijay Jodha ji will take you to the center where the NAI's competitions are happening. And who's got the Shivam? Mr. Kalra, would you like to come and give the mementos here, please? I think you, sorry. Then Sunil ji, can you please come? Sumanohara Kantiyute Sita Rajani 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 Karavatra Vrute Sonayanali Brahmara 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 Adhipate Jaya Jaya Mahisha Suramardini Ramya Kaparadini Shaya Sute. With this, we come to an end to this session. Thank you all panelists for having come here and given your valuable views and your time.
There is, next door, as I mentioned, National ABILYMPICS Association of India's competitions happening. So please do feel and make it a point that go there and have a look. Thank you very much. Thank you, Atulji, for your wonderful moderation and bringing the deep nuances of partnership between government and the corporate sector for creating an inclusive Bharat and a progressive Bharat. Many, many thanks, Atulji. Now we'll start with our inaugural panel, Sustainable Development Goals and Disability Inclusion. And to start this, can we have the chief guest? Apologies, guys. The chief guest is going to take another maybe 5 to 7 minutes. In the meantime, we'll just play some bhajans and we'll have a little bit of satsang. So kindly bear with us. The chief guest is running late by 5 to 7 minutes. Radhe Shyam Radhe
श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे Namaste to all of you again. A warm welcome to Dr. VINEET Joshi ji, Chairman, University Grant Commission. And we are delighted that he's here and we can start our next conversation, next program. Also, I must say here we have another huge pillar for Indian democracy, Shri Rajiv Kumar ji, who's ex-Chief Election Commissioner and a one who brought reforms in the electoral process, the one who ensured that democracy stands tall, and he continues to inspire the forthcoming election commissioners by his good work. Can I request Himal Tiwari ji to come on the stage? Can I request Shri Krishan Kalra ji to come on the stage? Lavarma ji is here. Can we request everyone to please stand up for the national anthem? जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे Please take your seats. Can I request Shri Neetu Mani Goswami ji, Zonal Operations Director, North Zone for Amazon, to come on the stage, please? Amazon has been a huge supporter of Sarthak and
A special thanks to Amazon for enabling the Sarthak Global Center, whom we just now witnessed. Thanks to Amazon that the initial funding was done by them, and then everybody supported. So very warm welcome to Shri Neetu Mani Goswami ji and the team Amazon. Can I request all the gentlemen on the stage to come and light the lamp of wisdom, the light of Gyan and the light of knowledge to spread all across. Let's remember and embrace Ma Saraswati and seek her blessings so that irrespective of what we do in life, our wisdom and our knowledge always supports us in all our endeavor. Can I request all the gentlemen to come on the stage? Can I request for Saraswati Vandana, everybody to please stand up and remember Ma Saraswati to bless with wisdom, might and good thoughts. ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्. माँ सरस्वती की कृपा के पश्चात हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं. And a small token of appreciation for the good work which people on the dais and people in the audience are doing. So I would request Dr. Suman to come on the stage and felicitate our chief guest, Dr. VINEET JOSHI ji. In the meantime, the felicitation is happening. Let me speak of a Subhashit, and it is prevalent in the Shastrarth, and the same Subhashit I'm going to spell it out for you. And it says like this: Pibanti Nadhya Swayam Nambha
पिबन्ति नाद्या स्वयं नाम्भा स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वरिवाः नादन्ति सस्यं खलु वरिवाः परोपकाराय सताम vibhutaya. What does this mean? It simply means the rivers which bless us with boon, rivers which give us water and life, they never utilize the water for themselves. Similarly, the trees which give us the boon of vegetation and fruits, they don't consume their vegetation. It is for the well-being of others. When the clouds bless the soil and crops come up, the clouds never seek anything from the crops or from the soil. Similarly, good people, good-hearted people, people in power, people in position who can influence, if they have good motive, good motto, they can bring lots of prosperity and change in the world, similar to the people who are sitting in the dais and lots of people who are sitting in the audience as well. Can I request Shri Love Verma ji to felicitate Shri Hemal Tiwari ji? Athithi Devo Bhava Hemal ji. Can I request Shri Krishan Kalra ji to felicitate Neetu Mani Goswami ji? Can I request Shri Ratan Lal Agarwal ji, Dr. Jitendra Agarwal's father, to please felicitate Shri Rajiv Kumar ji? Rajani, 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 Karavaksravrutte, Sonayanali, Brahmara, 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 Adhipate, Jaya Jaya Mahishasuravardhini, Ramya Kaparadini, Shaya Sute. Can I request Dr. Suman Agarwal to felicitate Shri Rajiv Kumar ji's Dharmpatni, the better half, who has enabled him to take hard tasks in life and make changes in the Bharat as a nation. Thanks for the entire support, Mrs. Kumar. Can I request Shri S.K. Gupta ji? We will call S.K. Gupta ji subsequently. Thank you very much. Now, can I start the round of presentations? A brief journey on Sarthak. Sarthak की कहानी, उसके उद्गामी बच्चे की और उसी की जुबानी डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल. Can I request Dr. Jitendra Agrawal to come and talk about the journey of Sarthak for last 18-19 years? Okay. Good morning to all of you. Thank you so much. हम लोग आज ईश्वर कृपा से 12वां नेशनल कॉन्फ्रेंस वी आर सेलिब्रेटिंग और आई थिंक हमारे बीच
हमारे जो चीफ गेस्ट हैं श्री विनीत जोशी जी, हम जोर से उनके लिए एक ताली बजा सकते हैं, जोर से। हमारे बीच जो हमारे मेंटर हैं श्री राजीव कुमार जी, जो एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और मैडम राजीव कुमार जी, हम जो दोनों के लिए जोर से एक बार ताली बजा सकते हैं। हमारे बीच टाटा पावर से हिमल तिवारी जी हैं, उनके लिए जोर से ताली बजा सकते हैं। और अमेजोन से हमारे साथ गोस्वामी जी हैं, उनके लिए एक जोर से ताली बजा सकते हैं। हमारे बीच बहुत सारे दिव्यांग बच्चे, उनके पेरेंट्स और देश भर से जो अभी ऑनलाइन के माध्यम से भी हमारे जो 20-30 सेंटर्स हैं देश भर में, उनसे तो सभी दिव्यांग लोगों की तरफ से आई थिंक हमारे देश में 10 करोड़ से ज़्यादा दिव्यांग लोग हैं, उनकी तरफ से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि हम लोग पिछले जो 17 वर्षों में देख पा रहे हैं कि डिसेबिलिटी अब एक प्राइम सब्जेक्ट बन गया है। हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, एक अवेयरनेस का स्तर पहले से काफ़ी हद तक बढ़ा है, और इस तरह के प्रोग्राम्स के माध्यम से भी अवेयरनेस डिसेबिलिटी का नंबर्स बढ़ गया है। पिछले एक वर्ष में जैसे हम लोग 12वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस किया है, 17 वर्षों में हमने जो छोटा सा काम किया है उसके बारे में मैं 5 से 10 मिनट में आपसे आई जस्ट ब्रीफ की क्या हमने अचीव किया है। हम लोग पिछले 17 वर्षों में दिव्यांग बच्चों की लाइफ साइकिल पे काम करते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम, फिर उस बच्चे का एजुकेशन, फिर उसके स्किल, एम्प्लॉयमेंट, और उस तरह से एबिलम्पिक्स, आप इसके बाजू में ही पीछे की तरफ नेशनल एबिलम्पिक के कंपटीशन भी चल रहे हैं, जो बच्चे फिनलैंड जाएंगे 2027 में। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि ब्रेक के टाइम पे आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। ये बच्चे चारों जोन से सिलेक्टेड हैं। इस साल हमने नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ 4 जोन में कंपटीशन किया, और उनमें से जो बच्चे आए गोल्ड मेडलिस्ट थे वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये फिनलैंड में से इनका सिलेक्शन होगा। और उसी तरह से कुछ हमने डिजिटल सॉल्यूशन बनाए कोविड के दौरान की, जब बच्चे घर पे थे तो इन्फॉर्मेशन एक बैंक बनाया, कैप जेमिनाई के साथ मिलके, कैप सारथी, रोजगार सारथी अमेजोन के साथ मिलके बनाया, ज्ञान सारथी हमने फिडिलिटी के साथ मिलके बनाया, और अब ईश्वर कृपा से हम एक मार्ट सारथी भी लेके आ रहे हैं अगले वर्ष। हमने क्या देखा है कि अभी बहुत सारा शॉपिंग लोग ऑनलाइन करते हैं, तो अभी ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म दिव्यांग लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं है। अगर हम अमेज़ोन की बात करें या जोमेटो, स्विगी की बात करें, अगर बच्चों को ग्रोसरी खरीदना है या कोई भी कुछ खरीदना है, दे आर नॉट एक्सेसिबल फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी। तो एक मार्ट सारथी एक इंटरफेस बनेगा उन सब प्लेटफॉर्म्स, जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, कि उस पर दिव्यांग बच्चा जाके अपने घर से ऑर्डर कर सकता है। तो ये हम लोग सोनाटा सॉफ्टवेयर के साथ डेवलप कर रहे हैं, अगले साल ये जीवंत हो जाएगा। तो हम लोग जो हमारे दिव्यांग भाई बंधु हैं वो भी अब घर बैठ के कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे हम घर पे बैठ के ऑर्डर कर सकते हैं। आई थिंक ग्लोबल रिसोर्स सेंटर के बारे में चर्चा की है, तो मेरा निवेदन रहेगा आप सब लोगों से कि आप भी समय निकाल के, गुरुग्राम में है सेक्टर 45 में, आप विजिट कीजिएगा। ये एक तरह से हब बन गया है ईश्वर कृपा से। अमेज़ोन में ने इसमें काफ़ी इन्वेस्ट किया स्टार्टिंग में, और इसमें एक डायलॉग इन द डार्क है, उसमें पूरा वो डार्क एरिया है, एक ब्लाइंड व्यक्ति आपको 30 मिनट के लिए अंदर लेके जाता है, कुछ मोनूमेंट्स टच करवाता है, कुछ क्रिकेट भी खिलाता है। तो एक नॉर्मल इंसान को लगता है कि कैसे अंधेरे में क्रिकेट खेलूंगा, बट वो फिर बोलता है आप डरिए नहीं, ये बॉल आवाज़ करेगा, तो वो फिर खेलता है। तो जब 30 मिनट के बाद व्यक्ति बाहर आता है तो एक उसको स्टिमुलेशन होता है कि इफ़ आई डोंट हैव आइज व्हाट शुड आई डू। तो उस तरह का एक एक्सपीरियंस है, आप लीजिएगा। ईश्वर कृपा से पिछले जो है 2 वर्षों में इसमें 500 कंपनियों ने, करीब 100 स्कूल्स जो एनसीआर के थे और बाहर के कॉलेजेस ने, तो इस तरह से एक अच्छा उसका सदुपयोग हो रहा है जो ईश्वर ने यूनिवर्सिटी बनाया, जो ग्लोबल रिसोर्स सेंटर बनाया, और उसमें एक एबिलिटी म्यूजियम भी है। क्योंकि सबसे बड़ी चैलेंज माँ बाप को क्या होता है कि मेरे मरने के बाद इस बच्चे का क्या होगा, तो या एक्सेप्टिंग डिसेबिलिटी, तो वो पेरेंट्स आके उधर देख सकते हैं कि ऑफ कोर्स माय चाइल्ड इज़ डिसेबल्ड, बट देयर आर सो मेनी डिवाइसेस कि वो अगर बच्चा जन्म लेगा तो कैसे वो कौन कौन से असिस्टिव एड्स यूज़ करेगा, फिर बड़ा होगा तो एजुकेशन कैसे करेगा, वोकेशनल, तो उसमें सब डिस्प्ले है, तो आप वो आके देख सकते हैं। तो ये एक जर्नी थी। पिछले 17 वर्षों में हमने करीब 1.25 बच्चों को एम्पावर किया है। बहुत छोटा जर्नी है, बट मेरे को लगता है स्टार्ट है। उसी माध्यम से हम लोग करीब 1000 हमारे आइडिया पार्टनर्स जो बनाए हैं एनजीओज, उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं ताकि हम लोग इस इम्पैक्ट को बड़ा कर सकें। 5.3 मिलियन दिव्यांग लोगों को हमने पूरा लाइव्स को टच किया है, बट ये सब नंबर बहुत छोटे हैं क्योंकि अभी हम लोग सेंसस की बात कर रहे हैं जो 2026 में होगा। तो
हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नंबर 10 से 15 करोड़ होगा, तो उसमें बहुत छोटा नंबर है। और मेरा निवेदन भारत सरकार से भी रहेगा सेंसस के माध्यम से, कि हम अभी रजिस्ट्रार जनरल साहब से भी मिले थे, कि इसको अच्छे से किया जाए। जो 2011 में हमने सेंसस किया था उसमें हमने पूरी तरह डिसेबिलिटी कवर नहीं की थी। हमने उनको बताया कि किस तरह के सवाल पूछे जाएं उनसे, किस तरह का उन लोगों की ट्रेनिंग की जाए। इसमें सबसे बड़ी ट्रेनिंग की बात है कि जो इन्यूमरेटर्स ग्राउंड पे जाएंगे वो क्या सवाल पूछेंगे, क्योंकि जनरली माँ बाप डिसेबिलिटी छुपाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा एक अलग अलग चैलेंजेस हैं उस वजह से, बट वो अगर ठीक से सवाल पूछेंगे। हमने उसमें बताया नोट में कि अगर यूएस और अमेरिका में, जापान में या ऑस्ट्रेलिया में जब सर्वे हुए तो उन्होंने सीधा सवाल नहीं किया कि डिसेबिलिटी जो है किस तरह की, उन्होंने पूछा कि कोई आपके घर में है जो 2-3 वर्ष से उसकी मानसिकता में दिक्कत है, कोई इस तरह से उन्होंने सवालों को रखा, तो वो उस तरह से एग्जैक्ट सर्वे कर पाए उन कंट्रीज में। तो वो सजेशन हमने दिए हैं। प्रार्थना करेंगे कि ये सर्वे से हम लोग एक्चुअल नंबर पे आएँ, क्योंकि अभी हम नंबर 2.68 करोड़ की बात करते हैं 2011 की। तो आई थिंक सरकार के लिए भी पॉलिसी बनाना और उस तरह से उनका भागीदारी सिस्टम में उस तरह से नहीं है। तो अगर हम 2025, 26, 27 में जो ये सेंसस है, अगर इसमें ठीक से हम नंबर ले आएँ तो वो भी एक उनका एक इम्पोर्टेंट स्टेप रहेगा, जिससे हम लोग इन डिसेबिलिटी के लिए एक्शन प्लान बन सके और वो सब चीज़ें हम लोग कर सकें। हमारे बीच में हमारे राजीव सर हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन में जिन्होंने बड़े रिफॉर्म्स किए, और आई थिंक हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है अब ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। हमें ग्लोबली जाना जाता है कि इंडियन इलेक्शन सिस्टम इज़ द बेस्ट इन द ग्लोब। तो एक बार हम जोर से ताली बजा सकते हैं कि उसके लिए कि एक उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया। ये एग्जाम्पल मैंने सेंसस रजिस्ट्रार जनरल को भी बताया कि कैसे इलेक्शन कमीशन ने बताया कि दिव्यांग लोगों को अब घर से गाड़ी लेने आती है उनको इलेक्शन वोटिंग के लिए, जो कि एक मिरेकल था, कभी सोच भी नहीं सकते थे। उन बच्चों को तो साइड में रख दिया जाता था कि आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मीन्स उनको लगता था कि ये क्या वोटिंग करेगा। बट अब स्पेशल कार उनको घर से लेके आनी जाती है। कितने सारे दिव्यांग चैंपियंस को अब नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया, ताकि ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ताकि वो एक अवेयरनेस कर सकें। आई थिंक एक क्लिक पे वो लोग अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं अगर कोई दिव्यांग बच्चा रजिस्टर नहीं हुआ। कितने सारे हम लोग बैलेट पेपर्स ब्रेल में, साइन लैंग्वेज में, आई थिंक सर ओवरऑल रिफॉर्म किया आपने। आई थिंक ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, और मैं यही प्रैक्टिसेस वी शेयर्ड विद सेंसस रजिस्ट्रार जनरल की ये इलेक्शन कमीशन ने किया है, तब आप भी ये कर सकते हैं। और मैंने ये देखा पिछले 17 वर्षों में, मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन कभी नहीं रहा सरकारी लोगों के साथ, बट एक बेस्ट प्रैक्टिस देखते हैं तो लोग थोड़ा, आई फील लाइक ही रियलाइज कि अच्छा इलेक्शन कमीशन ने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। तो सर आपने एक बेंचमार्क बनाया, और अब ये मेरे को लगता है और भी डिपार्टमेंट इस बेंचमार्क को फॉलो करेंगे, और आने वाली जनरेशन के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए। जैसे हमारे एक एग्जांपल दूंगा, हमारे एक कॉलोनी में एक बच्चा था, दिव्यांग था, उसको लोग इग्नोर करते थे, और इलेक्शन वाले दिन वो उसको गाड़ी लेने आए, तो पीपल वर आस्किंग भाई क्या हुआ, बोलते कि उनको इलेक्शन वोट डालने के लिए जाना है। तो लाइक पीपल वर, वो एक लाइमलाइट में आ गया, उसको एक मतलब एक रिकॉग्नाइजेशन मिला कि ऑफ कोर्स ही इज पर्सन विद डिसेबिलिटी, बट उसको भी राइट है इलेक्शन वोट करने का। तो आई थिंक एक हम फिर से एक जोर से इस बारे में हम ताली बजा सकते हैं। हमारे बीच में हिमल तिवारी जी हैं टाटा पावर से। टाटा पावर का जो नेशनल एबिलम्पिक्स में सपोर्ट है वो अनबिलीवेबल है, और इसमें हम टाटा पावर ही नहीं, टाटा ग्रुप्स की सब कंपनियां इन्वॉल्व हैं। कल जो बच्चे फिनलैंड जाएंगे उन्होंने पूरा एक 5 to 6 आवर्स का एक वर्कशॉप रखा है कि कैसे वो इंटरनेशनली जाएंगे, क्या करेंगे, और उनकी पूरी टीम, उनके सीईओ से लेके और पूरी टीम जो है पूरी तरह से इन्वॉल्व है इसके साथ में। आई थिंक ऑटिज़म के बारे में टाटा पावर बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसकी अवेयरनेस के लिए काम कर रहा है। एक अभी आई थिंक मूवी भी आया, आपने देखा होगा अनुपम खेर जी का, वो भी स्पॉन्सर्ड था टाटा ग्रुप से। तो टाटा ग्रुप जो है एक आई थिंक भारत का सबसे बड़ा कॉरपोरेट हाउस है। तो थैंक यू हिमल जी फॉर सपोर्टिंग दिस कॉज, और मेरे को लगता है मिलके हम इस जो हम हर दिव्यांग तक पहुंचने की जो है उसमें हम लोग आगे जाएंगे। आई थिंक मैं कुछ पॉइंट्स यूजीसी चेयरमैन सर के सामने रखूंगा, क्योंकि वो सेक्रेटरी भी हैं हायर एजुकेशन के। और सर जो हमारा एक्सपीरियंस रहा हायर एजुकेशन या छोटे बच्चे जो स्कूल में हैं दिव्यांग बच्चे, तो
अभी हम देखते हैं कि 5 या 10 स्कूलों के ऊपर एक स्पेशल एजुकेटर है। तो हमारी राइट्स ऑफ जो एजुकेशन पॉलिसी भी आई 2016 में, बट स्टिल हम देखते हैं कि एक बड़ा गैप है। क्योंकि अगर हम एक स्कूल की भी बात कर लें तो उस स्कूल में भी अलग तरह की 4 तरह की या अभी तो 21 तरह की डिसेबिलिटी होगी। तो एक स्पेशल एजुकेटर कैसे उस प्रॉब्लम को, कैसे उन बच्चों को डील करेगा, और वो भी अगर 5 स्कूलों पे, तो कितने महीने में उसका नंबर आएगा। तो मेरा निवेदन रहेगा सर आपके माध्यम से कि कैसे हम इस चीज़ को कर सके कि हम हर दिव्यांग बच्चे को हर तरह से कर सके। इसमें हमने एक रिसोर्स सेंटर बनाया था सर, आज से 10 साल पहले एक दिल्ली के स्कूल में। हमने ऐसे 20 स्कूलों पे रिसर्च किया कि उनमें 500 बच्चे थे एंड दे वर स्कैटर्ड अक्रॉस दोज 20 स्कूल्स। उनको कभी स्पेशल एजुकेटर नहीं मिला था, बट हमने एक्सेस किया, उनको पाया। उनका एजुकेशन लेवल, जो बच्चे 10th में थे वो 1st 2nd क्लास का एजुकेशन लेवल था। बट फिर हमने एक रिसोर्स सेंटर बनाया जिसमें हमने पहले उन बच्चों का मेडिकल रिहेबिलिटेशन किया। अगर उन बच्चों को अगर इंटेलेक्चुअल हैं, कोई उनको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है, कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपी की स्कूल की ज़रूरत है, तो वो हमने उनको दिया। तो पहला स्टेप हमने उनका मेडिकल रिहेबिलिटेशन रखा। फिर उनको हमने एजुकेशन के लिए स्पेशल एजुकेटर हर तरह का मुहैया कराया, और फिर उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग भी की। ये नहीं कि एजुकेशन पाने के बाद फिर वो सिस्टम से निकल जाएं, तो वोकेशनल। तो ये एक रिसोर्स सेंटर का मॉडल था जो काफ़ी स्टेट्स ने फॉलो किया। मेरे को लगता है इसको हम लोग बड़े स्केल पे भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो हमने जो हमारे देश के टॉप IIM और IITs पे रिसर्च किया कि हमारे दिव्यांग बच्चों का क्या स्टेटस है। तो कुछ लर्निंग्स थे हमारे कि जहाँ पे जो बच्चे दिव्यांग बच्चे, बिकॉज 3 से 4% का जो एक रिजर्वेशन में उसमें एंट्री पा जाते, बट अंदर स्ट्रगल करते हैं क्योंकि सिस्टम एक्सेसिबल नहीं है। वहाँ टीचर्स जो हैं वो सेंसिटिव नहीं है, क्योंकि उनका दोष नहीं है, उनको अवेयर नहीं किया गया कि भाई अगर एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा IIT में पढ़ रहा है तो उसको किस तरह के टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, उसको नोट्स कैसे दिए जाएं, उसको कैसे पढ़ाया जाए। इसी तरह से वो बच्चे फिर बाद में प्लेसमेंट में स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट कंपनियों को, तो हमने कुछ IIT मद्रास के साथ, कानपुर के साथ ऐसे काफ़ी IITs को मदद की। बट अगर एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क बन जाए इन बच्चों के सिलेक्शन के बाद, उनकी इवनिंग में क्लासेज हो, बिकॉज उनका कम्युनिकेशन लैक करता है और इसलिए वो आम IITian से पिछड़ जाते हैं। तो उस तरह का एक फ्रेमवर्क बन जाए कि ताकि उनको वर्क प्लेस सोल्यूशन की ज़रूरत है, उनको एक तरह से हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। तो वो भी इन बच्चों के साथ, आई थिंक आप देखेंगे कुछ IIT के बच्चे पीछे कंपटीशन में भी आए हैं, वो भी compete कर रहे हैं, बट हम हायर एजुकेशन को ले जा सकते हैं। और अंत में सर, एक हम अभी देखते हैं कि 17 सालों में हमने क्या देखा कि हमारे देश में ह्यूमन रिसोर्स का बड़ा चैलेंज है। दिव्यांग बच्चों की जो सेवा कर सकें, कमिटेड प्रोफेशनल्स की कमी है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो सिर्फ 30% थेरेपिस्ट अवेलेबल हैं। स्पेशल एजुकेटर की बात करें तो सिर्फ 50% स्पेशल एजुकेटर्स हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए हमारे देश में कोई B स्कूल या कोई कॉलेज या स्कूल नहीं है जहाँ पे हम दिव्यांग लोगों के लिए ट्रेनर्स तैयार कर सकें, अभी नहीं है कोई भी। रिसर्च की बात करें तो हम देखते हैं कि हर 10वां बच्चा दिव्यांग पैदा हो रहा है, बट रिसर्च ग्लोबली लोग नहीं जानते इस समस्या का कारण क्या है। तो हम क्या उसमें लीडर बन सकते हैं कि भारत क्या रिसर्च कर सकता है इस तरह की चीज़ों में? लीडरशिप और पॉलिसीज़ के कोर्सेज हमारे देश में नहीं है, तो हमने इसी तरह से एक यूनिवर्सिटी की कल्पना की है सर। और हम चाहेंगे कि UGC के जो एक है कि डीम टू बी यूनिवर्सिटी, डिस्टिंक्ट न्यू कैटेगरी में हमें एक वो उसको एफिलिएट, लाइक वी वांट टू रन दैट यूनिवर्सिटी अंडर दैट जो आपका नया प्लेटफॉर्म बना है, डीम टू बी यूनिवर्सिटी इन डिस्टिंक्ट न्यू कैटेगरी। और आपसे सहयोग चाहेंगे कि हम इसको बना सकें देश में पहला ऐसा यूनिवर्सिटी जहां हम लोग दिव्यांग लोगों के लिए प्रोफेशनल्स, ट्रेनर्स, टीचर्स, थेरेपिस्ट तैयार कर सके, ताकि अगली जनरेशन को ये चैलेंज ना आए कि वो उनके लिए टीचर्स, ट्रेनर और थेरेपिस्ट नहीं थे। और अंत में मैं आई लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू, सभी का धन्यवाद करूंगा दिल से, सभी दिव्यांग जन का, पेरेंट्स का। आई थिंक अभी तो आपके लिए बड़े आयाम खुल गए हैं। आई थिंक अभी आपके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, आप किसी भी सेक्टर में नौकरी पाने का कोई चैलेंज नहीं है। जो हम 2008 में चैलेंज था कि देयर वाज नो डिमांड इन द मार्केट, कंपनी वाले पूछते थे कि ये हाउ दे विल कम, व्हाट दे विल ईट, और उनको क्या चाहिए। अभी तो पीपल आर इन क्यू, आपको हायर करने के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं। सो अभी डिमांड इज़ वेरी हाई इन द मार्केट, चैलेंजेस ऑफ सप्लाई चेन। तो बस अब आपको स्किल को तैयार करना है अपने,
जो पेरेंट्स सुन रहे हैं और ऑनलाइन के माध्यम से भी, अब आपके स्किल को निखारना है। आपके लिए नौकरी की कमी नहीं है, नौकरी देने वाले लोग तैयार हैं, क्योंकि ये एक उनको समझ में आ गया कि हायरिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज ए बिजनेस मॉडल, ये चैरिटी का काम नहीं है, क्योंकि आपका आउटकम बेटर देन नॉन डिसेबल्ड एम्प्लॉयज़। जैसे अभी सुबह एक लेमन ट्री का एग्जांपल बता रहे थे कि ये बच्चे ज़्यादा आउटकम देते हैं। अगर एक हीयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा 20 रूम कर लेता है तो एक नॉन डिसेबल्ड 11 करता है, क्योंकि गॉसिपिंग, व्हाट्सएप और वीडियो चैट ज़्यादा करता है वो। तो ये जो चेंज आया सार्थक और संस्थाओं के प्रयास से 17 वर्षों में, ये आई थिंक बेंचमार्क बन गया है, लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। बट हमें अब और चीज़ों पे फोकस करना है, और समस्याएं अनंत हैं, बट धीरे धीरे एक एक करके हम उनको आगे लेके जाना है। और अंत में फिर से मैं चीफ गेस्ट का, राजीव सर का और हिमल तिवारी जी का, गोस्वामी जी का, और जो भी पैनलिस्ट दूर दूर से आए हैं, उन सब का धन्यवाद करता हूं कि ये तो एक तरह से इट्स एनुअल इवेंट, और हम इसमें कैसे हम नई चीज़ सीखें एक दूसरे से, और हम इस कोज को आगे लेके जाएं। और अंत में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे जो एबिलम्पिक्स का जो कंपटीशन चल रहा है, उसमें ज़रूर आप पार्टिसिपेट कीजिए, उसमें ज़रूर आप देख के नहीं जाइएगा। आई थिंक आपको लगेगा कि उसमें जो बच्चे हैं दिव्यांग हैं, बट उनको ट्रेनिंग टॉप प्रोफेसर्स आईआईटी के दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग टॉप कॉरपोरेट्स मैरियट और आईएचजी के लोग हॉस्पिटैलिटी का दे रहे हैं, टॉप प्रोफेसर्स जो अलग अलग हमारे जो लेडी इरविन कॉलेज के दे रहे। तो आई थिंक ये बच्चे दिव्यांग हैं, बट इनको ट्रेनिंग और इनका स्किल जो है बहुत हाई लेवल का है, और बट आप देख के जज करिएगा और उनका मार्गदर्शन कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू। डॉक्टर अग्रवाल ने बहुत सारी बातें बोली, लेकिन अगर मैं इसको संक्षिप्त में कबीरदास जी के एक दोहे में पूरे वाक्य को सिर्फ 2 पंक्तियों में समावेश कर सकूं तो वो बड़ा उपयुक्त होगा। कबीरदास जी कहते हैं कि जाति न पूछिए मनुष्य की, जाति न पूछिए मनुष्य की, पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहे मयान। अर्थात जो आपकी पहचान है वो आपके हुनर से, आपके स्किल से और आपकी क्षमता से ही उसका मापदंड हो, और किसी कारण से नहीं। और शायद सार्थक का और नेशनल एबिलम्पिक्स एसोसिएशन का यही एक सरल सा प्रयास है। आगे बढ़ने से पहले हमने अपने सारे दिव्यांगजनों को और उनके सारे संवेदनशील साथियों के लिए एक गुत्थी में पिरोने के लिए हमने एक सार्थक एंथम बनाया है। मैं आप सबसे विनती करूंगा कि आप उसके लिए खड़े हों और उसको देखें, उसको सुने और सबसे ज़्यादा उसको महसूस करें। कैन वी हैव सार्थक एंथम प्लीज? सार्थक उद्देश्य लेकर, सार्थक संदेश लेकर, सार्थक संग शिक्षा आती है। सार्थक शुरुआत है ये, सार्थक की आस है ये, सार्थक ही सबका साथी है। ख्वाबों को परवाज़ दे, खुद को तू आवाज दे, ये समय भी तेरे साथ चल देगा। तुझ में है वो हुनर, लगने दे उनको पर, भर ले सपनों से घर, आसमां छू ले चल। अपने पैरों पे निर्भर तू रहे शान से, हक तुझे भी है जीने का स्वाभिमान से। हौसले तेरा साथ देंगे, रास्ते भी चल पड़ेंगे, मंजिलों तक तुझको जाना है। दास्तां जब तू लिखेगा, आसमां छू कर मिलेगा, अब सफल होकर दिखाना है।
धन्यवाद आप सबका। आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। अब हमारा दायित्व है कि हम सार्थक और दिव्यांग यूनिवर्सिटी ऐसी बनाएं जो कालजयी हो। हम रहें ना रहें, हमारे पश्चात भी ये यूनिवर्सिटी करोड़ों दिव्यांगजनों की सेवा करती रहे एवं उनमें क्षमता बढ़ती रहे। पिछली बार एसजीआरसी में अमेज़ॉन ने हमारी बड़ी सहायता की थी और हमारी अपेक्षा है कि आगे भी वो हमसे जुड़े रहेंगे और भारत में ऐसी कालजयी व्यवस्थाओं का निर्माण करते रहेंगे। मैं अब आमंत्रण देना चाहता हूं श्री नीतूमणि गोस्वामी जी को, जो जोनल ऑपरेशनल डायरेक्टर हैं नॉर्थ जोन अमेज़ॉन के। ही इज अ सीजन्ड बिजनेस लीडर with over 2 decades of experience across FMCG, banking, large-scale operations. He used to manage large-scale operations of logistics across North and East India. He has been through the various sectors, including banking, including FMCG. He has transformed the logistics and supply chains across Amazon, and he has done transformation role in his previous avatar where he was employed with PepsiCo. Can I request Neetumani Goswami ji to say a few words? Honorable dignitaries, respected partners, distinguished guests, and most importantly, the champions of inclusion. It's a true privilege for me to be here. Thank you for having me here at the National Conference on Disability. Dr. Agarwal spoke a lot about the efforts that Sarthak has been doing over the last so many years. And I think it covers everything, and whatever I'm going to speak is probably the same thing which Dr. Agarwal, Shri Agarwal talked about. At Amazon, we believe something very, very simple. We mean progress. Progress means, moving forward. And when you say moving forward, it's about everybody moving forward, which includes persons with disabilities. At some point in time, we call it person who are differently abled. Dr. Agarwal talked about the number of people with disabilities. The numbers, if we talk about numbers, we have 26 million persons with disability in India. And if we go into the global estimates, those numbers are actually high. Okay, thank you. But one of the things that we realize that these people do not have access to formal employment. This is not because of lack of potential in these people with disabilities. It is because the opportunities and the systems are not always built for them. This is not just a social issue. This is a national opportunity for all of us in the country, which needs to be unlocked. A couple of years back, Amazon and Sarthak Educational Trust came together with one shared goal. I think it was one of those small steps that we took, which is to create a strong, scalable, and technology-led system that supports persons with disabilities. And this partnership has now become a model for what corporate and NGOs can do together with strong collaboration. One of our biggest milestones in this journey has been the Global Resource Center in Gurugram, which Dr. Agarwal talked about, and we saw some of those glimpses in the video as well. That was launched by
Honorable Vice President of India at that point in time. This center is first of its kind ecosystem in India. It brings everything under one roof that we saw in the video. It's about skilling, it's about upskilling, it's about rehabilitation and early interventions as well, and to provide, employment services as well. The Global Accessibility Development Center for Assistive Tech Innovation is it's not just a building, it's a space where PWDs can learn, grow, and find real opportunities. I have had the privilege of going into this center multiple times. Trust me, if you get a chance, please do visit. It humbles you and it actually tells you what capabilities these persons with disabilities have. I think it has opened up. When I first visited, it opened up a lot of things for me. It led us to think beyond what we think in our daily lives. We as an organization also support Rozgar Sarthi, which Dr. Agarwal talked about. It's a job platform dedicated to persons with disabilities. Today, more than 9,000 PWDs are registered and are able to access job across corporates, as well as some of the government bodies. For many, this is the first time they are accessing something of this sort. Through our partnership, we have about 6,900 PWDs who have been trained, more than 4,000 PWDs who have been connected to various jobs across the country. We are training across about 21 disability categories, ensuring no one is left behind. This is not just training for the sake of training. It is training that leads to careers and supporting with hiring within Amazons across our buildings as our own workforce. We are proud to have hired 75 PWDs associate across different Amazon sites from this GRC itself. Our commitment goes beyond jobs. We want to support PWDs holistically in education, in mobility, and in access to services. One of the things that we launched was Pratidhi Scholarship and Mentorship. Under our Pratidhi program, Amazon provided 10,000 rupees scholarship to about 250 children with disabilities. Along with this, our own employees from the organization are mentoring these students, guiding them, supporting them, and helping them to dream bigger. One of the things when we talk about PWDs, persons with disabilities, one of the key things has been mobility, which is known to all of us. Mobility is freedom. Through our upcoming partnership with New Motion, it's an organization who develops these machines, we plan to provide custom mobility devices and EV-powered wheelchairs for youth with mobility disabilities. Our aim is to create pathways for them to work as delivery partners also. Some of those glimpses were also visible in the video that we saw. We have also helped about 5,000 PWDs access government schemes, from disability certificates to pensions to health benefits. For many families, this support is actually life-changing. Together, we have touched the lives of over 10,000 PWDs in the last 2 years, but the real impact is on the stories we hear. A young person who gets his or her first job, a family that sees hope again, a student who finds a mentor from the organization itself, a youth who receives some mobility device and regains independence. The example that Dr. Agarwal shared about our voters getting access during our elections, I think that's really humbling. When we saw those pictures, those videos,
during election time, it's really, it gives us goosebumps. And thank you, sir, for enabling this. What is the way forward? Looking ahead, Amazon will continue to scale inclusive hiring, strengthen digital access, expand skilling programs, support mobility solutions that I just talked about, grow our scholarship programs and mentorship programs at a large scales across the country, deepen partnership with corporate and government to help create future where disability inclusion is the norm and not just exception. At times, in the current state, it is probably termed as an exception, but we are moving forward as a nation where it becomes a norm. To Sarthak Educational Trust, thank you for being a true partner. To the disability community, your courage and determination inspires us every day. And when I say this, trust me, I mean it. I've been to those centers. It really inspires all of us. To all the leaders here, the future depends on the actions we take today. Let us build a world where every person, every ability, and every dream gets the chance to grow. Thank you so much. Many thanks for the kind words, Neetumani-ji. And what Amazon has pioneered, the corporate world will take it forward. The way they transformed the delivery, the way they transformed from A to Z, everything is available on Amazon. I'm sure all the challenges of the Divyangjan also going to be solved from A to Z by Amazon. Many thanks. Can I request now Shri Krishan Kalra ji, the former president, National ABILYMPICS Association of India, and our mentor, our guru, advisory board member, Sarthak Educational Trust, who has immense years and years of experience in managing people, managing businesses, managing organizations and corporations. Can I request Kalra ji to share a few words of wisdom with a young team? Thank you, Siddharth. Ladies and gentlemen, may I add my personal welcome also to honored guests on the dais and off the dais, Dr. Joshi, Shri Tiwari, Shri Goswami, and everyone else here present. सार्थक मेरा ये ऑनर है और प्रिविलेज है कि मैं कोई 13-14 साल से सार्थक के साथ जुड़ा हुआ हूँ. एक कॉमन फ्रेंड ने मेरे को बताया था डॉक्टर अग्रवाल के बारे में और तब से बड़ा अच्छा लगा कुछ अगर मैं थोड़ा बहुत सार्थक के लिए और NAI के लिए कर सका तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है. सार्थक बहुत छोटी सी संस्था से शुरू हुआ था 2008 में. एक एबंडेंट डेंटल क्लिनिक में पहला स्किल सेंटर बनाया गया था जिसमें 8 बच्चे थे सिर्फ जिनको ट्रेनिंग दी जा रही थी. और पिछले 17 साल में डॉक्टर अग्रवाल और उनकी टीम के परिश्रम से और उनके उद्योग से आज इस स्थान पे पहुंच गया है सार्थक के तकरीबन 1.25 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दे के और उनको अच्छी से अच्छी कंपनियों में नौकरी दिलाई गई है. और वो बजाय इसके कि वो बर्डन होते थे अपने परिवार पे और सोसाइटी पे, आज वो कंट्रीब्यूट करते हैं इक्वली और सर ऊंचा चल के चढ़ते हैं कि हम भी साथ सारा जो नेशनल एफर्ट चल रही है ग्रोथ एफर्ट हम भी उसमें इक्वल पार्टनर हैं, साथी हैं. तो ये बहुत बड़ा काम सार्थक ने किया है और आगे चल के इससे ज़्यादा 1.25 लाख लोगों को तो नौकरी में लगाया, लेकिन टोटल जिन लोगों की लाइव्स को टच किया है सार्थक ने, मैं समझता हूँ वो 5 मिलियन से भी ज़्यादा हैं. बहुत सारे सार्थक के ऐसे ऑर्गन्स हैं
डिजिटल मतलब इनिशिएटिव्स हैं, और एक जो अलायंस बनाई गई है, डॉक्टर अग्रवाल ने भी आपको बताया था पहले, जिसमें जितनी और संस्थाएं भारत में काम कर रही हैं इसी डायरेक्शन में कि दिव्यांगजन को एम्पावरमेंट करने के लिए उनको साथ में लाया गया है, और तकरीबन 500 से ऊपर संस्थाएं हमारे साथ उसमें जुड़ी हुई हैं। उनके थ्रू और अपने इनिशिएटिव के थ्रू और हमारे डिजिटल जो वो हैं इनिशिएटिव्स हैं, उनके थ्रू तकरीबन 5 मिलियन से भी ऊपर लोगों की ज़िंदगी में हम लोग उनको थोड़ा बहुत हेल्प कर पाए हैं। और तो ये बड़ी अच्छी से ग्लोबल रिसोर्स सेंटर बनाया गया कोई 2.5 साल 3 साल पहले, जिसमें ऐसी सारी चीज़ें डिस्प्ले की जाती हैं। बट ऑफ कोर्स स्किल डेवलपमेंट तो वहाँ होती ही है, ऐसी सारी चीज़ें वहाँ डिस्प्ले की जाती हैं। जो भी विज़िटर आते हैं, और हज़ारों विज़िटर्स उसमें आ चुके हैं, हम लोग इनवाइट करते रहते हैं स्कूलों को, कॉलेजों को, संस्थाओं को कि आइए और यहाँ पे देखिए, वो खुद देख सकें कि एक दिव्यांगजन की ज़िंदगी का दिन कैसे होता है। वहाँ डार्क रूम बनाया गया है, असिस्टिव डिवाइसेस डिस्प्ले की गई हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे रखी गई हैं। और यहीं पे रुकने का नहीं है, क्योंकि ये जो इंसान है जितेंद्र अग्रवाल, ये बहुत ऊंचा आसमान को छूना चाहता है, और ये छुएगा आसमान को, क्योंकि इसका जो दृढ़ विश्वास है अपने ऊपर और भगवान के ऊपर। अब आगे प्लानिंग हो रही है सार्थक में एक डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी डिसेबिलिटी के बनाने की, एक विश्वविद्यालय, क्योंकि हम लोगों ने ये सोचा कि एक सार्थक जो है अगर वो 5 मिलियन को भी टच कर ले, लेकिन भारत देश में 100 मिलियन के करीब दिव्यांगजन हैं, तो हमें बहुत सारी संस्थाएं चाहिए जो उनको मदद कर सकें। अगर सार्थक ने 1.25 लाख लोगों की अच्छी नौकरियां लगवाई हैं, तो हम तो चाहते हैं कि वो जो 100 मिलियन हैं वो सारे के सारे जो हैं उनकी या अच्छी नौकरियां लगें, या वो एंटरप्रेन्योर बने, या कुछ अपने काम अपने टांगों पे खड़े होने के। सार्थक की शुरुआत ही इसी से हुई थी। 2004 में जब जितेंद्र अग्रवाल ने अपनी दृष्टि खो दी, सेंट्रल विजन खो दी, तो सबने इसको कहा, इसके परिवार वालों ने, कि आके बैठ जाओ, करो, ठीक है, अब जो ईश्वर ने करना था वो हो गया। लेकिन इस इंसान ने कहा कि नहीं, मैं तो अपने पाँव पे खड़ा होना चाहता हूँ। और वो 3-4 साल के प्रोसेस में धक्के खा के ये रियलाइज़ किया कि खाली अपने पाँव पे नहीं खड़ा होना, और भी हज़ारों लाखों लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करने का किया है। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं 9 साल नेशनल एबिलिम्पिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रह के कुछ वहाँ पे सेवा कर सका, और अभी हमने 18 तारीख को परसों ही नए बोर्ड ने टेक ओवर किया है, और मैं समझता हूँ कि आगे जो तरक्की होगी उससे भी फास्ट होगी। जो पिछले 9 साल में NAI की तरक्की हुई है, उससे बहुत ज़्यादा स्पीड के ऊपर आगे भी उसमें बढ़ेंगे। इस वक्त इसी मतलब वेन्यू में हमारी एनुअल कंपटीशन NAI के चल रहे हैं। 15 स्किल्स में जो है कोई तकरीबन 60 लोग उसमें कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। और ये जो स्किल्स हैं, मतलब स्किल कैटेगरीज हैं, कंप्यूटर ऑपरेशंस है, क्राफ्ट्स हैं, हॉस्पिटैलिटी है, और सर्विसेज हैं। और इनमें जो विनर्स होंगे उनको हम लेके जाएंगे हेलसिंकी, जहाँ पे 2027 में नेक्स्ट इंटरनेशनल एबिलिम्पिक इवेंट होनी है। पीछे हमारी टीम गई थी, मैथ्स फ्रांस में गई थी 2023 में, और एक छोटी सी 13 लोगों की टीम जो है वो 7 मेडल लेके आई थी। और इस बारी हमें उम्मीद है कि हमारी टीम बड़ी होगी, 30-40 लोगों की टीम होगी, और हम कम से कम जो है 30-40 मेडल वहाँ से लेकर आएंगे हेलसिंकी से। और हमें बड़ा गर्व है कि देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं, अमेज़न जैसी और टाटा पावर और टाटा ग्रुप जो हैं, वो हमारे साथ इसमें बहुत हमारी मदद करती हैं और आगे भी शायद करती रहेंगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यात्रा जो 8 लोगों से शुरू हुई थी और 5 मिलियन लोगों तक पहुंची, वो गुरु के आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकती थी। धन्यवाद कालरा सर,
गुरु गोविंद दो खड़े काके लगू मैं पाऊं, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। और हम आशा करते हैं कि अगर हमें ये 100 मिलियन का आंकड़ा, 10 करोड़ का आंकड़ा पार करना है तो आपका मार्गदर्शन सदैव हमें चाहिए होगा। Tata Power, which has been transforming lives, energy, and society. Tata Power, which has supported through the years the cause of Sarthak, the cause of Divyangjan, and the cause of National ABILYMPICS. It is thanks to Tata Power that Bharat made its mark on the global arena. At that point in time, lesser people know that we had limited funds even to send the participants for the competition at MES France. Thanks to the support of Tata Power and Tata Power Group companies, that Bharat participated in the international ABILYMPICS competitions. Had they not come forth, the hunar, the skill would have been just buried somewhere. And the most beautiful part is that those 13 medal winners, those 13 competitors, those 6-7 medal winners, they have been recognized, they have become heroes in their own districts, in their own states. And they are now the inspiring, the stars who are guiding many, many more. So that conversation started with Tata Power, and today it is changing lives of many. With us, we have Shri Hemal Tiwari ji, who is the Chief Human Resources Officer and the CSR Head for Tata Power. He has an illustrious career of 28 years. He is alumnus of INSEAD, Ahmedabad University of Delhi, and I would request Hemal ji to say a few words and inspire millions the way Tata Power does. Thank you, Siddharth, for the kind words and introduction. My fellow panelists, esteemed senior officials, a lot of you who have come in here, NAI, Sarthak Trust, and a lot of partners who we've worked over these years. So compliments to all of you to come here. Also, it was very inspirational to come here all the time. And हम एक बहुत छोटे से तरीके से जुड़े थे NAI और सार्थक से 2022 में, जब हम लोगों ने we sent the first contingent to Paris, and we continue to work in whatever shape and form we can support this movement, I would say. मेरे को लगता है कि डिसेबिलिटी का जो पूरा एक टॉपिक है, वी हैव टू विच एवर वे वी अप्रोच इट, अगर हम उसको ये टॉपिक था SDG का, इसको आप इंक्लूजन से जोड़ सकते हैं, सोशल इंक्लूजन से जोड़ सकते हैं, सोसाइटी ट्रांसफॉर्मेशन से जोड़ सकते हैं, बहुत डीप है मेरे को लगता है. और हम टाटा ग्रुप विच हैज़ बीन इन दिस स्पेस फॉर मेनी ईयर्स through Tata Power, even Tata Trust, even Tata Steel, Tata Motors. Many of our group companies are working Tata Technologies now. The frame is that, look, we need to, there is a lot of good work that is being happening. And again, I compliments to Amazon to partner with and be the role model in many ways, is how can we be force multipliers? And Tata Power, we've been reflecting on some of these things. In 2021-22, we took this entire discussion on, even in the disability space, neurodiversity, and especially autism, then a spectrum of autism, was something that we thought that we should, as a responsible corporate, pick it up. And that is where pay attention
came into as a program for Tata Power. And many things at the foundational level was awareness. Second was how do we look at the ecosystem. It's similar in many ways, is how do we do the caregivers, the practitioners, the frontline. And again, even if you see आप 50 किलोमीटर बड़े बाहर शहर से जाइए, the awareness levels on some of these things is very very poor. And as अग्रवाल जी भी बोल रहे थे कि बहुत सारी फैमिलीज उसको छुपाने की कोशिश करती हैं और ऑलमोस्ट एक स्टिग्मा है कि शायद ये, और ऐसी आपको हार्ट वेलमिंग स्टोरीज बनेंगी कि किसी बच्चे को 6-6 साल तक एक कमरे में बंद किया जाता है चेन से, और ऐसे आप जाएंगे और ये ऐसा नहीं है, ये दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर एक गांव में है, ये मुंबई से आप निकलेंगे 1.5 घंटे में एक जगह पे है। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही एक एंडेमिक चीज़ है। तो हम लोग जुड़े और हम लोग we also worked with Ministry of Social Justice and Empowerment and NIPIT. The idea was to create scalability और हम क्या डिजिटल सोल्यूशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो द आइडिया ऑफ ई-सानिध्य वॉज बॉर्न। इट इज़ एन अर्ली डिटेक्शन प्लेटफॉर्म और हम लोगों ने टाटा पावर और टाटा एलेक्सी ने मिलकर ये प्लेटफॉर्म बनाया है। वी हैव नाउ गिवन इट टू द गवर्नमेंट थ्रू निपिट टू रन इट, एंड that is where I think we can create that scale. And I see a lot of initiatives that Sarthak Trust and NI are doing on this scale. So the issue is huge. And another element that one needs to look at is how can we partner with each other. It is not only the government, it is not only NGOs, it is not only academic institutions, but all have to come together. And I think we have to go beyond tokenism. And I can tell you from the corporate world, and we have to see a mirror to ourselves that हम उसके आगे कैसे बढ़ सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोगों ने 2022-23 में एक अल्ट्रा मॉडर्न सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है तिरुनेलवेली में, तमिलनाडु में, गोंगाईकोंडम डिस्ट्रिक्ट में प्लांट है ये। इसमें हम सेल और मॉड्यूल बनाते हैं। हम लोगों ने इट इज़ अ प्लांट दैट वी प्राइड आवरसेल्व्स, 80% से ऊपर ऑपरेटर विमेन ऑपरेटर्स हैं। हमने उस समय स्टार्ट किया कि वी शुड डू समथिंग अबाउट इंक्लूजन एंड स्पेशली ऑन पीडब्ल्यूडी। हम स्टार्ट किए, एक समय था हम लोग थोड़ा मैंडेट करते थे, ठीक है, हम आई ऑल्सो वेयर द हैट ऑफ HR हेड। तो हम लोग मैंडेट करते थे कि आपको इसमें इतना लेना है, उतना लेना है। शुरू में होता था नहीं हम इनको ऑफिस जॉब्स में लेंगे, हम केवल उसमें लेंगे। हम लोग बोला नहीं, लेट्स ब्रेक द स्टीरियोटाइप, लेट्स डू इनटू फ्रंटलाइन रोल्स। फ्रंटलाइन मतलब फैक्ट्री रोल्स, मशीन रोल्स, हार्डकोर सो कॉल्ड लाइन रोल्स। ऑफ कोर्स वी डिड अ इंटायर एक्सरसाइज, हमने उसकी मैपिंग करी, डिसेबिलिटी मैपिंग की, रोल्स बनाए गए, असिस्टेड प्रोसेसेस बनाए गए, टेक्नोलॉजी बनाई गई, और हम लोगों ने मैंडेट स्टार्ट किया, थोड़े से लेवल पे स्टार्ट किया। होता है आप ग्रोइंग प्लांट है, मैनेजर्स हैं, सब एवरीबडी मीन्स वेल। आपको शुरू में हम लोग को कुछ आया। आज की तारीख में वी आर रनिंग इनटू द 3.5 years of this program. I can't tell you today how successful we are in that program, and not because of anything else. It's because what Dr. Agrawal was saying, that we created the true spirit of inclusion. And I'll tell you the same elementary example. आज की तारीख में जब मैं requisition करता हूँ साल की, अपनी मैन पावर और वर्कफोर्स की प्लानिंग होती है, मेरे लाइन मैनेजर्स आज बोलते हैं कि देखिए आप कोटा मत बोलिए, हम कोटा नहीं है, हम मेन स्ट्रीम, अगर हमें इतने X हायर करने हैं, हम इससे ज़्यादा हायर करेंगे। क्यों? प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उनके मार्जिनल क्वालिटी लेवल्स मच बेटर। क्यों? क्योंकि वो लोग उनके पर इंसिडेंट्स of people, we are not having IR issues also. Now, so today
आज की तारीख में हम लोग के जैसे अग्रवाल बोल रहे हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, दीज आर ट्रू इंक्लूसिव एक्सपेरिमेंट्स. हम लोग को वी हैव टू गो बियॉन्ड टोकनिज्म्स, एंड आई कैन टेल यू दैट लुक अ होल लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स fall into the trap of tokenisms. Now, and that is the genuine piece of inclusion. And I can tell you there are so many things that we have started to learn. हम भी सीख रहे हैं. एक सीख रहे हैं कि there are different issues that are coming up now. We were very surprised by the way that population is seeking mental health from our support system. They have unique challenges. And that is the lens that we have opened up when we have started to work with them. It is not stereotypical. They are not those issues of, only physical mobility, access, technology and all of that. These are there. I'm not saying, but unique mental health issues. Because they are not talking, they are not expressing the percentage of us addressing those issues as a percentage of total population is about 2.5%, or 2.5 times, which means that we have to take care of them differently. And that is the evolution of corporate India will happen over a period of time. And that is what I'm saying is that, look, this partnership is going to make sure that we mainstream them. And I can't tell you that that plant today is a signature plant. We received today so many visitors from the government, so many visitors from global institutions to study that model, that what is going on here, that is happening here. And I'm not saying it is only 137 of them. It is just a drop in the ocean as regards India. But I'm saying that these are experiments that we need to cherish. We need to build models of inclusion. Today it's beyond my PWD quota. There is no quota. It is mainstreaming of them as employees in the ecosystem. And they have the right, they have the pride, they have the space, and they have the contribution. And I give them the same, almost the same performance lens that I give it to all of my employees. And that is the point that I'm trying to make, is that it's not a body in a chair. It is about making them mainstream, making them integrated in the way that we are doing. And it is not easy. And I can't tell you it is not easy. And it helps, look, I'm not, Tata Group, we helped the value system, because in spite of everything else, the last thing that we all say to ourselves, is this the right thing to do? ये नहीं है कि मैंडेट है कि ये करना ही है, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है, हमें बोलना है, हमें provisions में इतने करने हैं, वो नहीं. Is this the right thing to do? If the answer comes, yes, this is the right thing to do, I can't tell you the answers will come on their own. So again, I'm so happy to come here. We will continue to partner. This is so inspirational, and I think what Dr. Agrawal is attempting to do is I would say is a moment that we should all support, multiply, and bring our own selves to this. And the real inclusion will start happening when we sing in one tone. And I think we should create many of these. And again, compliments to all of you. Compliments to everybody who is participating in the NAI Global Skills. We assume that the success that we had, even for 13, say 8 of them won medals, right, Dr. Agrawal? So I hope we send 30, 35, and hopefully all of them win medals in Helsinki in 2027. All the very best, and thank you for inviting me, Dr. Agrawal. Many thanks, Mr. Tiwari, for your kind words, and Tata Group continues to inspire. Can I request now Shri Lav Verma ji, who's also one of our mentors, gurus, and he has been the former Secretary, Department of PWD, and he has played a very pivotal role in giving direction, disha and dasha. आज जो भी सार्थक की है, शायद लव वर्मा जी की वजह से है. He's an accomplished senior proliferated IAS officer, Secretary Government of India, and now he's devoting time for the social cause. Lav Verma ji, please.
Thank you, Siddharth ji, for those kind words. Chief guest for the meeting, Dr. VINEET JOSHI, Chairman of UGC and also Secretary to Government of India for Higher Education, Mr. and Mrs. Rajiv Kumar ji, who are with us, and members of the board of Sarthak, as well as partners of Sarthak who have done so much to give us that mental strength and also physical strength they have given us. So thank you for being with Sarthak. And the moment I retired from service, I was looking to be part of somebody who was doing good work, and I realized that that person was Dr. Jitendra Agarwal. Let's give him a huge clap, please. And his signature is that he's never satisfied. Anybody else would be satisfied with setting up a global research center for PWDs, but he is not satisfied. He wants now all of us to put our energies into university for PWDs, which we are hopefully we will manage after a few years. And I'm really happy to be here on the 12th National Conference, and thank you all for attending. Thank you so much. Love Verma ji, a man with few words but lots of action, lot of silent action, who does good work silently. That's what he did with the Government of India for Bharat, and now he's doing it for the society silently, patiently. Can I request now the annual report release for Sarthak, and can I request our team, Sarthak team, to bring the So this time everything is electronic, so you guys, so there is no uncovering of the annual report. So this is the annual report which we are launching today for Sarthak. A round of applause. These are some of the few glimpses what happened in the last year in FY25, how Sarthak and National ABILYMPICS Association of India progressed through the year, and the vision, the Sarthak Global University. Keeping all of this in the center, Divyangjan. Our partners, hiring partners, donor partners, skilling partners, media partners, and everybody is important. Without everyone's support, this wouldn't have been possible. Can I now request to play the small Sarthak Global Resource Center clip to give a perspective on what we have created? Sarthak Educational Trust is a brainchild of Dr. Jitendra Agrawal, who lost most of his eyesight overnight due to a rare eye condition. From a one-man effort to setting up an entire organization with 26 centers across India, from free training and job placements for 8 youngsters to over 1 lakh youngsters, it has been a long, rewarding journey for Sarthak. In the process, it has created ties with over 100 CSR groups, over 5,000 corporations and more than 1,000 NGOs under the India Disability Empowerment Alliance that has directly or indirectly impacted 15 million lives. क्या सोच है, क्या गहराई का सोच है, कितना व्यापक दृष्टिकोण है,
कितना सार्थक प्रयास सार्थक का है। Sarthak Global Resource Center approaches the issue of empowerment in a holistic manner. It starts with Vision in the Dark, a meticulously curated immersive journey that makes visitors experience life with visual impairment. This changes perceptions not only towards the visually impaired, but the disabled community at large. Having experienced some of the challenges, a visitor can then look at some of the solutions by visiting Sarthak's Ability Museum, where a quiet revolution unfolds. Assistive technologies from the simplest to the most advanced, designed for empowerment and inclusivity. From technology, we turn to human intervention. It begins with children. Sarthak Center of Excellence for Early Intervention is run by a team of psychologists, occupational therapists, speech therapists, vision therapists, and special educators, providing personalized therapies and group programs for children of all age groups. We then come to the issue of young adults and employment. SGRC boasts of multiple resources in the field of vocational training, such as SGRC Retail Lab, training PWD students from across India in both online and offline modes. SGRC also houses the offices of the National ABILYMPICS Association of India. It has facilities for training candidates and hosting competitions and conducting activities across India. All of this to promote skilling, as well as enable India's brightest PWDs to shine on the international stage and bring glory to the country. Sarthak is creating a collaborative ecosystem where startups, disability experts, corporate partners, NGOs, and investors come together to develop solutions for India's PWDs. Global Resource Center is first of its kind international standard infrastructure in the country where we have all the services for all disability. The prime objective of GRC is to monitor our program digitally and physically across the country in 20 states and covering 300 districts and around 1,000 locations in the country. The second objective is to empower each disabled person in the country. So Sarthak alone cannot empower each disabled person. That's why we have empowered with 1,000 NGO partners called IDEA, where we are bringing them to train them on their programs. At the heart of India's journey towards a more inclusive future stands the Sarthak Global Resource Center. This center is not just a leader in disability intervention. It is a groundbreaking milestone for the non-profit sector in India. The address by the chief guest, Dr. VINEET JOSHI. Who's with VINEET JOSHI? I'm sure everybody can read that he is the chairman of UGC Grant Commission. He has just taken over from April 2025. A little background about him. And I would try and summarize it through a Sanskrit shloka. It says like this: Vidyam dadati vinayam, vinyad yati patratam, patravat dhanma pranoti, dhanat dharma tat sukham. What does this mean? Vidya means knowledge gives you humility. Humility enables you to build capabilities. Capabilities give you opportunities. Opportunities with right dharma gives you sukha, happiness. Through the years since independence, we have been reading about oppressors the great. Oppressors the great. The people who oppressed Bharat, they were glorified. The man whom you are seeing in front today, prior to UGC, he was leading the initiative in CBSC.
the man who transformed CBSE, who brought the real heroes of Bharat back in light, Maharana Pratap, Rana Sangha, Shivaji the Great. If any Rashtra forgets about its own history, can never rise, can never prosper. Dr. VINEET JOSHI transformed the education system from the grassroots. And today, he is transforming the higher education through the University Grants Commission. The way Shri Rajiv Kumarji transformed the electoral process, Dr. VINEET JOSHI is transforming the generations to come. An IIT Kanpur graduate and a PhD from IIFT and an MBA from IIFT, a seasoned, thorough professional, an IAS officer from Manipur batch, I request our chief guest, Dr. VINEET JOSHI, to come and say a few words. A very good afternoon to all the distinguished persons present here on the dais, off the dais, my seniors in the service, Shri Lav Verma ji, Shri Rajiv Kumar ji, Madam Rajiv Kumar ji, other distinguished persons, experts in this area of inclusive education and inclusivity, members of Sarthak, founders of Sarthak, mentors of Sarthak, and everybody connected online. It's a matter of great privilege for me that I have been given this opportunity to witness this wonderful morning in which many of the things that I saw today were eye-openers and a great learning. When this audio visual about Sarthak was shown, and especially the Sarthak anthem was played, one realized that how little we are doing for this group of population about whom we do not know. It is not their disability, it is basically our inability to know people around us. And the faster we are able to understand our own world, we will be able to take them together, and we as a country will be growing faster. While sitting here, I was reminded of this movie called Tare Zameen Par. The message that this movie gave was that every child has unique features. Every child has a lot in him. It is the inability of the system that we are not able to give the opportunities to a particular child, and because of which he or she is not able to do as much as he could have done had he got the equal opportunities. Therefore, it is for all of us to remove our inabilities to understand the world around us. And if we are able to do that, I think we'll be able to move forward fast, at a very fast pace. Dr. Jitendra Agarwal, he mentioned about the initiative taken by our former election commissioner, and by the election commission when he was in election commission, that enabled the Divyangjans to come and vote. And we had never realized that such a small action by the government will help such a large population. And it is basically, therefore, is to think for the entire population. What happens most of the time that we are guided by the majority, we are guided by the things which we see, we are not able to think critically about the things that we are not seeing in front of us. Therefore, the time is now that we move forward, we think about in any capacity that we are there, whether we are in the government, whether we are in the private, or we are as in the NGOs,
that what can we do to see to it that our inability, because of which we have a certain group of people who are not able to rise to their abilities, how do we ensure that? And this has to come in every field. In fact, we saw in when the movie on Sarthak was being played, that Sarthak has been working right from the very beginning, from the early childhood to skill development to education and for also jobs. So they are working for the entire life cycle. So therefore all of us should be doing that. As far as UGC is concerned, there are a number of initiatives which the UGC has taken. They are in the form of giving net JRF fellowships. UGC has also brought in guidelines by which it enables the higher education institutions to offer courses up to 3 credits which could be given to individuals which will make them fit to be teaching to a population of Divyangjans. But these are not enough. We need to do a lot more. And in fact, if we are doing it for a population about which we know very little, the suggestion which was given by my previous speakers of having a university is extremely relevant and timely. And especially if it comes from an organization like Sarthak, who has so many years of experience of actually dealing with the subject matter, I'm sure it is going to help the country move fast. In this connection, I would like to also inform my audience here today is that I met a Vice Chancellor of Dr. Shakuntala Mishra Rehabilitation University, which is located in Uttar Pradesh. Very small thing he told me. He told me that if you are teaching a Divyang child, you need to spend 5 times you need to give 5 times the amount of hours that you are giving to another child. What he was trying to tell me that the pedagogical tools that we are having, if we apply the same tools to the different population, it takes 5 times more. So this therefore convinced me that it is not necessary to use the same tools to teach the different population. The time is there now to have different content, different pedagogical tools, different testing tools which are suitable for this population. But as a general rule, what we try to think that, okay, if this thing has worked with a general population, it will also work with others. But we have seen in our own, we have done many experiments, we have seen that especially in a country like India, something which works in Jammu and Kashmir may not work in Tamil Nadu. Similarly, something which works in Manipur may not work in Maharashtra. Similarly, the population that we are dealing, we have large population, big population of Divyangjan also. So therefore, the general pedagogical tools, the general testing tools, the general content material, it may not work with the Divyangjans, or it may work slower as we have been seeing. It is taking a lot of time. And we cannot afford, because time for everybody is same. If the sun rises in the morning, it rises for everybody. It is not going to stop for someone and it's going to rise faster for somebody else. We have a very limited time, and if in that time we need to move faster, we need to move together along with the entire population of the country, we will have to find out different tools, and therefore it becomes extremely important to have a university which will focus not only on teaching, it will also focus on research, which will be able to give us tools, pedagogical tools, content material, as well as the testing tools, which will help us, the entire country, to ensure that the children who are coming from this category, they are also able to contribute positively, fruitfully in the betterment of the country. We have also seen that, in fact, my personal experience has also been that it was also mentioned by my previous speakers that the children who are having some sort of a special ability, they are better than the children who do not have such disabilities. My personal experience also says the same. I used to live with a child who was not able to speak properly. But then whenever it was in the classroom, he was the first one
who would finish everything, and even he was not able to speak, but then his other abilities were so far that all of us will go and ask him that how has he done the things. So there are lots of abilities, rather they are there in more quantities. It is for us to identify, it is for us to utilize them, it is for us to give that sort of an environment in which we are able to take care of them. I'm sure that today all of us here who have assembled here together, the government, the NGOs, the civil society members, and the industry partners, we will find in our own space the ways to move forward. There is a lot on that we can cooperate. In fact, UGC has as of now some 60,000 higher education institutions across the country. But many of though we are focusing through our monitoring system that everywhere there has to be an equal opportunity cell which looks into this. But when you go and ask, you will find very small number of people who would be actually thinking from their heart towards the improvement of any child who is suffering from any type of disability. It is the heart which has to speak first rather than the guidelines. Because unless, and I think that is what Mr. Tiwari said when he was saying that there is no quota in his company, the company does not insist on quota, rather it on its own, because the people have understood the value of such children. So we have to realize the value which is there. It is right time that we have a lot of advocacy on that and ensure that every child gets his due, every child is able to contribute in this journey of Viksit Bharat. Lastly, I would also like to congratulate Sarthak and their efforts which they are making in National ABILYMPICS, preparation of National ABILYMPICS team, which is going to go for 2027 Helsinki Games. And I'm sure that from 7 medals which they got earlier, this time they will go and get many more such medals. And this is going to be one of the ways to propagate that this group of individuals are also doing a lot for the country. It is for us to remove our inability so that we are able to ensure that everybody in the country is able to live with pride, is able to contribute to his liking in making this Viksit Bharat by 2047. Thank you very much. Many thanks, Dr. Joshi, for your kind words and for encouragement. We are very hopeful that your tenure with the University Grants Commission is going to bring transformation in the higher education space. We are already seeing that skilling is becoming an essential part. Learning by doing is becoming an essential part. Becoming corporate ready, becoming company ready, ensuring that you are productive from day one is the new norm. And many thanks for bringing this forth of an inclusive Bharat where every Divyangjan will prove to be a superior resource as compared to a so-called fully abled one. With this, we come to an end of the inaugural panel, and we would like to thank everybody who has been our supporter, who has been our patron, who has been a guide, a mentor, and even a partner, even a co-worker, जो हमारे साथ चले थे, जो शायद अभी कुछ हमारे साथ नहीं है, लेकिन ये कारवां बढ़ता रहेगा। जुड़ो, जोड़ो और जीतो, इस लक्ष्य के साथ हमें सभी दिव्यांगजनों को सशक्त करना है और विकसित भारत की ओर आगे बढ़ना है। Thank you everyone. Now can we have national anthem, and can I request everyone to kindly stand up for the national anthem. जय हे भारत भाग्य विधाता।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. I request everyone to please take their seats. We have one more patron who has been a huge support to us, and I would like to request Shri Suresh Gupta ji to felicitate Shri Rahul Agarwal ji, who's the Deputy Director, Department of Social Welfare, Government of Delhi. Can I request Shri Rahul Agarwal ji to be felicitated by ex-DG Department of Telecom, Shri Suresh Gupta ji, who has been an advisor for us. We thank many thanks Rahul ji and Suresh ji. Can I request the launch of the National ABILYMPICS Association of India's annual report as well? Can we have that launch as well? These are the glimpses of some of the winners from MES France, our guru, our mentor. So the process of National ABILYMPICS is that we do regional events, and post the regional events we do the national, which is happening in parallel just now. I would request all the guests who are seated on the dais as well as in the audience to please visit our 69 professionals who are participating in the National ABILYMPICS Association competitions. It is the national competition. These guys are the winners from the regional ABILYMPICS East, West, North, South, and now they are competing for the gold in the nationals. So I would request everyone to pay a visit and encourage them in their endeavors. Post which we'll break for lunch, and I would request all the guests to have lunch, and then we can move on with the next session. So many thanks, gentlemen here, and the ladies and gentlemen in the audience. Many thanks for being a superb audience.
श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण बैठेंगे सर खड़े नहीं कैसे भी कर लेंगे अरे बैग कोई नहीं This is the 12th national conference. जो disability जो भारत में जब से प्रधानमंत्री उन्होंने वो शब्द बदल लिया है especially और सर आपका स्वागत है सर आपका स्वागत है ऐसे ड्राइविंग फोर्स ये हम लोग देख रहे हैं कि आपको इतना ये सार्थक रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो बनाया I think it's a
तो अभी सर आपने चल के क्या तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके जो आज अमेजोन आए हैं, टाटा फार्मा है, वो मैं देख रहा हूँ काफी लोग राज्य कुमार जी के CDCs forward and there is a lot of like recognize. So you look at just the message of तरीके से सार्थक पहले हमारे डोनर पार्टनर्स जो हमें सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, हम शायद आज गर्व से कह सकते हैं कि 1,500 से 2,000 डोनर पार्टनर के कॉर्पोरेट्स हैं उनके साथ लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं जो हायरिंग पार्टनर्स हैं जो इन दिव्यांगजनों को ट्रेनिंग करने के पश्चात एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी आगे की जीवन यापन में उनकी सहायता करते हैं। एक दिव्यांगजन जो पहले अपने परिवार का बोझ था, आज वो अपने परिवार का भरण पोषण स्वयं कर रहा है और ना कि वो अपने परिवार का पोषण बल्कि समाज को सिर उठा करके चल रहा है। फिर हमारे तीसरे जो पार्टनर्स हैं डेवलपमेंट के बहुत सारे सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो सेवानिवृत्त हैं और जो सेवा में भी वो संवेदनशीलता के कारण उनको लगता है कि शायद समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करते हैं 5.5 से 10 करोड़ के बीच के दिव्यांगजन 140 करोड़ की पॉपुलेशन में, तो अगर उनका कंट्रीब्यूशन भारत के GDP में नहीं आएगा, अर्थव्यवस्था में नहीं आएगा, तो सोचिए भारत का कितना बड़ा हिस्सा बढ़ नहीं रहा। और अगर उनका कंट्रीब्यूशन आएगा तो ये मल्टीप्लाई इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। इसी कारण से जो एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक्स ऑफिशियल्स हैं और जो आज सेवा में भी हैं, वो सब सार्थक के साथ, दिव्यांगजनों के साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक गोल है विकसित भारत का, उसके लिए छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे माध्यमों से कंट्रीब्यूट करें। मेरा एक क्वेश्चन सुना था आपने अपने चल रहा है वो हल्का क्या मुख्य आज हमने एक बहुत सारी विषयों की चर्चा की, पार्टनरशिप थे, कोलैबोरेशन थे। कल हमारे ये जो कॉम्पिटिशन्स थे, नेशनल कॉम्पिटिशन्स, उनका रिजल्ट आएगा, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक लोगों को मिलेंगे। तत्पश्चात और चर्चाएं होंगी कि कैसे जो सोशल सेक्टर में हम एक अंश है, बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे कैसे हम हाथ मिलाकर के काम कर सकते हैं। बहुत सारे मीडिया पार्टनर जैसे आप लोग हैं, आप लोगों की वजह से क्या मैं हर गांव में, क्या डॉक्टर अग्रवाल हर गांव में पहुंच सकते हैं? क्या हम आज हमें चैलेंज ये नहीं है कि रिसोर्सेज कम, जैसा आपने भी सुना, चाहे वो लेमन ट्री हो, चाहे वो इंडिगो होटल्स हैं, वो लोग संवेदनशीलता की वजह से दिव्यांगजनों को नहीं हायर कर रहे। उनको इकोनॉमी दिख रही है, उनको इकोनॉमिक्स दिख रही है, उनको अर्थव्यवस्था दिख रही है ऐसी जहां पे दिव्यांगजन अधिक सक्षम है आर्थिक रूप से अपनी कंपनी को सपोर्ट करने। अर्थात अगर कोई भी फुल्ली केपेबल आदमी अगर 10 लगेज मूव करता है, दिव्यांगजन उसी समय में 12 लगेज मूव करता है, 13 लगेज मूव करता है। चाहे वो इंडिगो, लेमन ट्री में हमने देखा कि जो एक फुल्ली एबल्ड आदमी है वो दिन में 18 रूम्स बनाता है और जो दिव्यांगजन है वो 21 रूम बनाता है। कहने का तात्पर्य है इट इज गुड
तो उनको एफआर सैलरी मिलती है, उनको एफआर प्रमोशंस मिलते हैं, उनको वो सारी चीजें वही है, बस सिर्फ जो है एक उनको कुछ वर्क प्लेस टेंशन मुहैया करानी पड़ती है। जैसे कि अगर एक बच्चा ब्लाइंड है तो वो एक सॉफ्टवेयर यूज करके स्क्रीन रीडर करके काम कर लेता है, अगर हिंदी है तो साइन लैंग्वेज में उसको रीडिंग चाहिए, बस इस तरह के सोल्यूशन। और कोई चैरिटी की उनकी सैलरी उनका आउटकम वो बेटर है और उनका एफआर सैलरी होती है वो इस तरह का उनको अवेलेबल होता है और वो कई तरह की व्यवस्था है। So, वो कुछ मीडिया बहुत सारे लोग अपने और कई सरकारी लाभों से वंचित रह जाते हैं या वो भी चलते हैं क्योंकि हमारे दो तरह के सोल्यूशन, एक सोल्यूशन टैक्स आते हैं CAPSOI कहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, उस पर पूरा इंफॉर्मेशन देंगे तो सरकार की अलग अलग राज्य सरकार और भारत सरकार की सारी स्कीमें हैं, पेंशन काफी मिलेगा, डिसेबिलिटी का मिलेगा, अलग कुछ भी है, सारी सुविधाएं इसमें फ्री, वो आके रजिस्टर करें, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सुविधाएं मिलेंगी। उसी तरह से अगर उनको ट्रेनिंग देनी ज्ञान साथ जैसे बताइए 2000 लेगा उस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे, हमारी टीम से बात करेगी, उनको पैसे उनको रजिस्टर करके ट्रेनिंग करेगी और रोजगार साथी का पोर्टल उसके थ्रू उनको नौकरी मिलेगी, उसपे सरकारी भी पीएसयू जितनी भी नौकरी सब प्रसारित होती है वो जाके कंफर्टेबली कर सकते हैं। उनकी हेल्प सपोर्ट के लिए 24/7 हमारी टीम मुहैया है और फिर भी हमारे सेक्टर जैसे 20 राज्यों में है, वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, किसी को भी लिख सकते हैं और किसी को भी चाहिए तो मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सबसे राज्य मुंबई में है या दिल्ली में, हम सब अवेलेबल है, हमारा यही है हर दिव्यांग पावर। और आप लोग बहुत जो है मैं अपने मीडिया साथियों की तरफ से आज हम लोग प्रेज लेते हैं कि हम लोग आप लोग का जो है अपना मतलब सहयोग बढ़ रहा है। तो मैंने एक बार जस्ट लास्ट से क्रिकेट में आया हूँ, पेमेंट का वेबसाइट आने में हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे फाइलिंग का होता है बाकी वो प्रोग्राम सर मेरी आपसे बस दो विनती है, ये दो कैप्शन, ये दो पंक्तियां हमेशा याद रखें। ये 3 शब्द सबसे महत्वपूर्ण है मीडिया के जो मेरे मित्र हैं, जुड़ो, आप जुड़ गए, जोड़ो, और जो आपके आसपास के जितने लोग हैं जो दिव्यांगजन हैं उनको जोड़ो, उनके माता पिता को जोड़ो और साथ में जीतो। जुड़ो, जोड़ो और जीतो, ये पहला। दूसरा, दिव्यांग को छुपाओ नहीं दिखाओ, दिव्यांग को छुपाओ नहीं दिखाओ, आगे बढ़ाओ। थैंक यू सो मच। आप एक काम कीजिए ना, आप अपना नंबर पूछिए, हम आप लोग हमारे ग्लोबल रिसोर्स सेंटर है गुड़गांव में आइए, अपने सारे मित्रों को लेकर के आइए। हम हर हफ्ते 2-3 हफ्ते में आपका हो जाएगा, हर हफ्ते बस 1 घंटा बस 1 घंटा, वरना आपको एक सिंपल सा ईमेल आईडी याद रखना है, sarthak@gmail.com, sarthak@gmail.com। हम लोग इस दुनिया को कैसे रखेंगे, ठीक है, तो क्या दुनिया का भी का वहाँ आप ना अपने मित्रों को, आप 10-15 मित्रों को लेकर के आइए और हम तीनों समय तय कर लेते हैं। आप जिस दिन आना है आ जाइए और आप लोग का देखिए रविवार को अगर कम समय है, जब भी आपको कम काम है आ जाइए। और भी मित्रों हम स्पेशल वर्कशॉप्स भी कर देंगे आपको, अलग अलग पे भी अगर नोएडा भी जाके करना पड़ेगा तो और टीम भी कम इनपुट देगा, लेकिन बेहतर ये होगा कि अगर आप वहां आएंगे तो अच्छा आपको एक्सपीरियंस जो होगा एग्जैक्ट होगा। हम लोगों को दुनिया का एग्जैक्ट, तो आप लोग अपने ऐसे 25-30 मित्रों को लेकर के आइए जो मीडिया से, और हम उनका पूरा ओरिएंटेशन सब कुछ करेंगे।
कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे नमस्कार, मैं हूँ रूप गुसाई और आप देख रहे हैं ये दूरदर्शन पर बहुत बड़ा और आज हम दिल्ली के COI सेंटर में हैं और यहाँ पर सार्थक और NAI के द्वारा जो है 12वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिसेबिलिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड डिसेबिलिटी इंक्लूजन एंड 12वां जो नेशनल ओलंपिक्स कॉम्पिटिशन है उसका 2 दिवसीय कार्यक्रम है या इसका पहला दिन है और इन प्रबोधन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो मैं सीधा इस कार्यक्रम के साथ जुड़ूंगा और दिखाने की बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से दिव्यांग जनों के लिए ये जो सार्थक जो टीम है काम कर रही है 2008 से इस टीम का शुभारंभ हुआ और 8 बच्चों से इनकी क्लासेस शुरू हुई उनके लिए काम करना शुरू हुआ और आज मिलियंस लोगों के लिए जो दिव्यांग जन है उनके लिए काम कर रहे हैं उनको बेहतर बनाने के लिए उन्हें सशक्त करने के लिए जो है काम कर रहे हैं सीधा आपको जोड़ता हूँ अपने सहयोगी जैन के साथ बोलना चाहूँगा कि आज जो कार्यक्रम था उसमें श्री राजीव कुमार जो फॉरमोस्ट कोचिंग कमिश्नर जुड़े हुए थे ये सर मेन जो थे आज के तीनों स्पीकर थे जोशी जी जो UGC के चेयरमैन है डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल जी की सार्थक ट्रस्ट है ये आप देख रहे हैं नीचे इन्होंने लिखा सार्थक india.org तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं जब अगर वो कभी टिप्पण चाहेंगे या कोई वर्ल्ड ओवर वो उनसे जुड़ सकते हैं इनका एक ग्लोबल रिसोर्स सेंटर जो है मुंबई में दिल्ली गुड़गांव और आगे चल के ये लोग यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं तो उन्होंने बताया कि उज्जैन क्षेत्र बिहार छत्तीसगढ़ 105 किलोमीटर वहाँ पे ये लोग आते हैं यूनिवर्सिटी तो आप कभी कभी पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए कि आपको कोई क्वेश्चन हो तो मैं उसमें इसी के साथ मैं रूप गुसाई अपने सहयोगी संजय जैन और व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूँ और दिव्यांग जनों को लेकर के जो आज की अहम जानकारी थी जो अहम कार्यक्रम था इन सब बातों को लेकर के आप क्या सोचते हैं आपकी क्या सुझाव क्या विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा नमस्कार धन्यवाद जय हिंद जय भारत प्लानिंग प्रोग्राम है नहीं मेरा तो क्या 3 बार चला हम गाड़ी में पुलिस वाले रोक ले रोड के
No, it's Sarthak. Yeah. But you have a very good concept. It's backward most of the exactly, exactly. That's the reason why it's chapter 46 and 11. However, we hope we can balance that because we have to do connect across India. Sugita, Sugita and other panelists are actually outside, so if you want to join them. You had lunch? Hi. Did you had lunch right before? For the telling we had we have taken care of ourselves. So you can join. So everyone is there? Yes. Is this on schedule? Yes, I think we go maybe 5 or 10 minutes. Sure. Yes. Very fast. Very fast. Okay, ma'am. Last question for sir. With moderator, yes, I will try to schedule एक छोटा सा meeting अभी यहाँ पे अभी है ना. Roman sir, is it right? Yes. Okay. I didn't get a chance to meet him.
गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्ते आप सभी को। भोजन के बाद का कार्यक्रम हम दोबारा शुरू करते हैं। तो हमारा अगला कार्यक्रम है एम्प्लॉयर्स। कैसे दिव्यांगजनों को एम्प्लॉयर्स एक अच्छी वातावरण दे रहे हैं, एक अच्छा वातावरण दे रहे हैं, साथ में वो ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे एक इक्वानिमिटी बनाई जा सके, इक्वालिटी बनाई जा सके, और उसके साथ कैसे एक पारदर्शिता हो उनके व्यय में, उनके वेतन में, उनके प्रमोशन में और उनकी बढ़त और ग्रोथ में। इस सब के लिए चर्चा करने के लिए मैं हमारे मित्र डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी, जो नेशनल एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हैं सार्थक के, उनको आमंत्रण देना चाहूँगा। डॉक्टर सुधीर गुप्ता को 35 साल का एक्सपीरियंस है मेडिसिन में, हेल्थ केयर सेक्टर में। ही इज एन एमडी रेडियोलॉजिस्ट and he has been a business person as well. So he has successfully co-founded a company and multiple hospitals in the past. For last 12 years, he has been a pillar of support for Sarthak. Welcome, Dr. Gupta. Thank you very much for agreeing to coordinate this panel. A round of applause. And to have conversations with, may I request Miss Richa Shankar ji. She is a distinguished officer from Indian Statistical Services 1999 batch. Currently, she serves as the Deputy Director General in the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment. She has held various key positions, including positions in Consumer Affairs, Ayush, Civil Aviation, Minority Affairs, and Ministry of Statistics. Richa ji has rich experience, and I would request Dr. Sudhir Gupta to get the best of conversation out from her. Can I request Miss Aradhana Lal ji? She's a TEDx speaker. So lots dream, but she has made it. Miss Aradhana Lal, she has been a TEDx speaker and head of sustainability and ESG initiatives at Lemon Tree Hotels. One of the first few organizations who worked with Sarthak, who created a model of economic independence for
Divyangjan and for the organization who's hiring Divyangjan. Lemon Tree has been the pillar of support for Sarthak. She has over 32 years of experience, and under her leadership, she has made from almost nil to currently 18 to 20% of the staff of Lemon Tree are Divyangjan. A round of applause. Lemon Tree has created a model which world is watching. Can I request Ms. Divya Gupta ji, the Area Director Human Resources at Indian Hotels. She is overseeing the HR operations for Uttar Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Haryana, Dwarka, and Taj Palace, Delhi. With over 21 years of experience in hospitality, BPO, manufacturing, she is a specialist in leadership and employee engagement. Mr. Vikram Sharma, he is a seasoned human resources leader with over 21 years of experience. He has been recognized as the HR Leader of the Year, Asia Pacific, by Marriott International. He also champions PWD inclusion at Marriott Hotels India. Can I request now Ms. Richa Bansal, Founder and Managing Director of Sarthak, she is widely admired for her belief, passion, perseverance. She has been associated with CRY, everybody knows about it, Child Rights and You. And at Sarthak, she continues to champion equity, inclusion, and meaningful transformation. She has over 21 years of experience. Can I request Mr. Dhananjay S. Tiwari? He's a Senior Vice President HR at Vindhya Infomedia, a BPO which is known for inclusion. With over 30 years of professional experience, he has been instrumental in developing people and integrating strategies around Divyangjan with a main board. His leadership reflects steadfast commitment for creating an equitable workplace. So my request is that सुधीर जी आप इन सब से बात करें, बट उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर यहाँ पे दिव्यांगजन हैं और दिव्यांगजन के माता पिता हैं तो उनके प्रश्न कैसे वो इन सारी अच्छी संस्थाओं से जुड़ सकते हैं, कैसे वो एम्प्लॉयबल हो सकते हैं, उस पर भी थोड़ा फोकस करें. धन्यवाद. थैंक यू सिद्धार्थ जी और मेरे सभी को पैनलिस्ट को बहुत बहुत वेलकम. और हम लोग अभी थोड़ी देर पहले कुछ बातें कर रहे थे तो हम अपने पूरे एक्सपीरियंसेस हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से सब लोगों ने अपने अपने लेवल पे दिव्यांगजनों को इंक्लूड किया अपने वर्क प्लेस में और अपने जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनमें. और अभी हम ये महसूस कर रहे हैं कि अब काफ़ी बात हो चुकी है इस बारे में कि PWDs को लिया जाना चाहिए सभी तरह के कामों में, सभी तरह की इंडस्ट्रीज़ में. स्पेशली यहाँ कई सारे लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हैं तो जहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी ऑलमोस्ट सभी होटल्स ने 5 स्टार होटल्स ने सभी तरह के रोल्स में लिया है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को. बट अभी ऑटोमेटिकली आई थिंक दैट हैपन्स कि जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट लेवल पे जाने लगी है. अब डिस्कशन इस बात में नहीं है कि PWDs को इंक्लूड किया जाना चाहिए वर्कफोर्स में. अब डिस्कशन इस बात पे है कि PWDs को कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज किया जाए, कैसे उनकी अपनी लाइफ को, अपने कैरियर पाथ को देखा जाए, कैसे अपने वर्क प्लेसेस को बेस्ट तरीके से उनके लिए बनाया जाए और कैसे हर तरह की इंक्लूसिविटी को ध्यान में रखा जाए. चाहे वो विद इन द PWD हो कि न्यूरो डाइवर्सिटी वाले भी होने चाहिए, फीमेल्स भी होनी चाहिए और लोकोमोटर के साथ साथ आपके हियरिंग इम्पेयर्ड भी होने चाहिए और विजुअली चैलेंज भी होने चाहिए. विजुअली चैलेंज को इंक्लूड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है. आई थिंक हम सब लोग जो ऑलरेडी बहुत सारे
पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को अपने वर्क प्लेसेस पे एम्प्लॉय कर रहे हैं, वो भी ये बात, अब उनमें से ज़्यादातर अभी उस बात के लिए कंफर्टेबल नहीं है कि वो विजुअली चैलेंज को ले सकते हैं अपने काम वर्किंग प्लेस में। तो ये भी एक डिस्कशन ऑलरेडी ऑन है कि किस तरह से इंक्लूसिविटी विद इन दिस स्पेशल ग्रुप ऑफ पीडब्ल्यूडीज कैसे उसको मैनेज किया जाए। तो और ये जो एक अभी और मैं पहले ऋचा जी से बात कर रहा था, तो हम लोग इस बारे में भी बात कर रहे थे कि कैसे अभी आपने किसी को एम्प्लॉय कर लिया और सोच लिया कि एम्प्लॉय कर लिया, बस बात खत्म हो गई, और यहाँ वहाँ जाके सब जगह बताया भी और अच्छी बात भी है, दैट्स वेरी नाइस। बट द नेक्स्ट स्टेप इज कि उसका कैरियर पाथ देख रहे हो आप या नहीं, जैसे बाकी सब लोग अपना कैरियर पाथ देखते हैं। जैसे बाकी सब लोग आज एग्जीक्यूटिव की तरह से एडमिट हुए हैं या किसी ज्वाइन किया है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, क्या वो जनरल मैनेजर के लेवल पे रिटायर हो पाएगा एक पर्सन विद डिसेबिलिटी, या वो हमेशा एग्जीक्यूटिव के लेवल पे ही काम करता रहेगा? क्या हम उस तरफ कोई ध्यान दे रहे हैं? सो आई थिंक विद दिस काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड इन माइंड कि किस तरह की डिस्कशन की क्या लेवल पे जाएगी, कहाँ लेवल पे जा रही है और आने वाले टाइम में कहाँ लेवल पे जानी चाहिए और जाएगी, तो जो थॉट लीडर्स हैं इस फील्ड में, जो ऑलरेडी एम्प्लॉय कर रहे हैं बहुत सारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को, जो उनके साथ बहुत सालों से लगातार डील कर रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, उनके चैलेंजेस को खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनके साथ साथ, और तो मेरे को लगता है कि उनसे बेटर कोई दूसरे जन नहीं हो सकते इस बात को डिस्कशन करने के लिए। और आज हमारे पास जिस तरह की इलस्ट्रियस पैनल है, पीपल विद एक्सपीरियंस ऑफ 20 years 30 years 15 years in this special field, not only DEI or inclusivity or sustainability, but in the specific field of inclusion of PWDs in the workforce. तो इस सारी जो डिस्कशन है इसको मैं मेरे ख्याल से मैं स्टार्ट, हालांकि हमारे साथ ऋचा शंकर मैम हैं जो गवर्नमेंट से आती हैं, मेरे को लगता है मैम मैं आपसे सबसे लास्ट में बात करूंगा, बिकॉज आप हमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देंगे, बाकी हम सब लोग वी आर फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। सो तो इसलिए मेरे को लगता है मैं आराधना जी से पहले बात करूंगा। आराधना जी, आप प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, स्पेशली इन द लाइट ऑफ दिस SDG 8 and 5 की फीमेल इंक्लूजन, जेंडर इंक्लूजन और equality in workplace and decency in workplace and all that stuff. So let us talk, each of us talk around 5 to 6 minutes and then we have a panel discussion. Thank you. थैंक यू सो मच, वेरी हैप्पी टू बी हियर। मैं ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ, इस टेबल पे जो हम सब बैठे हैं, आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है? क्या क्या दिख रहा है? हाँ, बट मैं इसको थोड़ा अमेंड करूंगी आपकी लाइन को। There is a balance of ladies and gentlemen. They are both, right? So representation is about all segments getting represented. अब हम ये खोज में हैं कि next time we'd like to have a transgender colleague with us as well. तब मजा आएगा। So ये जो inclusion की हम बात करते हैं और diversity की बात करते हैं, I think this subject is a very well-known subject. It has been part of all dialogues for the last 10 years, 15 years, maybe more. और जो कॉर्पोरेट सेक्टर अब कर रहा है वो 15 साल पहले बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो लेमन ट्री जहाँ से मैं आती हूँ, हम लोग ये काम 18 साल से कर रहे हैं, 2007 से शुरू हुआ था एज एन एक्सपेरिमेंट, और आज जो सिचुएशन है वो हमारा DNA है, हमारा कल्चर है, और ये एक पूरा बिजनेस मॉडल है। इसमें हम कोई चैरिटी वाली बात नहीं करते हैं, कोई CSR वाली बात नहीं करते हैं। इट इज़ कॉल्ड डिवर्सिटी एंड इंक्लूजन एंड इट इज़ पार्ट ऑफ आवर सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम। और जिस तरह कंपनी में हम 3 स्टार और 4 स्टार ब्रांड के होटल्स पेश करते हैं गेस्ट को, उसी तरह हमारा इंक्लूजन प्रोग्राम भी उसी के अंदर आ जाता है। इट इज़ द बिजनेस मॉडल एसेंशियली। एक्सपेरिमेंटेशन से ही हम यहाँ पहुंचे हैं इन 18 years, विच मीन्स वी स्टार्टेड विद डेफ, फिर उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप में गए थे, या ऑर्थोपीडिक हैंडीकैप जैसे कहते हैं, या लोकोमोटर डिसेबिलिटी। और उसमें भी हमने एक्सपेरिमेंट किया जिसको पार्शियल डिसेबिलिटी है और जो शायद व्हील चेयर यूजर हो, दोनों सिचुएशंस में हमने अलग अलग पायलट्स किए थे। फिर उसके बाद विजुअली इम्पेयर्ड एंड लो विजन, उसके बाद एसिड सर्वाइवर्स,
And around 13 years ago, हमने काम शुरू किया as probably the first in the corporate sector in intellectual disability and in autism, which is neurodiversity. और ये वाला जो काम होता है, it is much more complex. खास करके जब आप ट्रेनिंग की तरफ देखिए, ट्रेनिंग तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, and to make the training inclusive. मेन चीज़ ये है कि अगर आप सिखा रहे हैं किसी को हाउसकीपिंग का काम या फ्रंट ऑफिस का काम या फूड एंड बेवरेज का काम, आपको इस तरह सिखाना पड़ेगा कि वो इंडिविजुअल, चाहे उसकी जो भी डिसेबिलिटी हो, उसको पूरी तरह से अपना काम समझ आ जाए. अगर काम समझ नहीं आएगा तो सर्विस ठीक से नहीं दे पाएगा. सर्विस ठीक से नहीं देगा, वो खुद फ्रस्ट्रेटेड होगा, उसके कॉलीग फ्रस्ट्रेटेड होंगे, उसके बॉस फ्रस्ट्रेटेड होंगे, और वर्स्ट, गेस्ट को सर्विस नहीं मिलेगी. तो इसीलिए हमने बहुत ज्यादा फोकस दी है ट्रेनिंग पे, और किस तरह और क्या बदलाव लाना है. व्हाट चेंजेस डू वी हैव टू मेक इन आवर ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी to make sure that a deaf person is trained in an appropriate manner, a person with a physical handicap is trained appropriately, जिसकी low vision है उसको भी सब समझ आ गया ट्रेनिंग. एंड जब हमने काम किया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ऑटिज्म के साथ, तो वो मॉडल ही बदल दिया हमने किया इंटर्नशिप स्टाइल में. मतलब इट्स ऑन द जॉब, मगर आपको रोल प्ले के जरिए सिखा के प्रैक्टिस करा के आपको जॉब ऑफर बाद में आएगी. पहले आप इंटर्न रहेंगे करीब 6 months to a year, एंड फिर उसके बाद आएगी. एंड इट हैज वर्कड वेरी वेल, बिकॉज जब तक आप पूरी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे टीम में, it is not a good idea to go for inclusion. It will make it very difficult. And the proof, इस सब का जो proof होता है वो हमें अपने guest से ही मिलता है. Because guest बोलता है that I am very happy to stay at a lemon tree hotel because I get a very affordable price, I get great service, and the service is the same whether it's a person with disability or without disability. इसी को हम कहते हैं our measure of success, कि अगर हमने ठीक से ट्रेन किया और ठीक से इंक्लूड किया, इसका मतलब है हमने ये काम पूरी तरह कर दिया. There are many more things to share, but I'll hold on for a few minutes. I want to just add one small thing here. Lemon Tree में हम सब लोग को Indian Sign Language की ट्रेनिंग मिलती है. You can see there's an interpreter here doing a very good job. So हम सब जो employees हैं, हम लोग as a company, we are more than 10,000 employees today. I'm talking about total, not disability, just total. हम सब इंग्लिश जानते हैं, हम सब हिंदी जानते हैं, और हम सब इंडियन साइन लैंग्वेज जानते हैं. सोचिएगा इसके बारे में, बहुत जरूरी बात है ये. Thank you, Aradhana ji, for sharing your initial thoughts. आपने एक बहुत ही बढ़िया बात की एक हम जहाँ से स्टार्ट किया और अभी तक भी, कि ये जो जितना भी इंक्लूजन हो रहा है PWDs का आपकी वर्कफोर्स में, इट इज़ नॉट अ चैरिटी, इट इज़ नॉट डन विद अ चैरिटी माइंडसेट. ये एक बिजनेस मॉडल की तरह किया जाता है कि इंक्लूजन एक्चुअली का जो रियल मीनिंग है वो तभी आएगा अगर हम सबको इक्वल ट्रीट करेंगे. अगर हम किसी को स्पेशल ट्रीट करेंगे कि ये PWD है, सो मेरे को इनको लेना ही है, मैं इनको चैरिटी की तरह ले लूँ, मैं इतने % ले लूँ, तो बात नहीं बन पाएगी. अल्टीमेटली वी हैव टू ब्रिंग द PWDs टू दैट लेवल दैट वी आर एबल टू इक्वेट देम विद रेस्ट ऑफ द वर्कफोर्स. और जब हम ऐसा करेंगे तभी ऐसा होगा कि हम उनके फ्यूचर जो करियर पाथ है उसके बारे में भी सोचेंगे, और हमें ऑड नहीं लगेगा कि हम जैसे उनको कोई सपोर्ट कर रहे हैं या हम उनको कोई एक्स्ट्रा माइल दे रहे हैं टू मूव फॉरवर्ड. तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक most of the corporates have learned a lot from Lemon Tree का model and Lemon Tree का experience. So very nice. Thank you, Aradhana ji, for sharing this. Next, I will go to Vikram ji. Vikram ji is from Western Gurgaon. So I would request him to share his experience about the challenges he has faced and what special steps they are taking to make sure that this decent work happens there and their career paths are taken care of, and all kinds of equalities there, even for gender within the PWD and all that stuff. Thank you, Dr. Saab. To start with, I represent Marriott Hotels in India. When it comes to this particular initiative,
I think so. What Lemon Tree did for the entire industry is about breaking the mindset of the employer. And I think so that's the biggest step what Lemon Tree did, and I think so, irrespective of the brand, we actually, with high regards, we actually thank you for that, ma'am. So that's one, and the second thing is, जैसे मैम ने कहा कि 10-15 साल से ज़्यादा बातें हो रही थी, काम हो रहा था. I think so as a society, and when I say society, in a hotel like ours or any of the hotel, there are 3 to 4 stakeholders. One is our guest who pay us. उनकी वजह से our shops opened, our hotels run. Second is the management company, which is Marriott in our case. The third biggest stakeholder is our employees who actually provide the service. And the fourth is the ownership. In a managed concept, the whole individuals who owe the assets. कोई भी initiative run करने के लिए, I think so the alignment of all these 4 stakeholders is very, very critical. And as a society, what we have seen, the guests are equally accepting individuals from this particular segment of inclusion, which gives us confidence to put them in front. From an employee standpoint, again, it is a model. At Marriott, we deferred the entire inclusion initiative into 3 stages, if I may say so. Stage 1 was primarily hiring of PWD associates, and at the same time, the rest of the associates were sensitized across that initiative. Stage 2 was focused on how do we retain them. कि वो hire तो मैंने कर लिया, I've shown big numbers on a slide to my corporate team or XYZ, but are they sustaining that 2 years mark, 3 years mark, or 4 years mark, and they are being a part of the system? And I think so we did fairly well in the stage 2 as well. Now the focus of Marriott is into stage 3, which is more to do with how do we grow them to the next level. As training is very important, leadership trainings are very much available, skills trainings are very much available, but targeted to PWD associates, I think so a significant amount of work is happening in this space. And I think so stage 3 will be developing and seeing success stories out of them to take on additional responsibilities of department heads and GMs. As we speak, ABILYMPICS is a very, very good initiative, and I think so the amount of confidence that it brings into these individuals who participate, that is phenomenal. So I truly thank Sarthak for that. But yeah, stage 3 is what I am personally looking forward to with keen interest, and let's see how it develops in the next 1 to 2 years there. Thank you. थैंक यू विक्रम जी. आई थिंक आपने बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स टच किए. एक तो रिटेंशन वाला जो पॉइंट है, बिकॉज अगर एनवायरनमेंट जो है वर्क प्लेस पे सही नहीं होगा, इज़ नॉट मैचिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एम्प्लॉय, तो वो कहीं ना कहीं विल स्टार्ट लुकिंग फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी, और या वो सार्थक में वापस आएगा कि साहब मेरा मन नहीं लग रहा, आप कोई नई जॉब मेरे लिए जुगाड़ करो या कुछ करो, समथिंग लाइक दैट विल हैपन. And the second thing you have talked about as a measure that will address this issue is the training part. तो हम लोग जैसे बाहर भी बात कर रहे थे, तो आराधना मैडम ने भी ये बात मेंशन किया था कि इवन आफ्टर 18 years ऑफ इंक्लूजन ऑफ PWDs इन देयर वर्कफोर्स, वो कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग चलती रहती है, क्योंकि हर रोज़ नए नए चैलेंजेस आ जाते हैं, नई नई रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं आपके जॉब प्रोफाइल्स की, तो इसलिए ट्रेनिंग्स तो हमेशा चलती रहेंगी. बट जो आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि जो ट्रेनिंग्स हैं, अगर वो स्पेसिफिकली इस चीज़ के एंगल से करी जाएंगी कि ये इनके कैरियर पाथ में हेल्प करेगा टू डिसेंड अपवर्ड्स, तो उसकी बहुत ज़बरदस्त सिग्निफिकेंस रहेगी. बिकॉज एक तो होता है कि उसी पोजीशन पे आपको अपने आप को लेटेस्ट चीज़ों के साथ मेंटेन करने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, बट द सेकंड थिंग इज कि आपको अपवर्ड मूव करने के लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए. अगर उसमें मैनेजरियल स्किल्स बिल्कुल है नहीं, तो आप बना नहीं पाओगे इसको कभी मैनेजर. सो ही विल नीड टू बी ट्रेन्ड एज अ मैनेजर. तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम योर साइड. थैंक यू सर.
Now I would like to invite Miss Richa Bansal, who's the founder and managing director of Sarthi and has come all the way from Dehradun to participate in this Sarthak conference and in this panel. So thank you very much for that, ma'am. And they run a BPO, and also they have recently started a job portal kind of a thing, which she should be able to tell us better. तो इनका जो एक्सपीरियंस है वो एक तो बीपीओ सेक्टर का है, वर्क फ्रॉम होम का है, और तीसरा जो एज अ पोर्टल विच विल बी हेल्पिंग इन रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस कंपनीज. तो अभी हम हॉस्पिटैलिटी से हट के एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव जानते हैं, देखते हैं. तो रिचा बंसल जी प्लीज. थैंक यू सो मच. आई थिंक जैसा आपने शुरुआत में बोला, आई वुड लाइक टू फर्स्ट टच अपॉन द ओवरऑल इंक्लूजन दैट यू स्पोक अबाउट. आई थिंक पहली चीज़ सारथी ने जब शुरुआत करी थी, हमने रिवर्स इंक्लूजन किया था. वी स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हायरिंग ओनली पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़. टिल द वेरी फर्स्ट 5 years हमारी कंपनी में अदर देन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ कोई था ही नहीं. हमने उसके बाद नॉन डिसेबल्ड को इंक्लूड करना शुरू किया था, because the true meaning of inclusion is to have everybody. So we did a reverse inclusion, as I always say. And that, I think, also gave us a huge perspective. Second, I think when we talk about inclusion, inclusion is about bringing people from all parts of the country. And Sudhir sir, you mentioned about that vision impaired को jobs मिलने में काफ़ी difficulty होती है. I'm very happy to say that we started our journey by hiring only persons with vision impairment. The largest number of people in our organization are persons with vision impairment. Today, we hire more than 10 diverse disabilities. And pandemic हमारे लिए एक game changer था. Because जहाँ most of the BPOs, because we started as a BPO, जहाँ most BPOs pandemic के दौरान बंद हो रहे थे, हमने अपनी strength को 15 से लेके 100 लोगों तक हम लेकर गए during that time. Because suddenly, it was a level playing field. लोग घर से काम कर सकते थे. And therefore, even diverse, very complex set of disabilities जो घर से move नहीं कर सकते थे, जिनको अपना घर का ecosystem चाहिए था, we were able to bring them on board. And surprisingly, we did not find a reason to go back to office. So we continue to work virtually. And that has become a very successful model for us. And surprisingly, the corporates that we service, we make sure जब हम उनके साथ अपना MOU sign करते हैं, हम उनको पहले बता देते हैं हम virtually काम करेंगे. So as long as there is no compromise on the work that we deliver, it is acceptable. Thirdly, we spoke about the growth. As I said, in the first 5 years, we never ventured outside of disability as a space. We had no other option but to give growth to our people. And when you don't have too many options, you find a way out. And I'm very happy to say that people who used to be a telecaller perhaps in our organization, today they are leading functions. They are leading the HR recruitment functions. They are leading the training functions. They are leading the complete client servicing function. And that kind of gave us also the confidence that it is possible. And somehow, when we were running this BPO and all the experiments were taking place, that is when it struck us that if we can do it, we can definitely encourage other corporates to do it. So we started consulting for organizations, and the biggest gap that most organizations feel is that they are not able to get skilled manpower. Skilled manpower is a huge issue. तो हमने खुद के लिए भी experiments किए हैं, जैसा मैम Richa you were talking about, कि कहीं ना कहीं the gap is how do you make sure you are skilling people as per the requirement of the corporate. So we started working with organizations like Sarthak, NAB, and we started working with them closely in terms of training them. So that worked for us. And coming to the job portal, we realized that if we have to solve some amount of a problem, we have to do it at scale. There was no job portal that was existing which was dedicated for persons with disabilities. So we launched Hireable. And this is an AI-enabled job portal where we are bringing persons with disabilities who are registering themselves there, and the corporates are listing their jobs, and the corporates are also getting educated
beyond, because mostly corporates tend to think that the only disability they can hire is a person with the orthopedic challenge. How do they find that, okay, with this job role, so many more disabilities can be hired? So we are also trying to educate them through a self-learning tool. We have integrated AI there so that they learn that, and they also try and hire differently. So that's the whole purpose of Hireable, and this has been our experience. थैंक यू मैम. ये रिवर्स इंक्लूजन वाला बहुत अच्छा लगा आपका पॉइंट कि आपने सारे डिसेबल पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है वो हायर किए पहले, और बाद में जब आपको लगा कि यार कुछ इंक्लूजन होना चाहिए तो then you reverse included the so called normal people. So that was very nice. Thank you, ma'am. Abhi, now I would like to call upon Miss Divya Gupta ji. She comes from IHCL, the Taj Hotel Group, as area director for human resource. So मैम आप अपने experiences बताइए प्लीज़ कि कैसे जो आज आपका जो ऑलरेडी काफ़ी सारा वर्क फोर्स है जो PWDs हैं, तो उसमें फर्दर इंक्लूजन कैसे आप लोग जेंडर की इंक्लूजन को कैसे मतलब व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस इन योर इंस्टीट्यूशन, प्लस आप what are your thoughts about a decent workplace or decent work for these people, the concept of SDG 8 what we call as. Okay, thank you so much for inviting me on this panel. I'm really honored because this is something which is very close to my heart. As a concept, I would not say as a topic, because I represent IHCL, and IHCL being Tata Group, हमारा जो genesis है of our organization is very much grounded to the ethos of Indian society and sustainability also. So IHCL की जर्नी मैं बोलूँगी, एंड हम डिस्कस भी कर रहे थे, प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आया है, और मैं कहूँगी इस सेक्शन में बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आया, क्योंकि जो माइंडसेट का स्ट्रगल था, जैसा कि विक्रम ने भी बोला कि पहले माइंडसेट को सेट करना ज़रूरी है, कि इंक्लूजन इज़ नॉट जस्ट थॉट, इट्स एन एक्शन विच विल ओनली हैपन व्हेन यू हैव ऑल पीपल अलाइंड विद द सेम माइंडसेट. प्री कोविड ये माइंडसेट को आगे बढ़ाना एक बहुत मेन जिम्मेदारी होती थी HR डिपार्टमेंट की, सस्टेनेबिलिटी डिपार्टमेंट की, और वो अवेयरनेस लाना, बाइन लाना बहुत मुश्किल भी होता था. मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत इजी था. लोगों को फील कराना कि इंक्लूजन इट्स नॉट समथिंग CSR, जैसा मैम ने बोला, मैम लाल ने, कि ये CSR नहीं है, ये एक बिजनेस प्रपोजिशन है. आप अगर इंक्लूजन ला रहे हैं तो कैसे आपके बिजनेस को फ़ायदा होगा, उसमें बहुत स्ट्रगल होता था. पोस्ट कोविड बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, हमारे लिए ये बहुत ईजी बना. वाई आई विल टेल यू, बिकॉज एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगी. हमारे यहाँ IHCL में लास्ट ईयर ये थॉट आया कि वाई इंग्लिश और हिंदी ओनली, वाई नॉट थर्ड लैंग्वेज विच इज़ साइन लैंग्वेज. When we are getting people of PWD, we have to be also ready to converse, because communication and dialogue is the key of any successful organization. अगर हम अपने ही लोगों से बात नहीं कर पा रहे, अगर हम उनकी इच्छाओं को नहीं जान पा रहे, अगर हम उनकी क्षमता को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, तो हम एज अ ऑर्गेनाइजेशन नहीं बढ़ पाएंगे. सो देन एक ड्राइव शुरू हुई, हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ किया, और सारे जो सीनियर लीडर्स हैं जो कन्वर्स कर रहे हैं 100% साइन लैंग्वेज में सर्टिफाई हुए, एंड उससे एक नया डायलॉग शुरू हुआ. मैंने खुद एक्सपीरियंस किया. हम जाते हैं दूसरे टाटा कंपनी में असेसमेंट करने के लिए, और जब मैं लास्ट ईयर ट्रेंट में गई, हैदराबाद के एक स्टोर में मैंने देखा एक हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड गर्ल बहुत अच्छे से फ्रेश एंड वेजिटेबल्स सेक्शन को संभाल रही थी एज एन इंचार्ज, नॉट एज एन एसोसिएट, एज एन इंचार्ज. एंड मैं जब वहाँ गई और जब मैंने उनसे साइन लैंग्वेज में बात करना शुरू किया, बिलीव मी, उनसे ज़्यादा खुशी मुझे हो रही थी कि मैं उनसे कनेक्ट कर पा रही हूँ, एंड मैं काबिल हूँ उनके लिए बात करने के लिए. सो दैट्स व्हेन द थॉट केम इन, जो आज सारी ऑर्गेनाइजेशन को सोचना भी चाहिए, कि वाई आर वी थिंकिंग फ्रॉम अ डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव. It is about changing the gear and thinking
to see from the lens of ability. And ability is not only for PWDs, ability for everyone, every human being. एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर हम सबके ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक प्रेग्नेंट लेडी हैं, क्या हम सारी सुविधाएं नहीं उसको रियलाइन करते हैं ताकि उनको कंफर्टेबल हो उनकी जर्नी ऑफ प्रेगनेंसी? अगर कोई वरिष्ठ हैं हमारे होटल में, तो क्या हम उनके लिए एर्गोनॉमिकली चीज़ें नहीं बनाते हैं, राइट? सो वैसे ही जब PWDs आते हैं तो उनके लिए कुछ क्रिएट करना शुड नॉट बी डिफरेंट. इट इज़ डेफिनेटली अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ एट वर्क प्लेस. एंड 2 एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगी. जैसे IHCL ने अपने ये विजन को आगे बढ़ाया. हम सब फॉलो करते हैं एक संस्कृत वर्ड जिसे बोलते हैं पाथ्या. पाथ्या मीन्स पथ. एक पथ हमने डिज़ाइन किया है एज IHCL विजन फॉर DEI फॉर सस्टेनेबिलिटी, जिसमें हम सारे होटल अलाइंड हैं कि कैसे एक वर्क प्लेस को इंक्लूसिव बनाया जाए. इंक्लूसिव फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव फ्रॉम ट्रेनिंग, इंक्लूसिव फ्रॉम जॉब रोल्स ऑल्सो. एंड जब हमने जर्नी शुरू की, सो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आई हमें कि हम जो इन्वेंट कर रहे हैं जॉब रोल, होटल्स इज़ वेरी पीपल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन. दीवारें, प्रोडक्ट्स सब कुछ कॉपी हो सकते हैं. जो कॉपी नहीं हो सकता है वो है इंसान, जो हमारे ब्रांड को बनाते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड. सो उस चीज़ को आगे कैसे लेके जाए, उनको कैसे अपनी स्ट्रेंथ बनाएं. सो देन वी रियलाइज कि इट इज़ एसेंशियल कि हम राइट NGOs को पैनल पे लाएं जो सक्षम है हमें बताने के लिए, हमें गाइड करने के लिए कि अगर हमें एक इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन बनाना है तो क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट होता है ऑन द पीपल एंड फॉर द पीपल ऑल्सो. सो काफ़ी सारी NGOs जैसे सार्थक बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनर विद अस ऑन दिस. मुस्कान NGO ऑन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड NAB, नोएडा डेफ सोसाइटी, एंड बहुत सारे हैं जो हमारे सामने आए और खुशी आए कि यस, हम आपके साथ पार्टनर करना चाहते हैं आपके जॉब मैपिंग के लिए. एंड तब वो रिवर्स प्रोसेस शुरू हुआ कि हम स्किल कर रहे हैं फॉर अ राइट काइंड ऑफ जॉब. जबकि पहले जो होता था कि आप स्किल कर रहे हैं, देन इंडस्ट्री सोच रही है कि इस स्किल को कहाँ पे डाला जाए. अब हमने उल्टा शुरू किया, हमने जॉब मैपिंग शुरू की. हमने बताया ये जॉब्स हैं हमारे पास, एंड पोस्ट कोविड ये जॉब ज़्यादा बढ़े क्योंकि मल्टीटास्किंग पे फोकस आया, स्प्लिटिंग ऑफ द जॉब पे फोकस आया कि आपने एक ही चीज़ जो पहले अगर 10 स्टेप में होती होगी तो आपने सोचना शुरू किया कि वो 10 को मैं 8 कैसे करूं, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना शुरू करूं, क्या चीज़ें मैं एक भाग आगे जो गेस्ट फेसिंग का है उसको कैसे करेंगे और एक जो पीछे जो होता है क्रिएटिंग द एंटायर सीन वो कैसे करेंगे. सो देन वी रियलाइज्ड कि हमने काफ़ी सारे जॉब्स हैं जो PWD कैटेगरी में डेफिनेटली आ सकते हैं. That is one. Job mapping is very important. Second was again giving that space of inclusion, which I will say it's about equality. So Tatas definitely follow equal opportunity. So हम सब के यहाँ भले ही वो जनरल मैनेजर हों, मैं हूँ या कोई भी PWD कोलीग हो मेरा सहकर्मी, हम सब के पास सेम फैसिलिटीज़ हैं. हमारे पास एक माइताज ऐप है जिसमें सब फैसिलिटीज़ वहाँ मिलती हैं. कोई डिफरेंशिएशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन ऑल्सो. जो रोल के लिए आप लिए जा रहे हैं उसकी जो जॉब की जो कॉम्पिटेंसी है, जो CTC है, वही मिलेगी. इट्स नॉट दैट PWD विल गेट लेसर और somebody will get higher. It's about role alignment. We have also made lot of success stories जिससे कि inclusions बहुत evident हुए. So हमारे होटल्स में, स्पेशली दिल्ली होटल्स में आपको देखने को मिलेगा ब्लाइंड बेक कैफ़े. और ये जर्नी जब शुरू हुई तो बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था कि हम बैठे थे, हमने शेफ़ के साथ, हमारे कलनरी शेफ्स जो हैं ताजमान सिंह के, एंड ऐसे डिस्कशन हो रहा था कि ये जो दिव्यांग लोग हैं फ्रॉम NAB, उनको हम कैसे समर्थ बनाएं. समर्थ ना कि सिर्फ जॉब के लिए, बट ऐसा कि वो अपने आप आगे बढ़ सकें, अपनी कम्युनिटी को भी लेके जा सकें, अपने फैमिली को भी सपोर्ट करें. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द थॉट वाज अगेन विजुअलाइजिंग हाउ विल इट बी पॉसिबल. होटल्स में विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स कैसे काम करेंगे, हाउ विल दे डू द टास्क. एंड एक छोटा सा हमने एक्सपेरिमेंट किया. हमने सबको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया और हमने कहा चलिए अब हम चॉपिंग करते हैं, एंड टाइमलाइन दे दी 1 मिनट. बिलीव मी 1 मिनट में कोई भी चॉपिंग ठीक से कर ही नहीं पाया.
जो कट्स थे वो बिल्कुल आड़े टेढ़े जा रहे थे। जब वो 1 मिनट का एक्सपेरिमेंट 15 मिनट तक खींचा, तब जाके लोगों को ये रियलाइज हुआ कि इट इज़ डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। हमने 15 मिनट लगाए हैं, हम इसको कैसे 1 मिनट में करेंगे, एंड उससे ये थॉट शुरू हुई। और पूरी NAB की जो लड़कियां थीं उनको हमने ट्रेन किया, एंड 5 साल के कठिन संघर्ष के बाद उन्होंने अपना एक कैफ़े लॉन्च किया इन देयर NGO, ब्लाइंड बेक कैफ़े। सो दैट वाज वन। बट वो चीज़ वहाँ नहीं ठहरी, हमने कहा कैफ़े तो खोल दिया, अब आगे क्या? सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है इस क्षमता को आगे कैसे लेके जाएं। सिर्फ एम्प्लॉयमेंट देना अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसमें और भी बढ़ने की बात है। सो केटरिंग, क्या वो अपने NGO से बाहर निकल के केटरिंग कर सकते हैं? सो हमने उनको केटरिंग की एक्सपर्टीज देनी शुरू की, एंड देन दे डिड फर्स्ट। जब ताज पैलेस का 40th ईयर सेलिब्रेट हो रहा था, हमने उनसे केटरिंग कराई सारे एम्प्लॉयज के लिए, ऑलमोस्ट 1000 एम्प्लॉयज, एंड इट वॉज द सेकेंड माइलस्टोन। The third milestone came when they said, हम अब सक्षम हैं अपने रेस्टोरेंट को आगे ब्रांड बढ़ाने के लिए। और the first blind bake cafe came in Taj Mansingh as a extension of NAB, and आज के डेट में they are also opening many more blind bake cafe in Tata's, TCS, in association with a lot of skill center. So these kind of stories really relate to that anything is possible. You just have to have the mindset of inclusion and equality. And that is only possible when you start looking from the lens of ability, not disability. थैंक यू मैम। आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स टच किए। मुझे लगता है कि एक तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि हम जब भी एक कोई भी ऐसे अननोन फील्ड में घुसते हैं या अननोन फील्ड में काम करना शुरू करते हैं, जैसे दिस वाज एन अननोन फील्ड लाइक 2008 में, जैसे डॉक्टर अग्रवाल भी सुबह मेंशन कर रहे थे कि तब लोग कहते थे कि यार कैसे होगा, कैसे रखेंगे, ये कहाँ बैठेंगे, ये कैसे अंदर आएंगे। आई मीन इट वाज अ हवा फॉर देम कि पता नहीं क्या है ये। तो बट नाउ people are, most of the corporates who have hired at least few PWDs or who have seen other people hiring PWDs and they are working perfectly fine. So now that fear is gone. And but जो आपने अभी जो पॉइंट टच किया कि एक्सपेरिमेंटेशन जो है ना वो करते रहना पड़ेगा। आपने जो बताया कि आपने उनको गर्ल्स को ट्रेन किया, तो वो जो ट्रेनिंग है और वो जो कांस्टेंट ट्रेनिंग फॉर क्वाइट अ फ्यू इयर्स, और उससे जो एक फियर चला गया सबका, उनका भी और द पीपल अराउंड देम, द पीपल हु आर मैनेजिंग देम, तो दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें एक जो और पॉइंट आपने टच किया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, दैट इज अ स्केलिंग अप ऑफ द थिंग। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक कंपनी में एक कुछ काम कर रहे हैं और कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल हो रहा है, जैसे अभी आपने शेयर किया, तो देन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि हम उस एक्सपेरिमेंट को, उस सक्सेस को, उस अपने एक्सपीरियंस के सक्सेस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा at platforms like this, or maybe we can think of, Aradhana ji, you are such a senior person, कि कोई इस चीज़ को include करके specifically, like we can think of only some platform where hospitality people are meeting purely for this purpose, that what are their experiences on hiring and keeping and training and other things of PWDs, और फिर हम उसको स्केल अप कर पाए, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम उस एक्सपेरिमेंट को स्केल अप कर पाए। आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेरी नाइस एक्सपीरियंस शेयरिंग दिव्या जी। धनंजय जी, आपके बारे में तो मुझे फ्रैंकली नहीं पता था ज़्यादा पहले, लेकिन हम लोग जब बाहर बैठे हुए थे तो बात हो रही थी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से धनंजय जी आते हैं, विंध्या इन्फो मीडिया से, तो आपका बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए। तो आप जो हम सब बातें अभी कर रहे हैं रिगार्डिंग द डिसेंसी ऑफ वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जेंडर इंक्लूजन एंड ऑल दैट स्टफ, तो आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज़। आई थिंक वी हैव लॉट टू लिसन टू यू एंड लर्न इट फ्रॉम यू। मैं अपनी बात की शुरुआत एक शायरी से करना चाहूँगा। हर इंसान में चमक होती है,
उसे देखने वाला चाहिए। अगर मौका मिले तो रास्ता मिल जाता है, और अगर रास्ता मिले तो मंजिल जरूर ही मिलती है। अगर हम पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं, पीडब्ल्यूडी कम्युनिटी की ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कैसे दी जाए। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब बता रहे थे कि भाई अब वैसा समय नहीं है कि पीडब्ल्यूडी को हायर करना चाहिए, काफ़ी लोग हायर कर रहे हैं, एंड वी हैव सीन लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरी हियर। लेकिन टू हायर पीडब्ल्यूडी इज गुड टू हैव, लेकिन अगर उनको ऊपर बढ़ने का मौका दिया जाए, अगर लीडरशिप लेवल पे पीडब्ल्यूडी कम्युनिटी के लोग हैं, तो दैट बिकम्स ए कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड इन विंध्या we have lot of people who have grown up the ladders. They are senior operation managers, and even we have a ABP who is a PWD. So therefore, when we see a success story within the organization, and when we speak in various forums, we see that people are struggling to, they have to take a small step. छोटे छोटे कदम से शुरुआत करनी चाहिए। पहले एक पीडब्ल्यूडी लिया, कोई वीआई लिया, विजुअली इम्पेयर्ड लिया, एक डिसेबल लिया जो ऑर्थोपेडिक डिसेबल है, या किसी ऑटिज्म वाले को लिया। अब ऑटिज्म के केस में हमारे एचआर टीम में ही 3 लोग हैं जो ऑटिज्म बैकग्राउंड से हैं, एंड दे डू अ वेरी ग्रेट जॉब। मैं इनवाइट करना चाहता हूं आप में से कोई भी हमारे ऑफिस में आइए, बैंगलोर के ऑफिस में। हमारा जो इंटरव्यू कोऑर्डिनेशन होता है, वो इंटरव्यू कोऑर्डिनेशन हमारा ये एम्प्लॉय करता है। ही इज ए ऑटिस्टिक बैकग्राउंड, एंड ही डज अ वेरी फैंटास्टिक जॉब। So that kind of thing. And when we talk about the equity and the inclusion, आराधना जी अभी बता रही थी कि इंक्लूजन में, जैसे यहाँ पे आपने देखा इस मंच पे 4 ज़्यादा डाइवर्सिटी हैं और 3 जो हैं वो मेल बैकग्राउंड के हैं। एक अगर ट्रांसजेंडर भी हो जाता तो एक सोने पे सुहागा हो जाता। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों very proudly we say that we also have, though we have a small number, we have 4 transgender employees, and they are doing a fantastic job. So that kind of thing. Now coming to a cultural shift in terms of acceptability, अगर मैं बीपीओ बैकग्राउंड की बात करूं तो बीपीओ में क्या होता है कि सिर्फ इंटरनल स्टेक होल्डर्स नहीं होते, हमारे सर पे क्लाइंट बैठता है। अब यू नो द कॉल सेंटर्स एंड हाउ इट ऑपरेट्स, यू नो, performance is very monitored on every calls, and then every day in and day out revenue is measured and things like, and so on and so forth. In various process, I mean, just I'm touching the, I'm going to the little, in detail at micro level. What happens at the interview stage? There are 3 rounds of interview. Even the client also takes one round of interview. And if they are not aligned to the acceptance of taking a PWD, because they have their bias, भाई ये तो PWD है, ये नहीं कर पाएगा, ये कैसे करेगा, ये सब चीजें अब उनको समझाना, उनके साथ में डिस्कशन करना, नेगोशिएट करना कि नहीं भाई आप मौका दीजिए इनको, ये भी अच्छा करते हैं। और हमारे पास में रिकॉर्ड्स हैं और परफॉर्मेंस रिकॉर्ड हैं। जो नॉर्मल, सो कॉल्ड नॉर्मल कैटेगरी के एम्प्लॉयज हैं, उनका परफॉर्मेंस और पीडब्ल्यूडी का परफॉर्मेंस दोनों एक ही लेवल पे है। तो आप किस बिना पे कह सकते हैं कि भाई ये पीडब्ल्यूडी वाला काम नहीं कर पाएगा, अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगा। सो ये एक जो बायस जो है उसको रिमूव करना एक बड़ा चैलेंज है। एंड but if it is there part of the culture, we can push it across and ensure that all of us are working towards it, and we have more and more people as part of the workforce. Thank you. वेरी नाइस टू नो सर। आपने तो रियल लेवल की इंक्लूजन कर रखी है अपनी टीम में। That's really good. That is why now I know the reason why everyone was saluting Vindhya. Now I know the reason. तो अब हम लोगों ने सब प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने हैं,
और उनके उनके जो जो अभी तक का एक्सपीरियंस, अभी तक का चैलेंजेस या जो भी सजेशंस उनकी तरफ से आई हैं. नाउ आई वुड लाइक टू गो टू ऋचा शंकर मैम. She is the Deputy Director General in the Department of Persons with Disability, Empowerment of Persons with Disability. तो ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे PWDs को लेके सारी पॉलिसीज बनती हैं, इम्प्लीमेंट होती हैं ऑन ऑल दैट स्टफ. तो मैम आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, गाइड कीजिए, क्या सरकार सोच रही है, क्या हम आपके पास मोर्चा लेके आ जाएं कि और अच्छा काम हम कर पाएँ, निकलवा पाएँ सरकार से. First of all, a very good afternoon to everyone, and thanks Sarthak for having me here. And as we speak, Sarthak is also holding National ABILYMPICS competition over here. तो हम यहाँ बात कर रहे हैं एबिलिटीज़ पे, और जैसे कि आपने मेरे विभाग का अंग्रेज़ी का नाम बहुत लंबा चौड़ा लिया, हम हिंदी में बोलते हैं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग. तो हम बात करते हैं दिव्यांगजन की और सशक्तिकरण की. तो बात यहाँ ये है कि हम डिसेबिलिटी नहीं, चूँकि प्राइम मिनिस्टर सर ने जो नाम दिया है दिव्यांगजन, उसका मतलब ये है कि ये औरों से खास हैं. हम कोई कमी की बात नहीं कर रहे हैं, हम खासियत की बात कर रहे हैं. तो इस फोरम पे जो हम लोग ने बातचीत की है, जहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि कैसे इनको इंक्लूसिव अपने इंडस्ट्री में करना है, तो हमें उनकी खासियत पहले देखनी है कि वो किस एरिया में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. उस सेक्टर के लिए उनके लिए पर्सनलाइज्ड अप्रोच करके उनके लिए जॉब्स रीडिफाइन करने की हो सकता है कहीं ज़रूरत पड़े, वो हमें कर लेनी चाहिए. उसी के हिसाब से उनकी स्किलिंग कराने की आवश्यकता है. जो आपके यहाँ जैसे आपने सबने बताया कि अपने आपने उन्होंने ट्रेनिंग कराई है, ट्रेनिंग के बाद थोड़ा सा रीट्रेनिंग भी करानी पड़ती है, फिर हमें लीडरशिप की भी ट्रेनिंग करानी पड़ती है. ये जान के बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ सबके लीडर्स आर एक्चुअली सो प्रोएक्टिव कि वो खुद ही PWDs का इनटेक करना चाह रहे हैं, बट इट इज़ नॉट ट्रू ऑन ऑल फ्रंट्स. सो कई बार लीडरशिप की भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि नहीं, PWDs जो हमारे दिव्यांगजन हैं वो बहुत कुछ करने के काबिल हैं, उनके केवल टैलेंट को पहचानने की आवश्यकता है. जहाँ तक सरकार की बात है, तो सरकार का मोटिव जो है सबका साथ सबका विकास, वो ऑलरेडी इंक्लूजन की बात करता ही करता है. तो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल. जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बने हैं वो भी इसी पे बात करते हैं, लेट्स नॉट लीव एनीवन बिहाइंड. तो क्यों हम दिव्यांगजनों को छोड़ेंगे, दिव्यांगजनों को भी अपने साथ लेके चलना है. और जैसे हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी गियर्ड अप हैं, ऑलरेडी उन लोगों ने ढूंढ लिया है कि कहाँ दिव्यांगजन एक्सेल करते हैं, उनको कैसे अपने साथ में लेकर के और नए नए आयाम पे लेके जाना है. और मुझे लगता है कि आप लोग जितने एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहे हैं, उसमें आप लोग निश्चित ही नए रोल मॉडल्स भी रोज़ रोज़ नए नए कुछ ना कुछ नया सोचते होंगे कि अच्छा अब ये हो गया है, अब नए सेक्टर में देखते हैं कि अब यहाँ क्या रोल मॉडल हम ढूंढ सकते हैं. तो स्काई इज़ द लिमिट, हम लोग कितना भी ढूंढ सकते हैं. और दूसरी बात यह है कि जब हम बात कर रहे हैं कि एक्सेप्टेंस की, तो एक्सेप्टेंस ओवरनाइट नहीं आती. आप लोगों ने भी बताया किसी को 15 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए. तो अब जब पिछले 7-8 साल में जो आप लोगों को सक्सेस मिलनी शुरू हुई है, दैट इज़ समथिंग विच वी शुड बी प्राउड ऑफ. और उसको और आगे ले जाने के लिए हमें और स्टेप्स करने पड़ेंगे. एक्सेप्टेंस ओवरनाइट नहीं आती है, उसको लाने के लिए आप जैसे इंडस्ट्री पार्टनर्स, लीडर्स चाहिए. सरकार ने पॉलिसी बनाई है, RPWD एक्ट बना दिया है, जिसके तहत हम कहते हैं कि हाँ, दिव्यांगजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. पर वो आप लोग जैसा कि आप लोग ने कहा कि दिस इज़ नॉट अ चैरिटी, दिस इज़ ड्रिवन फ्रॉम इनसाइड. वो जो दिल से बात निकलती है वो दूर तक जाती है. मैं उसी एस्पेक्ट पे बात कर सकती हूँ कि आप लोगों का सबका जो मैंने देखा कि आप लोग की इंडस्ट्री जहाँ दिल से जुड़ी हुई है दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए, तभी आप लोग उनका इंटेक ले रहे हैं और उनका अपब्रिंगिंग भी कर रहे हैं, और रिटेंशन जो कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उस पर भी आप लोग कार्य कर रहे हैं. धन्यवाद. थैंक यू मैम. अभी हम लोगों ने सबके विचार सुने और ऋचा मैम का भी हमने लास्ट में सुना कि किस तरह से उनका एफर्ट तो यही रहेगा कि सब लोग इंक्लूड हों प्रॉपरली.
तो मैं एक सवाल आराधना जी एक मेरे दिमाग में उठ रहा है बार बार कि आपका, मैं जहाँ से हमने स्टार्ट भी किया था, कि हमारा जो आई वुड लाइक टू लिसन टू योर एक्सपीरियंस एंड दिव्या जीज एक्सपीरियंस, कि जब हम लोग अपने दिव्यांगजन जिनको हमने रिक्रूट कर लिया, कुछ सालों से काम कर रहे हैं, और फिर हम उनको प्रमोशन देना चाहते हैं, या वी आर थिंकिंग ऑन दैट लाइन, तो एक प्रमोशन होगी डेजिग्नेशन की, दूसरी प्रमोशन होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तीसरी प्रमोशन हो गई इकोनॉमिक प्रमोशन फॉर देयर। तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं और किस लेवल के चैलेंजेस हैं? हमारे एंड पे चैलेंजेस हैं या दिव्यांगजन के चैलेंजेस पे एंड पे भी कोई चैलेंजेस हैं कि आप तो प्रमोट करना चाह रहे हो, वो डर रहा है प्रमोट होते हुए? तो आई मीन समथिंग लाइक दैट, दिस इज जस्ट केम टू माय माइंड। तो इसके लिए हमें क्या करना है? दो सवाल हैं इसमें भी मेरे। एक, do they need some kind of a psychosocial upliftment? And the second thing is, can we somewhere help as NGO? I mean, not only Sarthak, all kinds of NGOs who are working in the field. ये जब loaded question आता है ना तो बहुत मजा आता है. So I want to talk about challenges for just a moment before I come to the answer to your question, because वो challenges थोड़े से foundational होते हैं. So the first challenge of course is कि कंपनियों को पहले दरवाजे खोलने पड़ेंगे. Now thankfully पिछले 10-15 साल में ये दरवाजे खुल चुके हैं, तो चलो एक चैलेंज टेक केयर हो गया. दूसरा चैलेंज मैं पहले ही बता रही थी अबाउट ट्रेनिंग, दैट वी मस्ट ट्रेन इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी इन द वे दैट दे कैन रिसीव द ट्रेनिंग. तो जो डेफ है उसको साइन लैंग्वेज में, जो विजुअली इम्पेयर्ड है उसको एक्सेसिबल कंटेंट के जरिए, जो ऑटिस्टिक है या डाउन सिंड्रोम है उसको अच्छी तरह से सामने से रोल प्ले दिखा के सिखा के प्रैक्टिस कराओ, एटसेट्रा. So this same issue of training extends when you want to look at them from a growth perspective, because अगर आपको पहले आपने ना स्कूल कंप्लीट किया, ना कॉलेज कंप्लीट किया, ना कोई पर्टिकुलर सेक्टर की स्किलिंग कंप्लीट की, थोड़ा एक्सपोजर हुआ था but nothing is complete. That means when you come into the company, whether it's the hotel sector or the BPO sector, any sector, you are first trying to learn the basics कि भाई इस सेक्टर में करना क्या होता है, कॉलीग्स के साथ काम कैसे करना है, टीम में रहने का क्या मतलब है. Yes, I feel कि मैं बहुत एक्सक्लूडेड थी पहले, सपोज आई एम अ डेफ पर्सन, आई फील मैं बहुत एक्सक्लूडेड थी, अब मैं यहाँ पे इंक्लूड हो रही हूँ, बट मुझे भी अपनी तरफ से इंक्लूसिव तरीके से बिहेव करना पड़ेगा. दैट मीन्स आई ऑल्सो हैव टू बी टीम मेंबर, एंड दिस इज नॉट वेरी इजी, आई मस्ट टेल यू. कभी कभी कुछ ईगो इशू आ जाता है, कभी कभी समझ नहीं आती है, कभी मैच्योरिटी की इशू होती है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं. सो दिस सोशियो psychological thing that you spoke of, I think it's a very, very fundamental requirement. So counseling as an input is very important throughout the employment journey. Many companies have their own counselors. In the hotel sector ऐसे ज़्यादा होता नहीं है वैसे. So we call upon our NGO partners who help us in finding these candidates that please continue supporting them and their families by way of counseling and helping them with difficult situations. So अगर हमको ग्रोथ करना है तो ये मैच्योरिटी और ये इनर स्ट्रेंथ उनकी हमें बढ़ानी होगी. दूसरा इशू जो आता है ग्रोथ में, इट इज रिगार्डिंग मल्टीपल स्किल्स. सो सपोज आप फूड एंड बेवरेज सर्विस में हैं, मतलब आप कॉफी शॉप में हैं या रेस्टोरेंट में हैं और आप गेस्ट को सर्व कर रहे हैं, वो आपका मेन काम है. बट रेस्टोरेंट चलाने के लिए और भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल एंगल, जैसे कि एचआर का एंगल, कि टीम कैसे चलानी है, टीम से बेस्ट रिजल्ट कैसे निकालना है. फिर ट्रेनिंग भी एक टॉपिक होता है ना, एवरी मैनेजर हैज टू बी एबल टू ट्रेन हिज टीम मेंबर्स एंड सो ऑन. सो जब हम इनकी ग्रोथ जर्नी देखते हैं तो हमें बहुत सारे इनपुट देने पड़ेंगे एज अ कंपनी regarding these other skills, because वो within 6 months to 1 year वो जो मेन काम है वो तो सीख जाते हैं बड़े अच्छे से और आगे बढ़ते हैं. some of them are very good, some of them are all right, it depends. but मैनेजर बनने के लिए जो आपको बाकी की जानकारी चाहिए और पीपल मैनेजमेंट स्किल्स, ये बहुत जरूरी होता है. तो चाहे आप डेफ हो, चाहे आपको फिजिकल डिसेबिलिटी हो, चाहे आप स्लो लर्नर हो, स्लो लर्नर इज अ टेक्निकल टर्म फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर, आपको हमें सिखाना पड़ेगा, बिकॉज आपको पहले एक्सपोजर नहीं मिला कि टीम कैसे चलानी है. बेसिकली दैट्स द आइडिया. सो हमें
इस एरिया में काफी चैलेंजेस फेस किए हैं. तो अगर आप पूछेंगे कि 18 इयर्स की जर्नी में हमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया विद रिक्रूटमेंट, यस यू आर राइट, एंड विद डिफरेंट disabilities, yes you are right, and we went beyond disability also. I just want to clarify here, we hire what people from the economically and socially marginalized segment also. These can be school dropouts, orphans, widows, battered women, abandoned women and transgender. तो हम ये सेगमेंट भी परस्यू करते हैं जिसमें डिसेबिलिटी नहीं है. तो ये दोनों मिला के हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी डिप्राइव्ड इंडिविजुअल्स. सो हमारा इंक्लूजन का काम ये है. सो you have to create that managerial skill in these people. So हमने over the years पहले 5-6-7 साल तो हमने ग्रोथ के बारे में तो सोचा ही नहीं. हम सिर्फ इंक्लूजन पे काम कर रहे थे, इंटीग्रेशन इन द टीम, मेकिंग श्योर दैट वी आर ब्रीफिंग द रेस्ट ऑफ द टीम वेरी वेल. उनको अवेयर करना पड़ेगा, उनको सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि भाई आपके टीम में अभी डेफ लोग आ रहे हैं, आपकी टीम में फिजिकल हैंडीकैप आ रहा है, ऑटिज्म आ रहा है. जस्ट बिकॉज वो डेफ लोग के साथ काम करते हैं इसका मतलब नहीं है वो समझ गए कि विजुअली इम्पेयर्ड के साथ कैसे करेंगे, ऑटिस्टिक के साथ कैसे करेंगे. हर एक डिसेबिलिटी की जो नीड्स होती हैं वो अलग होती हैं और हमें अपने टीम मेंबर्स को सिखाना पड़ेगा. तो हमारा ये प्रोसेस जो है सेंसिटाइजेशन का ये कंटिन्यूअस है, ये चलता रहता है. सो the effort has been on after the first 6-7 years, I would say. So basically roughly 10-11 years हमने काफी लोगों को प्रमोट किया है from a associate level to executive level to supervisor level. But I want to say in a very fair manner कि इस वक्त कोई मैनेजर नहीं है with disability हमारे कंपनी में, और ये हमारा एक बहुत बड़ा गोल है करने के लिए. बट मैं एग्जांपल देना चाहूंगी KFC का. इनके साथ भी हम लोग बहुत बातचीत करते हैं over the years. Very beautifully they have planned and created a manager who is deaf in Hyderabad. I'm not very sure if he's still there, but I know this from some years ago. And he was heading this outlet which had more than 30 people maybe, or I don't know how many. But what's important is वहाँ का जो turnover था, revenue था, वो crores में था. So as the manager, he was responsible for that. I thought that was really fabulous. And उन्होंने बहुत effort किया वहाँ पहुँचने के लिए इसी बात में. टीम लीडरशिप स्किल्स, फाइनेंशियल स्किल्स वगैरह वगैरह वगैरह. आई एम अज्यूमिंग कि उनकी जो कॉलेज वगैरह एजुकेशन थी उस जेंटलमैन की वो ज्यादा रही होगी, इसीलिए वो ये सब कर पाए पॉसिबली. बिकॉज यू ऑल्सो रिमेंबर, अगर हम डिसेबिलिटी को एक तरफ रखें एज अ सब्जेक्ट, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, ग्रोथ, career path, all of us are not going to become the head of department. All of us are not going to become the chairman. It's not like that. हमें भी वो skills अंदर से कुछ होनी चाहिए और हम develop करेंगे with the help of the company's initiatives. So even in disability, yes, we must give the equal playing field, but eventually it's a pyramid, no? ज़्यादा लोग at the junior level, थोड़े कम लोग at the middle level, और भी कम लोग at the senior level. That's the nature of the beast is what I want to say. Corporate sector में ऐसा ही होता है. तो वो बहुत rounded approach लेना पड़ता है. One important point I want to add, and then I'll stop. Whatever route you use for performance review, for career path, for growth planning for a person without disability is the same process you use for a person with disability. थोड़ी assistance अलग type की देनी है तो जरूर हम देंगे, but रूल्स चेंज नहीं होंगे कि अच्छा आपको 5 चीजें आनी चाहिए, आपको सिर्फ 2 आती हैं, चलो हम आपको मैनेजर बना देते हैं. नहीं जी, अगर मैनेजर को 5 चीजें आनी चाहिए तो 5 ही आनी चाहिए, उससे कम में हम मैनेजर नहीं बनाएंगे. बिकॉज इफ यू सेट योरसेल्फ अप ऑन सम फॉल्सहुड, वो तो फेल ही होगा. वो क्या टीम चलाएगा? उसकी टीम में 30 लोग होंगे, 30 के 30 बगावत कर देंगे, तो क्या होगा फिर? यू कैन नॉट मैनेज लाइक दैट. सो इट्स अप टू द कंपनी टू क्रिएट द करेक्ट ट्रेनिंग फॉर दिस एंड द करेक्ट पाथ बेसिकली. थैंक यू मैम. एक्चुअली जब आप PWDs के बारे में बोल रहे थे, बिकॉज लाइक आई हैव माई ओन एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग डिपार्टमेंट्स एंड हॉस्पिटल्स एंड ऑल दैट स्टफ. तो मैं यही सोच रहा था बार बार कि यार नॉर्मल लोगों को चलाना ही बड़ा मुश्किल काम होता है ना. एंड यू राइटली सेड कि हर एक आदमी ने तो मैनेजर बनना नहीं है, और हर आदमी कहता है मेरे को मैनेजर बना दो, जबकि उसे पता ही नहीं है कि वो मैनेजर बनने के काबिल ही नहीं है. ही इज रादर बेटर प्लेस्ड देन, वहाँ से तो नौकरी छूट जाएगी वहाँ जाएगा तो. सो यू टच्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जैसे जो रूल्स सब पे लागू हैं, वही रूल्स जो हैं वो PWDs पे भी लागू होंगे. और वहाँ पे ये कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता कि इसको 5 पॉइंट्स क्लियर करने हैं, इसको 3 पॉइंट्स पे चल जाएगा, वो नहीं हो सकता. एब्सोल्युटली राइट. बट
everyone can be trained for that, because after all these are all skills, some innate qualities are there in everybody to become a leader, but most of the things can be trained, both things can be, but the people can be skilled for that. सॉरी, मैंने एक बहुत जरूरी बात छोड़ दी, Yes. एम्बिशन। देखिए, हम बस खड़े होकर नहीं बोल सकते चलो तुम भी मैनेजर बन जाओ, तुम भी बन जाओ, तुम भी बन जाओ। अंदर से कुछ आना चाहिए ना, एम्बिशन। इट इज ब्यूटिफुल टू सी how our colleagues, they could be deaf, they could have physical handicap, they could have Down syndrome, वो जब कुछ टाइम में समझ जाते हैं ना कि मैनेजर का रोल क्या है। दूसरा, आपने होटल्स में नोटिस किया होगा, यूनिफॉर्म्स होती हैं हर डिपार्टमेंट की, और मैनेजर की जो जैकेट होती है वो डिफरेंट। सो अब क्या हो गया है, उनको अपना एक्सप्रेस करना होता है ना कि मुझे ग्रोथ चाहिए, देन दे से आई वांट द ब्लैक जैकेट, मुझे ब्लैक जैकेट चाहिए। उसको जैकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको पता है कि ये जैकेट मैनेजर का जैकेट है। सो दे आर वेरी क्लियर एंड दे आस्क यू मुझे क्या करना है, मुझे ये जैकेट चाहिए, मैं बनूंगी मैनेजर। सो इट्स रियली ब्यूटीफुल टू सी दैट एम्बिशन regardless of the age of the person, regardless of the gender, regardless of the disability. Of course, अभी तक हम कर नहीं पाए तो ये फेलियर तो हमारा ही हुआ फिर, है ना? Yeah, I think this will come over a period of time with the experience. Yeah, Vikram ji and Divya ma'am, if you would like to add something. So hindrance, तो I agree with ma'am what she has said. एक जो बहुत चीज़ काम आई हमें इस hindrance को आगे और तोड़ने के लिए, वो था उनके पैशन को कैसे सपोर्ट करें। सो अगेन एक एग्जांपल दूंगी, आई एम एन एल&डी बैकग्राउंड, सो मेरे को एग्जांपल बहुत रेडिली आ जाते हैं। सो सार्थक एनजीओ हैज़ बीन वेरी वेरी पिवटल। हमने एक DNI सिंपोजियम किया था, वी कॉल्ड ऑल द इंडस्ट्री पार्टनर्स, अलग होटल से, अलग इंडस्ट्री से, टू गेट देयर व्यूज़। उसके बाद से एक ड्राइव की, एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही केपेबल इंडिविजुअल जो ताज पैलेस में ज्वाइन हुई, उनका नाम था लक्ष्मी, हैं लक्ष्मी। लक्ष्मी इज़ अ फिजिकली चैलेंज्ड इंडिविजुअल, बहुत एंथुजियास्टिक है, बहुत ही एम्बिशियस है, एज यू सेड दैट शी हैज़ ड्रीम्स टू बिकम मैनेजर एंड GM इन फ्यूचर। सो जब वो आई, उन्होंने हमसे बात किया, पूरा हिंदी में बात किया, बट उन्होंने जब अपने बताया एम्बिशन ये है, हमने कहा यस, आपको हम सपोर्ट करेंगे। एंड देन इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की ताज पैलेस में। पहले हमने इनको अपॉर्चुनिटी दी चूज़ करने के लिए, जैसे मैम भी बोल रही थी कि इंटर्नशिप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। सो रादर देन वी टेलिंग कि दे आर ओके फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, इट इज़ देयर राइट ऑल्सो टू चूज़ वेदर दे फाइंड अस ओके टू बी एन एम्प्लॉयर और नॉट। सो जो इंटर्नशिप और अप्रेंटिस का प्रोविजन रखा हमने उनके लिए, वी गेव हर एक्सपोजर टू वेरियस सेगमेंट्स। After that apprenticeship, she came back and said, I want to be in reservations because मुझे गेस्ट से बात करना बड़ा अच्छा लगता है मैम, बट मुझे ना कंप्यूटर नहीं आता, मैं क्या करूं? एंड दैट काइंड ऑफ डायलॉग वॉज हैपनिंग बिकॉज सार्थक NGO का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था कि सिर्फ प्लेस नहीं करना, हमें रेगुलर चेक इन भी करनी है। तो हम चाय पे चर्चा करते थे, HR बैठा है, सार्थक से NGO से आ रहे हैं, और हम बैठ के बात कर रहे हैं वहाँ पे। दैट्स हाउ शी कुड शेयर विथ अस कि मुझे बढ़ना है, लेकिन मुझे कंप्यूटर भी सीखना है बिकॉज मुझे बढ़ना है। सो देन वी क्रिएटेड अ प्रोग्राम फॉर हर। इट डिडंट एंड देयर बिकॉज इतना ओपन कॉन्वर्जेशन हो रहा था ऑन एम्बिशन एंड वो क्या बनना चाहते हैं। शी ऑल्सो शेयर दैट आई एम ऑल्सो अ पार्टिसिपेंट ऑफ ABILYMPICS and I do swimming competition. Coming from a physically challenged girl was really an eye-opener for us. And then she showed me her medals. Ma'am, मैं regional meet में गई थी, I have stood second in the competition. That was something which I also felt that why the support is only for professional ability. As an individual, she is Lakshmi. She is not only reservation associate. She's Lakshmi, she's somebody who's ambitious, she's part of our family, and she has passion for swimming. We said, Lakshmi, क्या कर सकते हैं? मैम, मैं स्विमिंग की प्रोफेशनल कोचिंग कर रही हूँ, उसमें अगर कुछ हो जाए तो। We said, why not? We looked into personal coach for her so that she can pursue her passion. And I think जो दिसंबर में competition हो रहा है, she's eyeing for being the first in the swimming competition. So aligned passion with work will bring that barriers down, I think. So, so I think so
rightly said, hiring is done. They are pretty much there. But yes, growth is a challenge. And I'll tell you why this challenge comes in from my perspective and what I've seen and based on my experience. A lot of our associates, each one of us is somewhat a summation of a surrounding. And a lot of hiring when a PWD associate comes in, his peer group is from a so-called structured institution of 3 years to 4 years of hotel management in principle. And most of us, most of the hirings that any one of us do, they do not do that structured program of education. And then we give them a 6 months training, skills training. They get onto the job. Some are good enough, they grasp it pretty quickly. Some are not, they take some time. But they certainly miss the education that their peer group had 3 years in their life. So I think so, I would love to see whenever I go for a campus placement, to see PWD associates or with disabilities or with abilities sitting for this campus placements. Once they are there, I think so they will learn in that 3 years with their peer group and the qualities that ma'am was saying कि वो 5 quality manager के लिए चाहिए, कहीं ना कहीं वो उस 3 साल के प्रोग्राम से भी आती है. तो my only request to an NGO or partners like Sarthak, if I may say so, and take this forum, to say this is, it would be, so I would actually love to go to a campus placement and see differently abled associates sitting for the campus at par with the rest of the kids. Moment they are there, they will become managers in the next 3 years. We will not have to do as much as we need to do otherwise. So I think so a collaboration with institutes, education institutes will play a key role right from the age of 15, 16, 17, because by the time they come to us, they are already 21, 22. So I think so 3 years, 4 years back, if something is done more onto them, they will shine and do wonders in our industries. That's my thought on the development bit. एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो उनको गाइड करती है. एक तो वो इंटरनली जो देखते हैं मैनेजर को ब्लैक कोट पहने हुए, जो पावर अथॉरिटी दिख रही है, सो दे एस्पायर फॉर दैट. होटल्स में दे ऑल्सो गेट एनकरेज्ड व्हेन दे वेलकम गेस्ट विथ PWD, and they are representing who's who of the companies. Somebody is CEO, somebody has traveled the globe. When they see them and when they are on the other side welcoming them, they feel more encouraged and motivated that yes, I can be also a world traveler. So they're very observant on that. I think the way the discussion is going on, and it is like my passion to talk about these practical things. It can go on for hours, but the paucity of time does not allow me to continue it further. I'm sorry, both the Richa madams and Dhananjay ji, I could not come to you for the second round. And if there is 1 or 2 questions from the audience, we can take, otherwise we'll close this. Yeah, please. Can someone give a mic there? Yeah, please. We enable them with the right set of technologies or special devices or access to computers that can run the specific softwares. So how much does that as an employer you provide within the organization that can enable them to outperform or maybe become more efficient at their job, so that the problem that you mentioned about meeting the right criteria would. Okay, I think when it comes to including individuals with any disability, till such time there is no accommodation offered, whether it is in terms of digital accessibility, physical accessibility, or policy-led accommodation, I don't think we are
in a position to give them an equal playing ground. So I think as an organization, clearly it is important to give them those aids that are important for them to deliver on the job. I'll take this further to also add, and something that we were talking outside right now, with the advent of AI, I think it is becoming a level playing field for everybody. So whether it is a person with a learning disability who could perhaps be struggling to get the right content today, if the right kind of training is imparted to that person, there is no reason why the outcome would not be at par with any other person. So I think AI is definitely changing the landscape. So when we talk about AI, one of the biggest challenges is security of the data which is within the company, especially the BPO, Vidya Infotech, where you handle Aadhaar card and other private documents. Now, to make them accessible, you still currently need internet access, for which you do process offline. And the second solution is that you will deploy entire AI within the organization. But how much does that actually get implemented within the organization, especially when the government, all your documents are crucial, confidential, and government employs 2% people with disabilities. So how do you actually make sure that the AI also is reaching to the audience who is employed? So here when we talk about assistive technologies, especially in terms of VIs or especially in terms of speech and hearing impaired, and so for both of them, the CRM tool itself, there are various service provider who assist us to give those technologies, and those things enable them to perform the job at par with other so-called normal people. So in terms of, if we talk about the BPO, we definitely have those IT team keeping those, restriction in terms of internal data not flowing outside the premises, or outside our server. So those checks and balances are kept in place. But when we talk about software and assistive technology in terms of for them to access, I think those things are in place, and there are various players who are into this, who are helping us to help them to perform equally. Any other question? We can take one question. Yeah. Yes, standpoint. Should I repeat? Was I audible? Yeah. Go with the permission of my colleagues. So, when we do an inclusive workplace, it's not like we're going to put posters all over our lobby and our coffee shop and all of that, right? तो हम गेस्ट को किस तरह बताएं, ये भी एक क्वेश्चन आता है. So the obvious thing is you use your social media channels obviously to do some storytelling. उसमें आप अपने ब्रांड्स के बारे में बताइए, होटल्स जो खुल रहे हैं उसके बारे में बताइए, कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं उसके बारे में बताइए, एंड ऑल्सो आप अपने एम्प्लॉयज के लिए क्या कर रहे हैं, इंक्लूजन, डिवर्सिटी, विमेन, एनीथिंग एल्स, हेल्थ, वेलबींग, जो भी आप कर रहे हैं उसके बारे में कहानियां बताते जाइए. सो consumers will be able to see that story somewhere on your website, on your social media channels. But still it doesn't mean कि सारे guests आपका देख रहे हैं कि क्या हो रहा है online, maybe शायद ना देख रहे हो. So when they come into your hotel, and if they are first time customers, there has to be some way to quickly communicate that there are people with disability here, and specifically who are they. So what we've done is, there is an identity card that our colleagues with disability are wearing, especially the deaf and those with intellectual and autistic challenges, because it's hard for them to be able to communicate with the guest. Deaf to kar hi nahi sakte वैसे भी.
So that card is, they wear it around their neck like that and they keep one in their pocket. It's a laminated card and it is basically explaining that, hi, my name is Nikhil, suppose, and I am speech and hearing impaired. I cannot hear what you say. I'll be very happy to help you if you can write down what you want. So without making a hoo-ha in a public situation, we want that guest to know quickly कि आप अगर बात करते जाओगे इसके साथ, उसको पता नहीं चलेगा आप क्या बोल रहे हो. So they give that ID card and they show it to them and that guest gets to know instantly. Secondly, all our managers and supervisors and shift in charges, you know, everybody like that who's having a slightly senior role, is trained to be able to brief guests as part of the briefing that they're giving. So suppose they say that, here you are, sir, here's your key, you can check, go up now, your buffet breakfast timing is so and so, whatever, 2-3 things they say. So as part of that spiel, they also say that Lemon Tree hotels are known to be inclusive and you will see colleagues with disability in different parts of the hotel. We just have to make that person aware. And we know from the system that this is a first time guest. We know that he's first time to the brand overall, which is called a V1 guest, or he's maybe a V5, which means he's used the brand 5 times, but he's come to say Delhi, to AeroCity for the first time. So V1, V5, H1. So the system tells us this, that which version is he. So we know when to bring that spiel out. So it's a question of creating awareness through both these channels. And I think we better stop talking because we're late. Yeah. So I'm afraid we'll have to stop here. With the last comment, I'll pick up from what Divya said. I'm sorry, I think we can talk after this thing. The next panel is ready actually. I'm very sorry. So the last comment is that if we can treat our PWDs like our family, I think that's the last word. We will always think about them. We will always think about their growth. We will always think about their comfort. We will always think about creating an environment around them. So that's the last word. And I think this discussion or discussions like this will go on continuing again and again. And this will take us further forward as it has brought us till this point. Thank you very much, all of you. Before we disperse, I want to share that Richa Bansal ma'am and Dhananjay ji, their companies are getting national awards for inclusivity on 3rd of December. So let us cheer for them. Thank you. Thank you, all of you. And thank you, the most learned panel here. Thank you, all of you. Thank you. We have something for you, so you can just stay on the dais. And many, many thanks, Dr. Sudhir Gupta, for such engaging conversations. When conversations becomes emotions, they are never ending. So thank you very much. Can I request Rajiv Bhatia ji to come on the stage and hand over a small token of memento on behalf of Sarthak to all our esteemed panelists and our host and host, Dr. Sudhir Gupta as well. Can I have the Sarthak team to bring the tokens? Yes. Rajiv Bhatia ji handing over to Miss Richa Shankar ji. You guys can come in front and so there can be a Kodak moment as well. Can we have Rajiv Bhatia ji handing over to Miss Aradhna Lal ji? Can I request Rajiv Bhatia ji to hand over to Miss Divya Gupta ji? Rajiv Bhatia ji handing over to Vikram Sharma ji. Rajiv Bhatia ji to Richa ji. Richa Bansal ji. Rajiv Bhatia ji to Dhananjay Tiwari ji. Rajiv Bhatia ji to Dr. Sudhir Gupta. दे दिया
Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. Can we have a quickly group picture, and by the time the second group can get prepared for the next round, can we have a group picture together? Everybody on the stage, please. Everybody on the dais, quickly. Rajiv ji, you can't run away. You have to be here. In the center, the tall man, surrounded by beautiful ladies. For the next panel, we have Dr. Sunil Palaijani ji. He's a seasoned industry leader with 4 decades of experience. He has been included in the top leadership position. He's the CEO. He has been the CEO MD board member. An alumnus of IIM Ahmedabad. His journey of transformation spans across Maruti Udyog, Kepro Group, Mahindra, Suzlon, Grease Cotton, and many, many other. He has been a board member to multiple organizations, including Muskan, Mission Chetna, and finally the Sarthak Educational Trust. Recently, he has been inducted as the National General Secretary on the National ABILYMPICS Association of India Board. Can I request the panelists to come? Dr. Rajiv Bhatia, he is a distinguished ENT surgeon, the gentleman who started with the early intervention for Sarthak. He has been a pillar and role model for the Sarthak. Mr. Sameer Nigam, an alumnus of IIT Kanpur, IIM Ahmedabad, CEO and founder of StratBeans Learning Solution. Incidentally, StratBeans has been our platform, has been the platform which has made Sarthak digitize entirely. The next panelist is Ms. Preeti Johar, CEO of Family of Disabled. Under her leadership, FOD has grown multifold. Her father was an inspirational figure known across the world for his philanthropy and hard work. Professor Suraj Singh Senjam, Professor of Community Ophthalmology, Dr. R.P. Center of Ophthalmic Sciences, AIIMS Delhi. Professor Senjam holds postgraduate degree from PGIMR, Chandigarh. He also has done masters from London School of Hygiene and Tropical Medicine. He immense great experience, and with him, he is creating brilliant social impact. Dr. Swan Latasa, Assistant Professor in the Department of Elementary Education at Miranda House, University of Delhi, with 16 years of experience in teaching. She has collaborated with multiple organizations including NCERT, SCERT, Delhi Diet, and other organizations. As a convener of Lakshita, the College Enabling Society, she has strengthened inclusive practices. Welcome, Dr. Swanlata. Mr. Anil Joshi, former Program Director, IBM, and former board member of National Trust, Government of India, founding member of Parivar, and a hugely known figure in the space of advocacy for inclusion, accessibility, and diversity. A warm welcome to all the panelists, and we would hope that your wisdom will enable Divyangjan, not only the ones who are sitting here, but people who are listening all across the globe. Over to you, Sunil ji. Hello, thank you, Siddharji. Thank you for the intro, and I welcome my esteemed panel today. Good afternoon, namaskar to everyone. Now, Sarthak has had this early intervention as a very important pillar in its services. We believe that early intervention is so important that every child should go through, and we try and catch issues or potential disability early and then try and correct it as much as, or help at least in recovery. So every year we discuss about it, and as we see the
technology is transforming. It has now become a kind of blessing that we also combine, see the intersection of this with technology, and see how we use AI-driven insights, tools, and inclusive education models to redefine and how we nurture potential from very start to make it better. So together we'll discuss and go through it. So in interest of time, I'll quickly start with Mr. Samir. So Samirji, you being a technology leader, can you throw some light or give insight into how AI-based analytics or knowledge can help scale up early intervention services to across geography or across country? Thank you, sir. Thank you for the opportunity. Now, you're saying scaling and AI and scaling are, so hand in hand. And let's first look at the level of challenge that we have. So there are more than 7,000 sub-districts that you have. There are more than 14 lakh Anganwadis there that are there. And definitely, if you look at the doctors ratio also, which is recommended, that is 1 to 1,000 in the population, but we don't have that. So that's the challenge we have. But given that AI is such a leveler, what it can do is I can sort of tell you in maybe 4 specific ideas that you could take. That the screening is very important in the early intervention. Now AI can do that job very, very well. And you can use just a simple device that you always carry with yourself anyways. Now with that, what you can do is if you are in a remote remote district, you have Angadwadi which is not even well trained and you don't have too much facilities, you can still execute that very well given the technologies that are there. So that's one. The other thing is that you can do digital early learning kits. Now the kits are used for just de-skilling the therapy, which essentially means that those things that you have to do to treat, they can be done by somebody who is just a facilitator like you and me. And of course, then it becomes even more interesting for children, because the care and empathy is also very important. So something like a gamified activity now can sort of take away the stress of therapy itself. So that's the second thing you would like to do. The third thing is that how can you scale up and do the resource focus? What I really mean by that is that the districts are many times having better facilities than what you have in sub-district areas. So if the detection happens correctly, then the escalation can also happen, which means that the critical cases can be brought to the district. So that's the third thing that AI is very capable of doing. And not only AI, there are so many other technologies which are also working side by side. But of course, AI is the center stage. We want to talk about it. The last piece in the puzzle is the very affected party, which is parents. They're really truly affected by this. AI can actually make their workload lighter, and also make sure that while they are juggling with their day-to-day stress, supporting a child with disability is not easy. They can be given specific nudges and material on their WhatsApp. They really don't need to invest too much. So with that, what AI can do is it will probably not create new ideas, but the same ideas can be taken to the teachers, to the Anganwadis, to the doctors, and to the parents. That's how the AI is going to help, sir. Thanks a lot again. Thank you, Samirji. It shows a great potential. And coming to you, Dr. Bhatia, we want to understand from you, you being a very eminent surgeon in ENT and working for early intervention for so many years, how can early screening for hearing and speech delays can be strengthened using tools, and what protocols you think healthcare and education system needs to follow so that no child is missed? I have prepared a small presentation for this. Can we start that?
Let me introduce myself. I am an ENT surgeon with a special interest in ear microsurgery and hearing disabilities. I have been practicing in Delhi for last 30 years or so, and I have been head of the department at Mata Chanan Devi Hospital, which was a 250 bedded hospital before I decided to semi-retire myself. So I'll talk about early intervention in hearing impaired children, especially newborns. Newborns are a very important sector of hearing disability because they are not able to complain about their problems. When they are born, most of the time we have a very small window to intervene, and in most cases I have seen that important window is missed, and by that time the child is brought to us. We are very sorry, we are not able to do anything to that child. So it is very, very important that everybody should understand that there's a very small window for us to intervene, and we can do a lot of things for that child during that window, and we should not be missing that window. Can you वहीं से कर दो, पॉइंट आउट वहीं से कर दो, मैं बता दूँ. नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाइए. So we have already discussed it, that there's a very small window of first 3 years of age group in which we must intervene. Beyond that, when we intervene, we don't get a very satisfactory result. Next slide, please. हो गया? नहीं, ये तो फर्स्ट पे चले गया. Working now? Thank you so much. And most of the time this opportunity is lost because of lack of awareness. Unfortunately, this awareness is lacking even among our medical fraternity. And again, the best results are before 3 years of age. Sorry. Now let's understand the extent of this problem. The hearing impairment incidence is seen to be in about 3 per 1,000 of newborn babies. And if a child is sent to ICU due to any reason, the kids who have been in the ICU, the incidence in them rises more than threefold to about 10 per 1,000. Sorry. Now we have to, again, I must emphasize that especially the kids who have been in the ICU are in a very high risk group, and they must be screened at the earliest opportunity available to us. Now, in spite of seeing such a high number of this hearing impaired kids, unfortunately the awareness is lacking. And if you search on Google about congenital anomalies and anomalies in newborn, you won't even find this disability listed among the newborn anomalies, and very commonly these are missed. They come to us by about 4 or 5 years of age, and by that time the golden window has already been passed. Now what does this lead to if we do not treat them? It leads to impaired speech or language development. If he does not hear, he does not develop any language. It leads to impaired intellectual and cognitive decline. The intellectual abilities are not developed to that extent because one of the major inputs to the brain is lacking. He is not hearing anything. And of course, there is impaired social reaction. The child cannot talk to his peers, cannot interact with his peers, and become social outcast, and which leads to the very sad labeling of deaf and dumb. Definitely, the child was born deaf, but he is dumb because of our failure. Our failure is the reason why he is being labeled dumb. It is not a fault of his own. Now let's understand the hearing mechanism of a human being. We all know that we hear from our ear, हम अपने कान से सुनते, but that's not the only organ that hear. Ear is just as kind of a microphone जो sound waves को
जो है convert करता है electrical wave में. Those electrical waves are carried onto the brain by the auditory nerve, सुनने की nerve से, which acts like a simple electrical wire literally. And then brain में there are certain special cells located on the side of which called as a temporal lobe auditory cortex, जहाँ पे those signals are analyzed and we are actually able to hear. If any part of this is not working properly, we will not be able to hear. Unfortunately, at the time of birth, only the ear is developed properly and rest of the parts are not developed properly. So, and for their proper development, it is very essential that signals pass through the nerve, reach the brain, and then the brain and the nerve itself develops slowly in the first year of age. If the signals do not pass, nerve does not develop, the neurons, the nerve cell, specialized nerve cell, which are sitting there to develop into the cells which will understand the speech, are assigned a different role by the brain. It's like you have a servant in your house for which he was hired. If he doesn't have that work, you always assign him to some other work instead of letting him sit idle. So these cells are also assigned to other work and develop into a different kind of asset. So after 3 years of age, even if you correct his ear, the impulses do not pass properly to the brain, and whatever little reaches the brain, there is nothing to understand what is reaching the brain, and the child is permanently deaf, cannot hear properly, cannot develop properly. As I said, majority of the two are dependent on each, and the hearing nerve does not develop. Already discussed this, and if the signals do not reach properly, those cells develop into something else, which is called as neural plasticity. No, we have discussed that. No. So now that we understand, it's very important to pick up the hearing loss very early. What can we do about it? There's something that we ENT surgeon and the child specialists always propagate, is called a UNHS, Universal Neonatal Hearing Screening Program, that every child who is born should be tested for hearing loss as soon as possible, and if possible before that being discharged from the hospital. That is what we call as UNHS program. It's a very simple test, a very small machine. You put the earphone into baby's ear, and within a few seconds it will give you a reading which comes as a pass or fail. Pass means things are all right, fail means it is suspected. So if you institute, unfortunately it's not a very costly machine, also costing a few lakh only, very simple test, but most of the places it's not started. Government में भी नहीं है, private में they much of money until unless मतलब and I have to start it in my hospital after explaining everything how beneficial it will be. The only point that could convince them was इसको लगाएंगे तो income बहुत बढ़ जाएगी. So yeah. So that is what immediately convinced them कि हाँ, we have a captive audience of all these babies are being born in our hospital, so before sending them out, हम उनका test करके और billing भी कर सकते हैं उनकी. So universal neonatal hearing screening should be there, what we call as a 1-3-6 strategy. Before the age of 1 month, a child should always, any newborn should be tested for hearing disability. If we get a doubtful report at the age of 3 months, he should be again tested. And if at the 3 months of age also he has got some problem, then the things should be escalated, and by 6 months there should be some intervention for that child. If he is hearing less, a hearing aid. If he is not hearing at all, cochlear implant should be implanted. Best results are before the 3 years of age. Between 3 to 6 years, get some results, something beneficial, and beyond that time, everything is lost. We can't do much about that child. So again, many a time we lose this opportunity because most of the time at home, घर में नानी साहब या बड़े लोग even पेन, अरे बच्चे थोड़ी देर बाद बोलते हैं, अपने आप ठीक हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाने दे, ये हो वो है, and by that time the child comes to us, things are lost completely. So our India is also running many programs, many beneficial. One of these is National Program for Prevention and Control of Deafness. Other is an ADIP scheme under which hearing disabled are provided financial aid to rehabilitate them. For cochlear implant also, government is providing up to 6 lakhs to each patient if the child fits into that their laid down criteria. So what is the take home lesson? That we should always be actively looking for
hearing impaired children. If anybody mentions कि बच्चा नहीं बोल रहा, 2 साल का हो गया, or anything, you get an idea. Always tell those people to get the child's hearing tested. It may be a problem with hearing, that is why he is not developing any speech. It may not be something wrong with his speaking organ, which is most of the time the case. And all those children who are diagnosed with having any hearing problem should always have some intervention by the age of 6 years or as early as possible before 3 years of age. And financial aid is available. Lots of NGOs and Government of India is working towards it. Even all the states have their programs to fund cochlear implant or hearing aid schemes, and people are helped a lot with this. I think I was able to tell something. Thank you, Doctor. It was very, very good kind of awareness for everyone, parents and society at large. We must be aware of this. Yes, please. Let me share to all of you. This in terms of spending money for investigation. So we know that that there are so many genetic disease, like in eye there's a retinitis pigmentosa, Stargardt disease, Rodson's-Cone dystrophy. There are so many genetic disease which cause irreversible blindness. अभी एम्स में क्या हो रहा है जो because as you said sir, so कोई भी पेशेंट ओपीडी में आता है तो उसके जो जेनेटिक टेस्ट के लिए है हम बाहर भेजना पड़ता है मुंबई में, और एम्स में ये फैसिलिटी नहीं है फॉर जेनेटिक्स बिकॉज द केस इज वेरी रेयर इन द सेंस दैट and that when we ask the administration why you want to spend money rather than spending here, तो why don't you buy a MRI machine, a CT scan machine. तो इस तरह से हम इशू है एम्स में भी, बट उसमें हम क्या करते हैं इसको सोल्यूशन समटाइम्स we take a projects, research project from the ICMR, from the DST. अगर वो जब तक प्रोजेक्ट है हम पेशेंट को हम हेल्प करते हैं जेनेटिक टेस्टिंग के लिए फ्रॉम द प्रोजेक्ट साइड. फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर का BRCA है. There's so many, आजकल तो genetic disease is so common in terms of, let's say IRD, inherited retinal disease, IRD. There's so many different types of IRD. It's so common. I mean, I would say it's common, quite common nowadays. So the government should have at least some plan that rather than taking project again and again, because writing a project is very difficult, very tough, So right now in AIMS and RP Center, so whenever a patient comes to our clinic, to my clinic, so we request for a genetic test. हमारा जेनेटिक लैब है तो हम भेजते हैं तो वहाँ करें ये टेस्ट यहाँ पे नहीं होता तो यू हैव टू सेंड टू मुंबई. तो पेशेंट मुंबई में भेजते हैं, सैंपल यहाँ से ले लेते हैं, मुंबई भेजते हैं. इट कोस्ट अराउंड आई डोंट नो दैट कितना खर्चा लग जाता है. तो ये अभी भी ये जो है अभी भी एम्स में तो कितना पैसा इतना ही क्यों करना है, हम ये MRI मशीन ले लेंगे. So there is a lack of awareness even in the medical world. So since it is with you, Doctor, I'll just continue with you on because you have been in the eye kind of in the vision. And so what are most effective early vision screening measures you think for children in kind of early intervention? Yeah, so it's very important, I would say, because children, they are the future of the country. So when you say children, so we need to categorize the school-going children and the school-age children. For school-going children, there's a structured program to screen, the visual impairments. So there's a, vision health school vision screening team, and the teachers should be involved in the first level screening using one cutoff, say 6/9 in our language we say 6/9 cutoff. So in school, I'm talking about a school. After that, coming back to the community based, the school age children. So in school, so under this program, so especially children 5 years and above. Okay, 5 years and above. उसमें क्या करते हैं जो फर्स्ट लेवल में चिल्ड्रन टीचर ट्रेन टीचर स्पेशली पर्टिकुलरली बाय द फीमेल विद स्पेक्टिकल्स वेयर, तो वो चिल्ड्रन को फर्स्ट लेवल में स्क्रीन कर लेगा using one cutoff, and then those patients, those children who are not able to see that particular cutoff, they will refer to the further evaluation. So in school, we do have a proper, effective, cost-effective way of screening of those children with the visual impairment. But now coming to what about those children who left out, we say school-age children who left out, who doesn't go to school. That is the challenge in our country. So how do we tackle this? So every one of us should think about, so it's very challenging for us to catch those children. So before, one more very important point in school.
I think most of you might have heard about this amblyopia. Amblyopia. जैसे हम at the early intervention नहीं करने के कारण से बच्चे स्क्वीन फॉर्म हो जाते हैं, वन आई डिविएशन, एंड धीरे धीरे वन आई डेड हो जाता है. अगर वो टाइम पे अगर आइडेंटिफाई नहीं कराया और इंटरवेंशन नहीं किया, and children, the child will be one eye percent, one eye will be totally lost, पूरा डेड हो जाएगा. जैसे होता है ना मसल एट्रोफी. हाँ, सो जैसे मसल एट्रोफी मीन्स अगर एक आई यूज नहीं करेगा तो धीरे धीरे डेड हो जाता है, एंड इवेंचुअली इट बिकम एट्रोफिक. So this amblyopic is nowadays, I would say, it's one of the most common cause of low vision among the children. उसमें क्या करते हैं, जो timely identification and management is so important. अगर वो नहीं कराया, then as I said, one eye percent. अगर other eye है, बाद में फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो then further problem will be arise to that children. So amblyopia का जो है as early as, अगर जितना early identification हो जाए at the age of 2.5, 3 years, it's very, इसका जो treatment का जो outcome है, I would say it's 99.9% good, because my son has an amblyopia. So we identify he has an amblyopia at the age of 2.5 years. Then उसके बाद 1 year occlusion therapy किया, पूरा attach, पूरा one eye को close किया जो normal eye है, and we allow him to use the weak eye so that the muscles develop forcefully. So it's very challenging for intervention, So we download so many computer game, action game, and then slowly used to, and then now his vision is totally fine, both eyes. So amblyopia, before 9 years of age, अगर 9 साल से बाद में अगर आइडेंटिफाई करने लगे हैं तो it's very difficult to manage the amblyopia child. तो एक तो ये हो गया. स्कूल में बहुत जरूरी है ये आइडेंटिफाई करना. किसी को अगर कोई ये जैसे वीक आईज ना, वो पता चल जाते हैं, वन आई टेस्ट करना होता है चिल्ड्रन. हाँ, एंड अनदर थिंग इज स्कूल में चिल्ड्रन विल नेवर कंप्लेन. ओके, चिल्ड्रन विल नेवर कंप्लेन मेरे को पोर विजन हो रही है, मेरे को आई वीक नहीं. सो द पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड नो सम सिम्टम्स दैट चिल्ड्रन माइट हैव अ विजन इम्पेयरमेंट. What are those symptoms? For example, frequent rubbing of the eyes. Okay, परफॉर्मेंस डिक्रीजिंग, परफॉर्मेंस अच्छा था, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है चिल्ड्रन का ओवर टाइम. हाँ, एंड जो ब्लैक बोर्ड के साथ बैठने की कोशिश करेंगे हमेशा. अनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग, साइलेंस ऐसे से ब्लिंकिंग करेगा, एंड रविंग. हाँ, स्पेशली जो कई बार पेरेंट्स क्या होता है, चिल्ड्रन का जो परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाता है, दैट विजन इम्पेयरमेंट, पोर विजन इज वन फैक्टर. लेट मी टेल यू, बिकॉज चिल्ड्रन नेवर कंप्लेन दे हैव अ विजन, पोर विजन. स्कूल में ये सब अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है. तो टीचर्स कैन आइडेंटिफाई, एंड नाउ इट इज सो मेनी AI वेज, AI पावर एप्स आगे है. बिकॉज वन कोरियन कंपनी केम टू मीट मी एंड दे हैव डेवलप सम AI वेज, AI पावर एप्स. हाँ, तो सिंपल एप्स बनाए उन्होंने, एंड एप्स में सिंपल स्क्रीन आइज में रख के द मोबाइल ऐप विल टेल यू द चाइल्ड हैज अ विजुअल इम्पेयरमेंट. Okay, with the power also. Of course, there is some kind of objective assessment. For the further evaluation is very essential. So AI powers apps nowadays coming up for a screening, and Pick Vision, Pick app. Again for a screening, this app. So it's very, AI. That previous session people talk about AI. So this is for school going children. So school age children, abhi tak we are facing a lot of challenge how to catch those children who are not going to school. Then we organize camp, and government India has planned something like integrated eye care, primary eye care center. उसमें क्या है, जो ASA, I think many of you might have heard of ASA worker. So ASA should be trained, because ASA are the grassroots level health workers. So they should be trained how to identify a vision impairment, including all range of individuals, starting from the childhood. Okay, so especially the 5 years and the above. And what happened to the 3 to 5 years? Okay, 3 to 5 years, again, this is really critical. And another, because 3 to 5 years screening karna is very challenging. We need a technical person for this. There are so many techniques. So by the simple TORS examination also, by trained person, they can identify alignment. So there are some simple chart also available, like for the most cost-effective screening for the early child, 3 to 5 years. उसमें क्या है, the simple chart, suppose for example, we say the Lee symbol chart. Lee symbol chart is, let me give one example. मेरे पास पेन है यहाँ पे, और सामने 6 मीटर डिस्टेंस में वो पेन दिखेगा, और बच्चे को बोलेगा यहाँ सामने क्या दिख रहा है, यहाँ से उठाने के लिए बोलूँगा, पेन से उठाएंगे ऐसे करके. एंड दूसरा है एप्पल का, बनाना का कुछ सिंबल दिखाएंगे, एंड बच्चे के पास यहाँ पे रखेंगे, वो सामने क्या दिख रहा है, यहाँ से उठाइए. तो that kind of chart we use, but in the school, not in school. School में क्या करते हैं, 5 साल के above screen करते हैं. जो 3 to 5 years is mostly in the hospital base.
community के लिए, let me tell you, those drop out, still we are facing challenges. And of course, the government of India is trying to involve ASA. So we are currently with the Haryana governments, I'm doing some kind of pilot projects, how ASA should be involved in terms of screening for vision impairments. Thank you, Doctor. It shows that there are various levels of checks, right from training ASHA workers, then at school, and this is very vital for preventing any eyesight issues or protecting it. Thank you, Doctor. And now coming to our another eminent panelist, Miss Preeti Johar. So, Preeti ji, what barriers do you think low-income families face in accessing these early diagnoses? And how can community services or AI help to bridge these gaps? जैसा कि हम देख रहे हैं कि अर्ली इंटरवेंशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बच्चे के भविष्य के लिए, बट जैसे कि डॉक्टर सूरज ने भी अभी कहा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल के बाहर हैं और उनकी सोशो इकोनॉमिक पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है कि पेरेंट्स भी उसके बारे में सोचेंगे, और जिनका लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी नहीं होता। सबसे पहली बात तो लिमिटेड अवेयरनेस ही होती है। बच्चे या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा होते हैं या ज़्यादातर वो घर में पैदा होते हैं, पास के हेल्थ केयर सेंटर में वो जाके कभी कभी मिल लेते हैं, नहीं मिलते हैं तो बच्चे घर में पैदा हो जाते हैं। अब इसमें या तो पेरेंट्स को वो रिकग्नाइज ही नहीं करते कि कोई भी अगर डिलेड माइलस्टोन है भी, कोई अर्ली साइन आ भी रहा है, उनके पास ना इन्फॉर्मेशन होती है ना कभी अवेयरनेस होती है। और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि दादी नानी पड़ोसन बोल देगी कि नहीं ऐसा ही होता है, थोड़े टाइम बाद सब ठीक हो जाएगा, वो भी कहेंगे हाँ सब ठीक हो जाएगा और फिर वो चल पड़ेंगे उसी के साथ। कई बार ये भी होता है कि हाँ मुझे दिख तो रहा है बट हम डिनायल मोड में ही रहेंगे कि मेरा बच्चा तो ऐसा हो ही नहीं सकता, उसको हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। बट कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको समझ में आता है कि हाँ इस मेरे बच्चे में बाकी बच्चे के कंपैरिजन में कुछ अलग है, मगर उस अलग के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, उनके पास क्या वो एक्सेस है, क्या हमारी सरकार उन तक पहुँच रही है, क्या उनके लिए अगर वो सर्विस है उनको ये पता चल भी गया तो क्या वो सर्विस उनके लिए अफोर्डेबल है, क्या वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उनको वो इनेबल कर रहा है, क्या थेरेपिस्ट उनके लिए, एजुकेशन उनके लिए अफोर्डेबल है। ज़्यादातर अगर ये जो हम बात कर रहे हैं, हम एम्स की भी बात कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, ज़्यादातर जो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं भी ये अर्बन एरियाज़ में हैं, ज़्यादातर जागरूकता भी अर्बन एरियाज़ में है, उसमें भी जो पढ़े लिखे फैमिलीज़ हैं उन तक ज़्यादातर सीमित है। और सेमी अर्बन एरियाज़ में, रूरल कम्युनिटीज़ में जहाँ डिसेबल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ तक कितनी जागरूकता है, वहाँ पर कितनी सुविधाएं हैं, वो हमें देखना और सोचना पड़ेगा। और अगर वो पहुँचाते भी हैं, ज़्यादातर हमने देखा है मिडिल क्लास फैमिलीज़ में वन ऑफ द पेरेंट टेक द रोल ऑफ द केयर गिवर, वो बच्चे के साथ पूरी तरीके से जुट जाते हैं उसका भविष्य को सुधारने के लिए। हम लोग ऐसे पेरेंट को भी जानते हैं, एक बच्चा है अभी तो ये फिजिकली डिसेबल्ड है, व्हीलचेयर यूज़र है, DTU में कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी है, तो उसके गांव से नाना आए हुए हैं, वो धोती पहन के उसको क्लास टू क्लास लेकर जाते हैं। बट कितने ही पेरेंट्स को ये पता है कि उसके फादर चाउमीन का ठेला लगाते हैं, उस कितने पेरेंट्स को पता है कि ये मेरे बच्चे के लिए लाइफ चेंजिंग वेपन है एजुकेशन और मुझको वो देनी चाहिए अपने बच्चे को। शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स भी हैं हमारे देश में, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, बट ये सब गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में कितने हैं? लो इनकम ग्रुप इन तक पहुंच पाता है? अगर हम स्कूल की बात करें, मेरे पास 2 ऐसे बच्चे का एग्जाम्पल है, क्योंकि हम लोग एजुकेशन में पूरी तरीके से नहीं, हम स्पॉन्सर करते हैं और सब शिक्षा अभियान वालों के साथ काम करते हैं। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ड्रॉप आउट्स होते हैं। और अगर एक मेरे पास हियरिंग इम्पेयर्ड कैंडिडेट आया है, वो 11th क्लास में पढ़ता है, उसकी मैं कॉपी देख रही हूँ,
उसको पूरा का पूरा क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ बायोलॉजी उसने पूरे उतारे हुए हैं, बट अगर मैं उससे अलग से पेपर में लिखकर पूछ रही हूँ व्हाट इज़ योर नेम, तो नेम से पढ़ के आंसर कर दिया। मैंने अगर क्वेश्चन पूछा व्हाट डज योर फादर डू, उसको समझ में नहीं आया। तो जो जैसा कि आराधना मैम ने कहा कि अगर एक HI है तो आपको उसकी भाषा में आप उसको मीडियम में पढ़ाओगे, अगर एक विजुअली इम्पेयर्ड है आप उसको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या जिस भी चीज़ की मदद से पढ़ाना है पढ़ाओगे, अगर न्यूरो डाइवर्स है आप उसको उसके मीडियम से पढ़ाओगे। जो अर्ली इंटरवेंशन होगा एजुकेशन के स्फीयर में या इवन जो लाइवलीहुड स्किल्स हैं उनके स्फीयर में, वो उन्हीं की भाषा में होगा। तो अगर आप बच्चे को खाना पूर्ति के लिए वो पहुंच भी गया है स्कूल में या फैसिलिटी में, उसको खाली पढ़ाते जा रहे हैं, पढ़ाते नहीं जा रहे, उसको अलग अलग क्लास में प्रमोट करके निकाला जा रहा है सिस्टम में, मगर उसको वो सीख नहीं रहा है। द चाइल्ड इज़ नॉट लर्निंग वेल। जो स्पेशल स्कूल्स हैं NGO रन या गवर्नमेंट फंडेड, वो या तो ओवर स्ट्रेच्ड हैं या अंडर स्टाफ्ड हैं। जो प्राइवेट स्कूल हैं वो अनअफोर्डेबल हैं। अब उसके बाद जो पेरेंट्स के पास चॉइस होती है कि या तो वो डेली वेज हैं, वो अपना लाइवलीहुड चुने या अपने बच्चे की एजुकेशन चुने, उसमें से क्या करेंगे वो उनका एक ही ऑप्शन है उनके पास। और जैसा मैंने बताया कि अगर बच्चा स्कूल जा रहा है और कुछ सीख नहीं रहा है, पेरेंट को कुछ उसमें दिख नहीं रहा है, तो कह रहे हैं हमारा बच्चा जाता तो था, कुछ सीखा तो है नहीं, कुछ अंतर तो आया नहीं, तो भेजने का फ़ायदा क्या, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो घर पे बैठेगा। हम दूसरे बच्चे पे इतना फोकस करेंगे जो डिसेबल्ड नहीं है, उसको छोड़ देंगे। अर्ली स्क्रीनिंग और AI के टेक्नोलॉजी को मैंने भी अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा उसमें देखा है और मैं बहुत प्रभावित भी हूँ उससे। कॉग्निटी और साइंस हेतु इंग्लिश लिटरेसी के लिए फॉर HI, और हर हाउस होल्ड में मोबाइल फ़ोन भी है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बात है। बट अगेन घूम फिर के जो पॉइंट पे मैं आऊँगी कि उस चीज़ के लिए अवेयरनेस कितनी है। अभी जैसे कि बोला कि एक नज होना चाहिए, तो मुझे ये लगता है कि कहीं डेटा कलेक्ट होना शुरू हो जाना चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन का, वेयर उनको बच्चे की एज के हिसाब से उनको कुछ अवेयरनेस के वीडियोस जाने शुरू हो जाएं और वो AI बेस्ड ऐप के साथ उनको अर्ली इंटरवेंशन हम स्टार्ट कर सकें। एटलीस्ट मैं AI कभी भी जो ट्रेंड प्रोफेशनल है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, बट एक सपोर्ट सिस्टम की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जब तक कि उस AI को हम उसमें ऐसे टूल्स नहीं बना लेते जिससे बच्चा सीख भी रहा है। एटलीस्ट वो स्क्रीनिंग का काम तो बहुत ही अच्छे से कर पाएगा। एक और चीज़ जो है कि अगर हम आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेन करते हैं इन AI बेस्ड टूल्स के ही द्वारा स्क्रीन करने के लिए, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं अर्ली इंटरवेंशन में, स्क्रीनिंग में भी बच्चों के, और अकॉर्डिंगली वो स्कूल्स भी रेफ़र कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भी रेफ़र कर सकते हैं, जहां ऑफ कोर्स वो सर्विसेज, वो सुविधाएं BPL के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। धन्यवाद प्रीति जी, आपने इसमें एक बहुत अच्छा नज़रिया बताया कि कैसे इकोनॉमिकली लो इनकम ग्रुप पे हम अर्ली इंटरवेंशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अवेयरनेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है, पेरेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी। सो टीचिंग और एजुकेशन साइड पे हमारे साथ प्रोफेसर साहा हैं। सो मैडम, आपसे मेरा ये सवाल है कि so the question is what kind of simple or low cost or economical practices can make foundational classroom inclusive from day one, and what training changes strengthen teacher confidence for inclusive education? Because you have been working on elementary education and inclusive education, because from the foundational year, if we can make it inclusive, perhaps that is the way we can strengthen childhood in terms of its quality education. Thank you, sir. So yeah, you have rightly said that early intervention is very important, and not only in terms of diagnosis, but also in terms of
using right pedagogy in the classrooms. हम देख रहे हैं कि काफ़ी डेटा हमें बता रहा है कि children are born with various physical and developmental difficulties, और हम ये नहीं कह सकते कि ये जो बच्चे किन्हीं भी डिफ़िकल्टीज़ के साथ पैदा हो रहे हैं वो स्कूल नहीं जाएंगे या उनको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है। तो जब डेटा हमको ये दिखा रहा है कि एक बहुत बड़ा जो नंबर है बच्चों का, और मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो अभी स्कूल में एनरोल हुए हैं, जैसा प्रीति जी कह रही हैं कि बहुत बच्चे तो स्कूल के बाहर भी रह जा रहे हैं, बट क्योंकि मेरा फोकस अभी थोड़ा क्लासरूम पर है तो मैं उन बच्चों की बात करूँगी जो स्कूल पहुँच जाते हैं। लेकिन स्कूल पहुँचने के बाद उनको स्कूल क्या रोक पा रहा है, इस पर हमें सोचने की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज ऑन पेपर वी कैन शो दैट ओके दिस मच ऑफ एनरोलमेंट हैज़ हैपेंड, बट हाउ much retention has been going on, that is a matter of concern. Because if children are not staying in the school just because of bleak, poor pedagogy, then that should be a concern for all the people who are concerned with their education. अब हम जब पेडागोजी की बात करते हैं तो इंक्लूसिवनेस की जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और इस फोरम के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर पेडागोजी को हम इंक्लूसिव पर्सपेक्टिव से देखें तो ये ना सिर्फ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा बट सारे ही बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि हर बच्चा क्लास में चाहता है कि उसकी भागीदारी रहे, उसका पार्टिसिपेशन रहे, उसकी बात को सुना जाए, जो बच्चा कन्वे करना चाह रहा है टीचर को वो टीचर उसकी वॉइस को रेस्पेक्ट करे, समझे। तो इन सभी पैरामीटर्स पे हम देखते हैं दैट इंक्लूसिव एजुकेशन बिकम्स इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर PWBDs बट फॉर ऑल द चिल्ड्रन हु आर सिटिंग इन द क्लासरूम, बिकॉज वी मस्ट हैव टू एक्सेप्ट दिस दैट आवर क्लासरूम्स, especially the Indian classrooms, are heterogeneous in nature. When it comes to private schools, we have seen that children are coming from diverse background, not only in government schools. So we can see that in government schools there is one setup of like children are coming from a particular strata of society, but in private schools if we see, we have diverse socio-economic background where children are coming from. So keeping that thing in mind, that becomes very important, because inclusive education means that a quality education to all. Now there are 2-3 things which we need to understand. जैसे मुझसे सवाल पूछा गया कि क्या सिंपल तरीके हो सकते हैं, बट मेरा सवाल यही है कि हम सिंपल ही क्यों सोच रहे हैं। यानी कि हम अगर ये सोचते हैं कि पेडागोजी ऐसी हो, अगर हम PWBD बच्चों के लिए कह रहे हैं कि सिंपल हो, तो यानी कि हमने पहले ही मान लिया कि वो चैलेंजिंग टास्क कर ही नहीं सकते। सो दैट इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट in the name of simplicity we should not dilute the academic rigor, we should not dilute the curriculum, we should not dilute the syllabus, and we should not undermine their intellect also. So these are some of the things which every educator needs to understand. अब हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन की जो बात हो रही है, येस वेरी इंपॉर्टेंट, द इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव पर्सपेक्टिव नीड टू बी इंटीग्रेटेड, एंड फॉर दैट देर आर वेरियस लेवल्स एट विच वी नीड टू इंटीग्रेट. फॉर एग्जाम्पल वन थिंग इज करिकुलम एडेप्टेशन. हम किस तरीके के करिकुलम की बात करें. अगर मेरे पास एक हेयर इम्पेयरमेंट का बच्चा है मेरी क्लास में, अगर मेरी क्लास में एक बच्चा है जो कि देखने में उसको दिक्कत है या वो समझ ही नहीं पा रहा है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, उसको लग रहा है कि बस यही दिखाई देता है, यही लर्निंग है, तो ये भी है. जैसा डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं कि बच्चों को समझ ही नहीं आता कि दे आर गोइंग थ्रू सम चैलेंज, सो वो भी किस तरीके से पेडागोजी से कनेक्ट करेगा, इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है. तो करिकुलम एडेप्टेशन में हम मल्टीपल तरीके रखें, जैसे कि हम इंटरैक्शन भी करें, हम सब कुछ पेन और पेपर पे ना छोड़ दें, क्योंकि यहीं पर एक्सक्लूजन होना शुरू हो जाता है. जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है कि मुझे तो दिखाई देना कम हो रहा है धीरे धीरे, तो वो शायद एक्सप्रेस भी नहीं
नहीं कर पाएगा और वो धीरे धीरे उस क्लासरूम से एक्सक्लूड होना शुरू हो जाएगा। तो हम ये बहुत ज़रूरी है, जो करिकुलम ट्रांजैक्शन के तरीके हैं वो सिर्फ पेन पेपर तक सीमित ना रहें। देयर शुड बी मल्टीपल वेज ऑफ ट्रांजैक्टिंग द सेम कॉन्सेप्ट, मे बी थ्रू वीडियोज, ऑडियोज, interactions, some hands-on experiences, some like sensory tools can be used, maps, diagrams, everything. So because what is happening in our classrooms, and there is a reason also, our classrooms have now become very populated in terms of numbers of the students. So if you see the teacher pupil ratio, even in the best of the private schools, you will not find a classroom less than 40 or 45 students with one teacher. So that is another systemic challenge which we need to address. But having said this, that if a teacher is empowered, if a teacher is well educated, and I am using this word particularly educated, not the training, because training limits to only giving the prescription, ye kar lo, ye ho jayega, ye kar lo. But an educated teacher would understand the situation and then would try to address that issue from his or her own theoretical understanding, which that person may have gained during the training program or during the teacher education program. So there the role of teacher education program also becomes very important. So a teacher needs to be educated, empowered, having the tools to address the classroom situations and work on the pedagogy so that needful can be done. Then the infrastructure and accessibility. Schools, because these are the founding years, and one of the reasons of dropout is less accessible schools. Schools having no, with full of barriers. कहीं पर एक लाइन में गमले रखे हैं, रैंप, अगर कोई व्हीलचेयर यूज़र है तो उसके लिए रैंप नहीं है, अगर किसी का लो विजन है तो अगर आप ज़्यादातर सरकारी स्कूल्स में जाके देखें, यू विल फाइंड अ darkness in the classrooms. Why I am saying this? Because I myself as a teacher educator goes to different government schools because my students do internship over there, and half of the time I find that whatever resources, whatever teaching learning materials they are showing to the children, let alone the child with any visual impairment, even the sighted children cannot visualize what the teacher is showing to them. So that is the reality of our classrooms. So we must work on the infrastructure. A lighted, ventilated classrooms is the requirement not only for PWD children but for all the children. And if, as I am saying, over the year I have realized this thing कि हम सभी जो हैं वो temporarily abled लोग हैं, हमें कभी भी उन्हीं डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ सकती है जिसको आज हम इस फोरम पे कह रहे हैं कि वो सिर्फ PWBD के लिए है. कल को anything can happen and I may need a very lighted room to make myself functional, or a ramp to make myself mobile. So that perspective, that society, classrooms, क्योंकि वहाँ पर एक फाउंडेशन रखी जा रही है, तो वहाँ पर इंक्लूसिवनेस का होना बहुत ज़रूरी है. एंड इंक्लूसिविटी कम्स विद good access, a barrier free environment in the schools. आधे बच्चे तो डर के ही भाग जाएंगे. And I must share my own example because Sarthak, I am representing Miranda House here, and few days back I came with my students to Sarthak center in Gurgaon, and we had that dark room visit. And sir, I must tell you, I could not walk even 2 steps in that dark room. I started feeling claustrophobic, and I asked my instructor, who was the visually impaired person, to help me to come out of that room. And that day I realized कि हम सिर्फ अपनी आँखों से नहीं देखते हैं, हम अपनी मुझे लगा कि शायद मैं अपनी सांसों से भी देखती हूँ, क्योंकि मैं रह ही नहीं पाई उसमें. आई स्टार्टेड फीलिंग ब्रेथलेसनेस एंड क्लॉस्ट्रोफोबिक. आई डोंट नो व्हाई, बट दैट डे आई रियलाइज्ड कि
हम किसी भी चीज़ को देखने के लिए आंखों के साथ साथ अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करते हैं. तो अ डार्क रूम, अ नॉन वेंटिलेटेड एरिया कैन स्केयर एनी चाइल्ड, and that can be one of the reasons for him to just leave the school. So on that we need to work. Then so the accessibility is one thing, because an accessible school can retain children. This is one of the facts. Then in a school we need to have a good number of special educators, counselors, therapists, and along with this it is also important to sensitize the entire non-teaching staff of the school, because they are the ones who are dealing with the children outside the classroom, and if they are not sensitive and empathetic enough to those children, then that can also lead them to instill fear in the children, and that they may not be able to focus in their learning and studies. Besides that, multi-modal teaching resources, for example, sensory, visual, auditory, and kinesthetic teaching resources must be in the schools. Children in any case love to work in group. This is my experience. So whenever my interns make their class children to work in a group, they enjoy most, and this is equally and more applicable to all PWD students or children having any kind of difficulty. So that is something that we should encourage: group work, peer support, buddy system. It will promote non-discriminatory and respectful environment in the school. So the respect is something, not the sympathy, but the empathy and respect is something which is required utmost in the classroom, and especially in the founding years. They should feel respected, they should feel being heard, not the ki daya bhav ki acha theek hai tumko ye nahi hai tum idhar mere paas baith jao. We have to create enabling environment in the classrooms, and that is the key factor of any empowering pedagogy. Then the teachers capacity building, क्योंकि ये सब तो हो ही नहीं सकता अगर टीचर का हमने capacity building नहीं किया. And it is, we all have observed and seen that it is very easy to blame the teacher. क्लास में कुछ भी गलत हो रहा है, टीचर की गलती है. But we never think that whether that particular teacher is enabled enough or has those capacities and knowledge to address those issues, because till now in most of our teacher training program, teacher training, it is not teacher education. So there is a difference. When we focus more on training, we just give certain prescriptions ki aise kar lena and you will be sorted. But in a classroom, an educated teacher is required. A teacher, somebody who is empathetic, somebody who is educated, knows theories, the cutting edge research in the particular field, because that only empowers the teacher to take right decision wise तरीके से. तो इक्वालिटी के नाम पे हम क्या करते हैं कि सब बच्चों को हमने बराबर कर लिया. ये नहीं, बराबरी मानिए, लेकिन इक्विटी का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी बच्चे की एक स्पेसिफिक नीड है तो आप उसके लिए क्या आपका थियरी, आपका एजुकेशन कहता है कि आप क्या कर सकते हैं. सो दैट इज समथिंग, द इशू ऑफ रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है टीचर के लिए समझना. मेल्टिंग पॉट थियरी में ना बिलीव करके एसिमिलेशन कैसे होगा क्लास में, इस पर टीचर की समझ का होना बहुत ज़रूरी है. एंड देन one more thing I would like to emphasize, nowadays I have seen that it has become very common to label the children. कोई भी बच्चे को अगर थोड़ा सा भी वो बच्चा उठ के इधर से उधर भागना शुरू करता है, it's very easy to say इसको तो ADHD है या इसको और कोई ऐसा cognitive disorder है. We need to educate our teachers not to use labeling, such labelings without proper diagnosis. And I have seen in best of the schools that they have some centers where अगर बच्चा वो थोड़ा सा भी focus उसका इधर उधर होता है तो okay, you are not able to sit in the class, you go to that center and you will be studying there. So this is also something which is a very discouraging factor for any child, for any age group. So labeling, how to identify, identification is very important. And yes, teachers are not doctors, but they should have some level
level of understanding, where they should understand that early labeling may discourage children to participate in the classroom. So these are my some of the comments. Thank you. Thank you, Professor Saab. It was very enlightening. And now coming to our another eminent panelist, Joshi Saab. So Joshi Saab, Mr. Anil Joshi is not only a technology leader but also a parent. So Joshi Saab, your views on tech platform and early intervention. Yeah, thank you, and I'm happy to be here on the Sarthak platform year after year. As a professional, as a parent, and I really congratulate Sarthak for being consistent in this effort of bringing to the table various issues that, if I may say so, unfortunately remain the same year after year. My daughter is 32 years old, and in 1995-96, PWD Act was passed, and we were so thrilled because she was just about preparing to go to school and getting included. I possibly heard the same thing. We don't have teachers, we don't have professionals, we don't have people who understand. And now, nearly 30 years later or 25 years later, the issues remain the same. Now, as an IT professional, I was really lucky, or I consider myself fortunate, to be chosen to set up a center of excellence for accessibility technologies, which are the first of its kind center happening anywhere in India some 18 years ago. And happy to share that most of those technologies are being used by you and me in our mobiles, in most of the online services, the digital platforms which you use. Another thing I'm sure most of you will agree, that these days, when a child is not stopping the cry, what do the young mothers do? Maybe to a 1 year or 2 year old son or daughter, they just put up a mobile in front of him or her, and the child really engages himself. Why do you think this has happened? This has happened because the IT companies over the years have been conscious of the fact that there are different disability types, or there are different ability types: physical, sensory, and something that is related to intellect and brain related things. And I want this August House to keep it in mind, that while the challenges for all the different categories are different, challenges become multifold for those who have neurodevelopmental challenges. And because the IT companies were aware, everywhere the research happened in such a way that if we see, industries are going to be business driven. So they wanted to increase the user base. And for a diverse country like India or all the developing countries, if they want to have the users, more and more users, they will need to reduce the cognitive load of all the technologies, all the software that can run around those technologies. And today we know how fast our country has increased the penetration. You go to the rural areas and you have the smartphones. There is possibly no village in India which is untouched by the technology. They may have sporadic access, they may have issues of connectivity and all that, but there is not a single village in India where mobiles have not reached. What I'm trying to say is, so came the issue of evolving the complete ecosystem around what do the families face. As we have learned from various panelists, sir, do I have 5 minutes or whatever time? Just about 5 minutes, okay. The families are handed over the diagnosis about the newborn, whatever. I mean, the child is not able to hear or see or has some developmental issues. And in certain cases, there may be clinical intervention possible. In other cases, it may not be possible. Or even if it is possible, it may not be available or it may not be affordable. As a result,
my finding as a parent leader also, because we established a national parents network across India to reach out. And why was this possible? Because of the digital platforms, which were not available when my daughter was born. But later on, as it evolved, and since I was in IT sector for nearly 4 decades now, I had early access to that. I had early understanding of that. So which helped me in two ways: in developing my daughter in a different way, not really listening to the professional, sorry, with all due regards. Because the idea was to challenge. Ultimately, each moment in my daughter's life was important. And how best I can help her, because I had the computer programming systems background and all that. And a lot of research was happening in understanding human brain so that we can incorporate those abilities in the computers or the future machines. So that helped in that way, as also in early adaptation as to how these technologies can be used to reach out what you have done and what is happening across country, whether it is a policy related issue or various NGOs and CSOs working on new ideas, so that ultimately every child benefits. The information reaches the parents. What I had studied in those days was there are huge information gaps. After the doctor hands over the diagnosis, parents are in lurch. They don't know where to go. Who all are the experts? Parent may not even have known about Bera test, sir. And forget about cochlear implant and all those in those days. Now, how does this information about all the disabilities reach out to the new parents, help them accept by making them understand the possibilities in different domains, whether it is different therapies or possibilities of accepting the child as he or she is, and understanding as to from whom they can learn. So I had suggested a concept of please hand over the first information kit to the families. And Preeti, you may remember in National Trust also had proposed that. So let there be a first information kit which will assure the parents that yes, things are possible. Here are the examples of role models across different disability spectrum. And then every parent wants to do his best for the child. So the child really develops into whatever fullest potential he or she has. So this was gradually being possible because of all the social media apps, all the digital platforms which are now enabling, and thanks to AI, which is now making it more refined. There are also portals which allow the different parents, senior, juniors, to put up their feedback, just as we have the reviews about the services availability and whether it is really affordable, whether it should be done or not done, or it can be skipped also, depending upon your affordability levels. So a lot of changes have happened, and it has definitely, over the period of years, thanks to the technology, which really continues to keep it in mind, the needs of all abilities, whether it's old age, pregnant women, different disabling conditions, or even situational disabilities. So we do have enabling platforms. We do have so many startups coming up with brilliant ideas to make an impact on total quality of life and ensure that everyone progresses. We have heard that total number of employees or children getting into school system are in fractions. But then we are hoping that this number really gets to the level where it should be by way of the statistics. I'll stop here for now, and we can come to a few questions if there are there later. Thank you, sir. Yeah, thank you, Joshi ji. Actually, I wanted to have one more round, but in interest of time, we have to conclude here. And before we conclude, I invite one or two questions if there are any. Yeah, please give him mic. Yes, please go ahead.
Hello, my name is Mohammad Muzammil, and nowadays I'm working as a special educator in Himachal, NAB, Kullu. And actually, I joined late of ma'am was demonstration and saying some things regarding the teaching modality. So, मेरे पास एक student है, he's a totally blind, and his age is 5+, and now he is 6+. और उसके साथ ऐसा है कि उसको अभी वो बता नहीं पाता है कि मतलब जैसे वॉशरूम में जाना है, तो वो उसको हमने काफ़ी ट्रेनिंग दी, हमने जो भी हम पॉसिबिलिटीज़ है हमने वो फॉलो सब किया है, लेकिन वो स्टिल वो अपने मतलब पैंट में ही कर लेता है, तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं जवाब देता हूँ उसका। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, उस बच्चे का जो एज है 6+, हाँ 6+ एंड टोटल ब्लाइंड। जी टोटली ब्लाइंड है। और एक्चुअली मैंने अभी मेरे को 1 साल हुआ है एज ए स्पेशल एजुकेटर वहाँ, तो बस और हाँ रिगार्डिंग जो लर्निंग है ना, अब हम उनको अभी हमारा जो नैब है, हम अब क्या कर रहे हैं, जो स्क्राइब है ना, स्क्राइब जो बच्चे लिखते हैं, मतलब बच्चे बताते हैं, एक जो होते हैं स्क्राइब जो पेपर लिखते हैं उनका, अभी हमने वो इरेडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे पास जो 5th क्लास तक जो बच्चे हैं, तो उनको हमने डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड किया है, वो अपना पेपर खुद लिख लेते हैं। अभी इसके साथ ऐसा इशू है कि ये नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन समझ गया आपका। जो बच्चे हैं वो आपकी इसमें काम करते हैं, वो वॉशरूम जो भी आपका जो डे टू डे यूटिलिटी वो है एक्सेस करने में जितने मर्जी ट्रेनिंग दे दे वो हो नहीं पा रहे हैं। जी। अच्छा, तो कुछ बच्चे इजीली पिकअप हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कुछ बच्चे इजीली पिकअप नहीं हो रही है, तो इसके लिए एक बच्चे की IQ वगैरह आपने एक बार सोचा है? जैसे कोई पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, समटाइम्स ब्लाइंड के साथ साथ अदर associated I would say that mental maybe mild mental retardations. तो मिशन में आपको एक बिकॉज ये ज़रूरी है, आपको जो एक बार IQ असेसमेंट करने के बाद उस लेवल के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। हाँ, तो एक जो मेरा जो माई सिंसियर एडवाइस इस एक बार जो है पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी शिमला में जो IGI जो भी है वहाँ पे जाके एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी से एक बार वो एसोसिएटेड अदर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एक बार एसेस करना चाहिए। या चाहे लर्निंग डिसेबिलिटी हमारे एम्स में है, अगर एम्स में आपको तो डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ एसेसिंग अदर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। ओके, कुछ ब्लाइंड तो यूजुअली जो 6+ है तो इजीली बाथरूम एक्सेस करने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो इफ़ यू नीड एनी हेल्प देन आई कैन गाइड यू। वहाँ पे पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी में एंड लर्निंग डिसेबिलिटी क्लिनिक है, तो उस एंगल में क्या चीज़ है, क्या है वो, टू सी दैट ऑल्सो। द सेम टाइम आपको जो ट्रेनिंग दे रही है टू एक्सेस द डिफरेंट रूम्स एंड डिफरेंट लाइक अदर एसिस्टिव डिवाइस, उसको यूज़ करके हाँ तो किस तरह से उसको फैसिलिटेट किया जाए, तो दैट कैन बी डन। और एक बात, ये भी हियरिंग का भी आप चेक कर लीजिए। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये बच्चा सुन भी ना सकता हो, तो देयर कैन बी अ कंडीशन कॉल्ड एज डेफ ब्लाइंडनेस। सुन लेते लेकिन उसका वो नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैं बोलूँगा उसका नाम ओजस है, हाँ। तो मैं ओजस को बुलाता हूँ, ओजस खड़े हो जाओ, तो सुन लेता है वो, मतलब नहीं, तो जैसे सर ने कहा कि उनका जो ओवरऑल न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट भी कर लीजिए। ये कहाँ पर करना पड़ेगा? एम्स जो सर ने बताया ना, एम्स में कांटेक्ट कीजिए, अकॉर्डिंगली ही कैन गिव यू द कॉन्टेक्ट्स ऑफ दैट। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर, मेरा नाम धीरज कुमार है और मैं बिहार से हूँ, और मैं बिहार गवर्नमेंट में एज ए प्राइमरी शिक्षक के रूप में काम कर रहा हूँ। सेशन में मैं थोड़ा लेट से आया, चूँकि मैं एबिलम्पिक्स में ये भाग लिया था, तो वहाँ पे मैं था। मैंने मैडम का बात सुना, और मैडम जैसा कि बता रही थी कि दिव्यांग बच्चों के साथ क्या हो रहा है कि वो तो सरकारी विद्यालय में आ रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वो क्या हो रहा है ना, बस उनका क्लास पास आउट करके उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसा कि अभी मैडम ने बताया
कि एक बच्चा जो है 11th में पढ़ रहा है और हियरिंग इम्प्रूवमेंट से वो ग्रसित है। तो जब वो उनके पास आया तो उन्होंने उनका स्किल टेस्ट किया तो वो अपना केवल नेम बता रहा है और बाकी की चीज़ों के बारे में उसको जानकारी नहीं है, लेकिन उसके कॉपी में जो सिलेबस का जो नोट्स है वो बना हुआ है। तो वही चीज़ हमारे बिहार में भी है। बिहार में भी क्या है कि हमारे यहाँ बच्चे प्राइमरी लेवल पे जो डिसेबल बच्चे हैं उसमें विभिन्न तरह के कैटेगरी के बच्चे आते हैं, जो ऑर्थोपेडिकली भी हैं, हियरिंग भी हैं, वो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था है नहीं। चूँकि वो हमारे यहाँ आ रहे हैं तो हमारे पास तो विद्यालय में स्पेशल एजुकेटर है नहीं। तो इस बार बिहार सरकार ने क्या किया है कि हर विद्यालय से एक एक टीचर को नोडल शिक्षक के रूप में नामित करके हल्का सा ट्रेनिंग 2 डेज 3 डेज का ट्रेनिंग उनको दे रहा है, लेकिन उनसे कुछ हो नहीं पा रहा है। तो हमारे बच्चे जो है जिस तरह से मैडम ने बताया ना कि बस पास आउट किए जा रहे हैं। साथ ही मैडम ने बताया तो कि आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है कि इस तरह की जो समस्याएं हैं दिव्यांग बच्चों के साथ, जो दिव्यांग बच्चे विद्यालय तो आते हैं समान बच्चों के साथ पढ़ने के लिए, लेकिन उनको हम लोग अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनको हम अच्छे से दिशा निर्देश नहीं कर पा रहे हैं, वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं, उनके पास एजुकेशन आ नहीं रहा है। तो उनके लिए सार्थक एजुकेशन के माध्यम से कुछ हो सकता है, कैसे उसको और डेवलप किया जा सकता है, ये हमारा क्वेश्चन है। हाँ, सो इसके बारे में सार्थक का सेंटर है आपके नियर बाय, या और भी जो सेंटर्स हैं वहाँ से आप संपर्क करें, क्योंकि वहाँ से पूरी गाइडेंस हम देते हैं। कैप सारथी के थ्रू आप डाउनलोड करके देखिए, उसमें इससे रिलेटेड सारी आपको जानकारी मिलेगी। और फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप नियरेस्ट सेंटर, जैसे मैंने बताया, काउंसलर से संपर्क करें, वो आपको स्कूल में, एजुकेशन में या वोकेशन में हर तरह से मदद करेंगे। तो आपके जैसे आप बिहार में कह रहे हैं, तो हमारा एक सेंटर है नियर बाय वहीं पर, तो उसमें आप संपर्क करके देखिए। Okay, my name is Madhu Sharma, and I'm an educationist. I'm a consultant who works in India as well as abroad. So my question to you, Ms. Swarnlata Shah, is that not only in the government schools, but even in the best of institutions, identification and support of students is a dire need. They are not catered to. There's no individual education plan. There is no strategy for education plans, intervention, pull out, pull in session, no resource rooms, because they get enough admissions as it is. So what do you say to that? The criteria is to keep getting admissions. And you don't have to. When I asked this question, because recently I was working on a research paper on challenges of adaptation and integration in an inclusive society. To the best of schools you go to, and all you hear is that maybe 5%, five in each section. There's no number there. So how do we take it forward? I mean, you were talking about the government schools, I can understand, but this is in the best of the elite schools. I did mention that even in best of the private schools also, the situation is same. And the 5% children you are talking about, yeah, 5 in each class, that too because the seats are reserved there. Had it not been the reservation in private schools, I think these 5 children would also be a rare sight in those, because the policy is simple: exclude, exclude, and exclude. Because school says that we do not have infrastructure, we do not have teachers, so we are not able to address the needs of your children. What I feel, first of all, that education should be the responsibility of the state, and regardless of caste, class, gender, economic status, the education should be the responsibility of the state to ensure that each and every child of this country gets high quality education. And this should not be a personal affair, because human capital is something which is going to serve the country at large. So हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे जो ये बच्चे हैं, जो डेटा मुझे बता रहा है कि लगभग पूरे विश्व में हमारे पास 2.2 बिलियन चिल्ड्रन हैं,
और जो कि टोटल पॉपुलेशन का 27% बनाते हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो ये पॉपुलेशन जो है वो लगभग 24% के लगभग है भारत की कुल जनसंख्या का, जो 0 से 14 की एज ग्रुप में आता है। तो ये सोचने वाली बात है कि हम इनके लिए क्या कर रहे हैं, सिर्फ 5 बच्चों की सीट को रिजर्व करके। और हमें ये भी देखना होगा मैम कि ये जो 5 बच्चे हर क्लास में हैं वो क्या चौथी 5वीं से आगे जा पाते हैं, उनका क्या रहता है, क्या वो 12वीं तक पहुंच पाते हैं? आई डोंट थिंक सो, आई डाउट. So that is something which is a concern, and I think as an educationist, I am also exploring that answer. And one thing I am for sure that with a powerful pedagogy, the retention can happen. But to retain these children, other things are also required, like infrastructure. And as I am reiterating again and again, an educated teacher. The educated teacher can do wonders in the class, but then for that also the state need to spend money on training, teacher education programs. We as a country really need good quality teacher education programs which sensitize teachers about these issues. These are now upcoming issues because the representation has gone up. And we need to understand that if we do not educate our teachers to address these concerns, that see आपकी 40 बच्चों की क्लास में हो सकता है 20 बच्चों की अलग अलग requirements होंगी. How are you going to handle that? Your job is not just to write answers on the blackboard and make the children to copy those things. Your job is more than that. And the training, the education programs need to work on their curriculum and to bring and include these aspects, because these are the aspects which are going to benefit not only the children with the special need but the entire community of children. So that is my belief, that an empowering pedagogy and an empowered teacher training, teacher education program can bring changes. But the main work is from the government, from the state, to put more and more emphasis on making barrier-free, accessible institutions with the sense of acceptance, respect, dignity, and to understand that each child of this country deserves high quality education. So the source is that, ma'am. But definitely, because ये 5 बच्चे भी जो हर क्लास में आप पाती हैं या हम पाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि एक ऊपर से दबाव है, तो ये हो रहा है, नहीं तो ये भी नहीं होता. ये हमें समझने की ज़रूरत है. तो माय आंसर, आई थिंक आई एम एबल टू कमेंट ऑन दैट. Thank you, Professor. Professor. I just wanted to Yes, add just go one ahead. second. See, in India, so being I'm very much associated with the many guidelines in the Ministry of Health. So in India, we have so many ministerial divisions. We have a Ministry of Social Justice Empowerment. We have Ministry of Social Health and Welfare. We have Ministry of HRD Minister. What happened, at the top, in the Nirman Bhavan, in the development, they work parallelly, vertically. Okay, so Ministry of Health, so AIMS is under the Ministry of Health. At the same time, Ministry of Social Justice, which deal with all disability, inclusive and other things, and assistive device. So in between, do you think is there any link? So this ministerial division at the apex, at the policy decision making, they work vertically. So now there's a conflict going on. This assistive technologies should be under the Ministry of Health or not? A lot of debate is going on. So some said, no, it should be under the Ministry of Health, not under the Ministry of Social Justice. And then so recently we prepared one guideline, the guideline for the training for eye surgeon and other optometrists and refractionists. So इसमें लिखा था low vision services. And मैंने बोला उसको what is the DDG and other all expert panel in Nirman Bhavan में मैंने बोला लो विजन बोलने से हमारा काम कंप्लीट नहीं होता, उसको आप विजन रिहेबिलिटेशन ऐड करिए. तो मैंने इमीडिएटली सबके सामने बोला सर उसको आप लो विजन खाली लो विजन बोलने से काम नहीं होता, सो विजन रिहेबिलिटेशन, बिकॉज हॉस्पिटल इज द फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट फॉर दोज पर्सन पीपल विद विजुअल डिसेबिलिटी. तो अभी ये इशू है. अब जब तक ये बीच में अगर लिंक नहीं होगा ना, तो इट्स वेरी चैलेंजिंग, वेरी डिफिकल्ट टू मेक ए इंक्लूसिव स्कूल्स in India. So this is my simple submission to all of you. I just want to make one comment on Preeti ma'am's that example, and my comment to you, ma'am, कि जो writing की बात हुई कि वो बच्चा जो है आपने जब उसको दिया लिखने को, वो पढ़ करने के, तो वो समझ नहीं पाया.
पर मैं आपको ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं लिटरेसी की, उसमें हम देखते हैं कि 5वीं क्लास के बच्चे दूसरे लेवल तक का भी रीडिंग राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उस हिसाब से तो वो सारे ही डिसेबल्ड हो जाएंगे. सो द नीड इज टू फोकस ऑन पेडागोजी कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि वो बच्चा 5 साल तक सो कॉल्ड ट्रेंड एजुकेटेड टीचर से पढ़ के आ रहा है, लेकिन वो 5वीं में आकर के भी उसका कॉम्प्रिहेंशन लेवल पहले ग्रेड तक का है. सो दैट रिफ्लेक्ट्स द ब्लीक पुअर पेडागोजी बीइंग यूज्ड इन द क्लासरूम, एंड दैट इज व्हाई द रोल ऑफ एजुकेशन, टीचर एजुकेशन programs becomes very crucial. Thank you, Professor. And in interest of time, we have to conclude now. If I try to do justice with this discussion, perhaps we have to go on for another 2 hours with so much knowledge here. So I conclude it, and thank you everyone for being with us for today's session. So we saw 3 keywords. One is early intervention, which is our core. Then technology, AI, and inclusion. All 3 have to work together for the benefit of children and their development. So thank you all panelists for sharing such a rich and thoughtful insights. Today's discussion reminded us that early intervention is not just a service, it's a lifeline. When we combine early screening, empowered children, community support, and smart technology, we build a future where every child can learn, grow, and thrive. So let us commit to ensure that no child anywhere will be left behind, and we'll continue to work for that. Thank you very much. Thank you, Sunil ji, and thank you, panelists. मेरी आप सबसे एक विनती है, अगर आपको लगता है कि सार्थक को कुछ करना चाहिए, तो आप सार्थक के जो डिजिटल सॉल्यूशंस हैं, चाहे वो कैब सारथी है, ज्ञान सारथी है, उससे जुड़ें. हम शायद शिक्षा पद्धति को नहीं बदल सकते. बिहार का एक क्वेश्चन था इसी तरीके से. काफ़ी सारे प्रदेशों में ये चैलेंज हो सकता है. तो हमारी आपसे यही एक सुझाव होगा कि सार्थक से जुड़िए. कम से कम हम पूर्णतया शिक्षा नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको सक्षम बना सकते हैं हुनर के साथ, और आप अपनी जीवन यापन कर सकते हैं उस हुनर के साथ. तो थैंक यू वेरी मच. कैन आई रिक्वेस्ट नाउ लव वर्मा जी टू कम ऑन द स्टेज and hand over the mementos and token of appreciation to all the guests. Can we have Love Verma ji handing over a small memento to Dr. Rajiv Bhatia ji? All the panelists can come in front. Can we have Love Verma ji handing over to Miss Preeti Johar ji? Can we have Love Verma ji handing over to Professor Suraj Singh Sanjam ji? Can we have Love Verma ji handing over to Dr. Swarn Lata Shah ji? Can we have Love Verma ji handing over a small token to Mr. Anil Joshi ji? Can we all assemble in the front and have a group picture together, please? Can we have Love Verma ji handing over a small token to Sunil ji, the moderator? Can we have everyone come in front for a group picture, please? In the meantime, can I request Rajiv Gulati ji to be prepared for the next session? I request all the panelists to come in front for a group picture. Rajiv Gulati ji. Thank you very much, panelists, for giving such detailed insights. This panel, Tech for All, Innovation Driving Inclusion. Rajiv Gulati ji, who is an expert and has 4 decades of rich experience across corporates, Government of India, state administrations, United Nations, international governmental organizations, and he has been a strong supporter and an advisory board member for Sarthak.
So I invite Rajiv ji to host the discussions. Our first panelist is Dr. Jatinder Singh, Deputy Secretary General of PhD Chamber of Commerce, over 3 decades of leadership experience, including Ministry of Labor and Employment, NHRC, QIC. He has created wonderful conversations solving the problem of inclusion and technology. Can I have Mr. Roman Jagota ji, Director of Clinical Services at Autoblock Healthcare India for the North and East regions. As an international trainer faculty, Roman ji is deeply passionate about innovation and mentorship. Mr. Amit Panwarji, founder of Sunqualp Tech, a startup that focuses on creating innovative solutions for visually impaired. Can we have Suket Amin, the co-founder and CEO of Sunbots Innovation, a deep tech start developing SmartOn, AI-powered smart glasses, a TEDx speaker and a passionate advocate of inclusive technology. Many thanks, gentlemen. And Rajiv ji, over to you. Yeah, everybody has got charged, but also got discharged at this moment also. It's now as almost at the fag end of the whole day. मैं कोशिश करूंगा आप सबको इसमें इन्वॉल्व करने की. दिस टॉपिक इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, और जितने आज पैनल में आप लोग देख रहे हैं ये इसमें कहीं ना कहीं किसी डायरेक्शन में जुड़ रहे हैं. तो इसकी एक, हम कहते हैं कभी कोई पेंटिंग बनानी होती है तो एक कैनवस को तैयार करना, प्लेन कैनवस के ऊपर आपके थॉट को तैयार करना बड़ा ज़रूरी है. तो मैं आप सबका एक सिंपल सा एक थॉट लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ. जब हम टेक कहते हैं, टेक और इनोवेशंस आपकी कैसे काम करती हैं, और टिपिकली जब हम उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए अलाइन करते हैं, जैसे एक छोटी सी चीज़ सोचने की कोशिश कीजिए आप. हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, हमारे पास इनोवेटर्स हैं, हमारे पास इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं. ये सारी अल्टीमेटली जब बेनिफिट करेंगी तो किसका करेंगी, और वो बेनिफिट अगर उसका होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे. तो लुक इनटू एट ए सेंटर एज ए सोसाइटी. उसके ऊपर एक सर्कल देखिए आप, किसका? टेक्नोलॉजी का. हाउ टेक्नोलॉजी इज सर्विंग सोसाइटी. एंड देन इफ देयर इज एन एसडीजीज गोल जो हम अलाइन करने जा रहे हैं आज की डेट में, एसडीजी 9 और 10 अलॉन्ग विद दैट, उनको हम इसमें मैप करते हुए कैसे आउटकम ले आएंगे. हर एक इंसान का इसमें जो जुड़ा हुआ है उसका किसी ना किसी तरीके से आज की डिस्कशन में, जिसको मैं बड़ा महदूद रखूंगा, ज़्यादा बढ़ाऊंगा नहीं, इंस्टेड ऑफ मैं किसी को इंट्रोड्यूस करूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये अपने आप को 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर अपने आप को इंट्रोड्यूस करें. कौन है इस पूरे कैनवस के ऊपर, ये कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और टेक सोसाइटी को कैसे अपने क्लोज ले आ रही है. माई रिक्वेस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम डॉक्टर जतिंदर सिंह जी, बिकॉज ये पूरे का पूरी कैनवस के पीछे की बैकबोन है जिन सारों को जोड़ते हैं. प्लीज. थैंक यू वेरी मच राजीव जी फॉर सच अ ग्रेट इंट्रोडक्शन. सबसे पहले मैं डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल सर का एंड सार्थक का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा जिन्होंने यहाँ बुलाया मुझे. एंड आई थिंक आई एम एसोसिएट विद सार्थक फ्रॉम आई थिंक 2nd और 3rd नेशनल कॉन्फ्रेंस, और लास्ट ईयर कोई कॉन्फ्रेंस छोड़ के आई हैव बीन पार्ट ऑफ each and every conference in different capacities. So thank you very much. तो राजीव जी, हमारा जो PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है, it's a 120 years old organization and we work in all sectors of economy. And one of the important sectors is definitely the tech sector. And within the paradigms of assistive technologies and working closely with PWDs, हमारा जो focus assistive technologies पे बहुत रहता है, जिसमें हम कॉर्पोरेट्स के साथ इंटरवेंशन करके हाउ दे कैन क्रिएट एन एनेबलिंग इकोसिस्टम फॉर PWDs within their industries, making some retrofittings or making changes in the infrastructure, also providing digital technologies, how they can actually mainstream the PWDs at par with the
with their counterparts. I think that's the essence like we try to do. Or as a chamber, what we feel that technology is not only a big enabler, it is a big equalizer. Because जब हम बात करते हैं SDGs 9 की, 10 की, 11 की, which is innovation, industry, and also 11 is about, 12 is about the reducing inequality. I think they go hand in hand. And what I think that as I told you, I have been privy to so many conferences. My only humble submission here is that we need to come out with the solutions that we are offering and the changes that we are actually making in this space. Because in much of the conferences, even in previous, panel also, what I feel that most of the discussions become very, very, knowledge sessions, philosophical sessions, theoretical sessions. A lot of modal verbs are used. We can, we could, we should. Should, can, could से कुछ नहीं होगा. We have to do it. Simple, full stop. कोई इसमें question है ही नहीं. Because जब could आ जाए, can, the teacher should do it, तो वो narratives क्या होता है, बहुत ही एक dilute हो जाता है और किसी की जिम्मेवारी उसमें बनती नहीं है. Ultimately the onus is मैं क्या कर रहा हूँ अपने organization में या मेरी organization क्या कर रही है इस space में. I think that matters more, and I think we need to deliberate as a group in this panels also that what our respective organizations are doing in this domain and how we can actually create a very, very enabling ecosystem for making our PWDs more tech enabled, making technologies more affordable, more equitable, so that even the last mile person also gets the added advantage and benefit out of it. Thank you. Thank you, Dr. Jitendra जी. मैं अब डॉक्टर रोमन जगोता जी को रिक्वेस्ट करूंगा, जब इन्होंने इंक्लूसिविटी की, टेक्नोलॉजी की, अफोर्डेबिलिटी की, और दूसरी चीज़ एक बड़ी सिंपल सी बोली, इंस्टेड ऑफ ये है, हम एग्जैक्टली हम उसमें कैसे इन्वॉल्व होके उसको एक सोल्यूशन में, उसको एक इम्पैक्ट के तौर में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये मैं कहना चाहूँगा, जितने आज पैनल पे लोग बैठे हैं, इन्होंने ये चैलेंजेस देखे हैं, महसूस किए हैं, और उसका इम्पैक्ट को टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको हेल्प करने की कोशिश की है. सो दे आर द एक्शन पीपल्स एट द ग्राउंड लेवल. या डॉक्टर रोमन प्लीज. Yeah, hello everyone. मैं Dr. Roman Jagota. I'm a Director Clinical Services, Autobok Healthcare. So I have been associated with Autobok for last more than 20 years. And basically what Autobok do is it's a German-based organization who deals with the high technology artificial limbs. So we build a prosthetic and orthotic solution world state where we are making a special knee joint, special prosthetic foot, special microprocessor control hand, which automatically control all the movement. Like once we put the hand and then it's like a machine learning. Once the technology learn, so patient need not to think, the hand automatically start working. And especially for the knee joints or the foot, if someone wants to walk fast, despite of both the limb is amputated, but still they will be able to run, walk and play, do a mountaineering recreational activity. These types of prosthetic solution provides the treatment to the patients. And as I mentioned, this organization is more than 100-year-old and having a facility across the world. Most of the patients can be using these technology not only here in India, wheresoever they travel, they can get the treatment done there and then. And we are also participating in Paralympic, where our users are winning the medal for the country. And many of them you must have watched on the TV how they are making the country proud. And that is what today we are going to talk about and share more insight into it. Thank you. Thank you so very much. Thank you for a brief story of 100-year-old company which is helping in a very nice direction. जो हमने देखा होगा ओलंपिक्स में या पैरा ओलंपिक के जब आप एथलीट्स होते हैं, वो कैसे डिफरेंट लिम्ब्स को जो उनके एम्प्यूट हो चुके हैं या किसी तरीके से उनके पास नहीं है, उनमें इनका कहीं ना कहीं स्टोरी बिल्ड करने में हाथ है उनका. थैंक यू. नाउ आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर अमित. You tell your story, you being in a very young startup, आप एज ए स्टार्टअप इस फील्ड में कैसे आए, आपका जो आपने इनोवेशन है उसको कैसे इम्पैक्ट के तौर पे यूज़ किया और कैसे सोसाइटी को हेल्प कर रही है.
Yeah. Hello everybody. My name is Amit Pawar. I'm the founder of Sankalp Tech. और हम लोग क्या कर रहे हैं? We are solving a very fundamental problem of the blind and visually impaired people, which is their basic mobility and navigation. यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चलने में हेल्प करना ब्लाइंड लोगों को. और वो हम कैसे कर रहे हैं? थ्रू अ टेक सोल्यूशन, अ हार्डवेयर प्रोडक्ट, स्मार्ट वेस्ट वी कॉल इट. So it's a wearable product and has multiple sensors in both forward and backward direction. And there is a shoulder mounted speaker nearby shoulder. So it is just like a person being along with the blind person जो उनको चलने में help कर रहा है. So he's always telling them that hey, something is at 5 feet away from you, something is 6 feet away from you, you should avoid this obstacle. Something's approaching you very rapidly, a person running towards you, or a vehicle approaching, all these kind of things. So ultimately we want to solve the semi-outdoor and outdoor navigation for the blind people. Starting off with the basic point-to-point navigation, ultimately हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि उसमें एक optical camera module के through machine learning, we want to create a one-stop solution for all the needs of a blind person. But besides, this is all the tech details. जैसा सर ने पूछा, my origin story is little interesting. So I was doing my masters from Germany in physics honors, and a pure academic goal that I had. I wanted to pursue PhD and then settle abroad. But then the COVID came and my thinking shifted, being in my home for 5 to 6 months. And since like my college days only, I was interested in technology and starting a startup. So I thought that was the best point to do it. And then when I looked into this problem, it was worth solving. I mean, there are more than 3 crore blind people in India who are in need of an assistive solution. So this was a problem worth pursuing, and I think this was my Savdesh story. So yeah, I think this is all. Thank you, Amit. अब मैं जिस शख्सियत को आपके सामने रखने जा रहा हूँ, अभी एजुकेशन का बड़ा सुबह से चर्चा हो रहा है, और एआई को आपने सभी ने सुन चुके हो भी. एआई हमारी लाइफ में किसी न किसी तरीके से इंटरवीन कर रही है. सो आई विल रिक्वेस्ट सुकेत अमीन जी, आप इस पूरा जो आपका जो इकोसिस्टम है जो आप बिल्ड कर रहे हैं एजुकेशन के अराउंड, उसको आप प्लीज ब्रीफ करें. नमस्ते. मैं 6 फीट टॉल हूँ. एक चेक्स कोटी पहनी है, वाइट शर्ट है, ब्लू पैंट है और चश्मे पहने हैं. अब हम लोग पिछले 3 साल से एक ही मिशन पे काम कर रहे हैं, और वो है नर्चरिंग प्रोडक्टिविटी एंड फॉस्टरिंग ग्रोथ. इसका सिंपल मीनिंग में बताऊं तो सबसे पहले हम एजुकेशन को लेके काम कर रहे हैं. जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज में पढ़ते हो या अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उनको बहुत सारी दिक्कतें आती है एक्सेसिबल कंटेंट को लेके. तो हमारा सल्यूशन है, एक मोबाइल ऐप है जो कि एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, और साथ में एक स्मार्ट ग्लास है जो आपको विजन टू ऑडियो कन्वर्ट करके आपको चीज़ें बताता है. तो हमारी जो यूनिकनेस हमने जो पिछले कुछ सालों में बिल्ड की है वो है एक्सेसिबल कंटेंट बनाना. जब मैं एक्सेसिबल कंटेंट बोलता हूँ तो आपको चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो स्कैन पीडीएफ हो, वर्ड फाइल हो, पीपीटीज हो, उसके अंदर जितने भी डायग्राम्स हो, चार्ट्स हो, इमेज हो, उन सबको हम एक यूजेबल, एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड हो, लो विजन हो या कम्प्लीटली ब्लाइंड हो, उस कंटेंट को एक्सेस कर पाए, उसके साथ इंटरेक्ट कर पाए. तो जो हम एआई की बात करते हैं उससे आप कोई भी लैंग्वेज में उस कंटेंट के साथ बात कर सकते हो. चाहे मान लो आपने क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है, आपको पता नहीं है कि वो सॉल्व कैसे करना है, अब आप किसी को पूछ नहीं सकते, तो आप सीधा उस ऐप के माध्यम से आप उस सवालों के जवाब ढूंढ सकते हो, कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या क्या स्टेप्स होता है. या फिर आपने कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट लिया है, आपके आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, उसका आपको नंबर ढूंढना हो, तो आपको डॉक्यूमेंट खोल के पूरा अपलोड करना, पढ़ना, बार बार करना पड़ता है अभी. तो वो सारी चीज़ें हट जाएगी. एक बार अपलोड किया, आपने पूछा और आपको दे देगा. डॉक्यूमेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ओपन करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये सारी चीज़ें हम एआई के थ्रू कर रहे हैं अभी, और आगे जाके हम इसको वेब प्लेटफॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे ताकि जो बच्चे कंप्यूटर्स पे अपना काम करते हैं, कंप्यूटर्स पे अपने डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं,
टाइप करते हैं और एक्सेस करते हैं, तो वो भी आपके फ़ोन के साथ सिंक हो जाएंगे। तो आप कहीं पे भी हो, आपके पास अगर कंप्यूटर भी ना हो, तो भी आप वो कंटेंट को एक्सेस कर पाओगे। तो यही हम विजन लेके चल रहे हैं कि एजुकेशन में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो पाए। थैंक यू। मेरा अगला क्वेश्चन अब दोनों के लिए है। वो मैं क्यों पूछ रहा हूँ, जब मैंने अपना साथ सार्थक के साथ शुरू किया था 2016 के इर्द गिर्द की बात है, हम स्टार्टअप की एक हब बनाई थी गुड़गांव में, जिसमें आई रिक्वेस्टेड सार्थक, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव को भी बोला भी इनको हमारे साथ बैठना चाहिए, बिकॉज दे वांटेड टू वर्क ऑन सम इनोवेशंस, उस टेक्नोलॉजी को जो इन लोगों को सबको हमारे हेल्प कर सके और इनकी इंक्लूसिविटी को हम और कितना आगे ले जा सके। तो हमने ये सोचा क्यों ना सार्थक को स्टार्टअप्स के साथ बैठाया जाए, और स्टार्टअप्स जो इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं उनकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो प्रैक्टिकली उनको देख के और उनके साथ उनका जिक्र करके, उनसे इनपुट लेके, जैसे हम कहते हैं मेरा ये कस्टमर है, अगर मेरा कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ वो कस्टमर यूज़ ही नहीं करता तो उसका फ़ायदा क्या है, या उसको अडॉप्ट नहीं कर पाता क्या है। तो हमने वो वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट की। वहाँ एक थॉट आया जो सार्थक ने ग्लोबल रिसोर्स सेंटर बनाने का वहीं से बीज बोया। उन्होंने देखा जब हम स्टार्टअप के साथ काम कर रहे हैं तो इनको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, ये अपनी इनपुट्स को वैलिडेट कैसे करें, अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर जो एक प्रोडक्ट या सर्विस तैयार करने में उसको वैलिडेट कैसे करें। तो कैसे सार्थक इसका एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर सके जो इसको काम करे, तो ग्लोबल रिसोर्स सेंटर का बीज बोया गया वहाँ पे। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट इन डेकेड बैक। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा दोनों से, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन ए इनोवेशन, ऑन इनोवेटिव आइडिया, जहाँ से आपने स्टार्टअप बिल्ड किया, प्रोडक्ट सर्विसेज तैयार की हैं। पहले आपसे पूछूंगा आपको क्या क्या चैलेंजेस आए और सार्थक उसमें आपकी क्या हेल्प कर सकती है, या ब्रॉडर जो आज की डेट में भी कुछ लोग इन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं, वो कैसे ग्लोबल रिसोर्स सेंटर का फ़ायदा उठा सकते हैं। जी, सो अगर प्रॉब्लम्स की बात करने चले तो आई डोंट थिंक देयर इज नो एंड टू इट। आई थिंक सुकेत विल आल्सो एग्री, बट मेजरली इंडस्ट्री वाइज इफ यू थिंक, डिसेबिलिटी इंडस्ट्री में जो नॉर्मल स्टार्टअप इंडस्ट्री के जो डिफरेंट एक इशू सामने आता है, दैट इज द प्रोडक्ट वैलिडेशन। I mean, the population of the visually impaired people, for our case, is very diversified in the geographical sense. So आपको एक ऐसी कोई जगह नहीं मिल पाती, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं मिल पाता जहाँ पे जाके आप पहले दिन से अपना आइडिया वेरीफाई कर पाओ, because building a product is not a very easy job, and you need to start from the beginning to take feedback from the people who will be actually using it. So एक institutional support and a collected population of people with whom you validate, आप उनसे अपना आइडिया डिस्कस कर पाएँ, उनसे उनके प्रॉब्लम सुन पाएँ, और उसके हिसाब से you mold your device accordingly. So I think that was the major challenge for us, and that has been solved, of course, with the Sarthak. So that means, I mean, the journey which we started, that's going into the right direction, and they started. Now from your side also. तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, ज्योग्राफी इज़ एन इशू जैसे आपने सुना। लेकिन अगर आज मैं बात करूं कि आगे हम नया क्या बिल्ड करना चाहते हैं, तो हम ये बिल्ड करना चाहते हैं कि हम हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी को भी स्किल डेवलपमेंट या कोई भी कोर्स करना हो तो उसको उसकी लैंग्वेज में एआई के थ्रू सिखाया जा सकता है, और वो हम कर सकते हैं। लेकिन अब गैप ये आता है कि कौन सा कोर्स करना, कैसे डिलीवर करना, और उसका आउटपुट कैसे मेजर करना, जिसमें हमारा एक्सपर्टीज़ नहीं होती जो सार्थक प्रोवाइड करा सकता है। तो एक ये गैप है, क्योंकि सार्थक एज एन ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि बिजनेसेस को क्या रिक्वायरमेंट है, क्या स्किल प्रोवाइड करानी चाहिए, लेकिन उनको भी एक हद तक स्ट्रगल होता है कि हम कंटेंट लास्ट विलेज तक कैसे ले जाए या लास्ट यूज़र तक कैसे ले जाए। और वो अगर ओपन सोर्स के माध्यम से या और डेवलपर और प्लेटफॉर्म के साथ शेयर पे चले जाए तो उनके भी यूजर्स को ये रिसोर्सेस मिल सकते हैं, और लैंग्वेज जो सबसे बड़ा बैरियर है उसको भी हम ओवरकम कर सकते हैं, ताकि कोई भी हो अच्छा कंटेंट किसी ने बनाया हो
तो वो चाहे वो केरला में मलयालम में पढ़ना चाहे और स्किल डेवलप करना चाहे, या कोई दिल्ली में बैठे हिंदी में करना चाहे, तो उसको सेम कंटेंट सेम क्वालिटी में हम प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये कोलैबोरेशन में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ग्रेट। सो जब हम कोलैबोरेशंस की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, हम SDG 1 से लेकर 17 तक अपनी जर्नी पूरी करते हैं। जो SDG 17 आता है, जिसको हम मोस्ट पावरफुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलते हैं, उसको हम पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशंस का गोल बोलते हैं। दैट मीन्स कोई भी चीज़ अगर हम बिल्ड करते हैं, अगर उसको हम आपस में एक तरफ से मिलजुल के या उसके रिव्यू करके या उसकी इनपुट्स आपस से लेके नहीं आगे बढ़ते, तो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाती है। इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए, बीइंग एन 100-year-old योर कंपनी फ्रॉम जर्मनी, दोज आर द यंग कंपनीज जो ऑलरेडी एक हम कहते हैं इनोवेशन से आपका इंक्लूजन की तरफ से काफ़ी इम्पैक्ट ग्लोबली क्रिएट कर चुकी है। नाउ यू आल्सो पुट योर फुट ऑन दी भारत माँ की धरती के ऊपर। अब इस तरह के जो हमारी इनोवेशंस हिंदुस्तान में पल रही हैं, जो अलग अलग जगह पे बैठी हैं, और मैंने जो एकेडमिया के साथ काम करता हूँ, जो आपने मुझे ने सोल्यूशन बताया, जो आपने बनाया, वहाँ कहीं ना कहीं लोग इनके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन वो डिल्यूट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। उनकी हैंड होल्ड, उनको ये नहीं पता लगता उनकी डायरेक्शन किस में जाना है, मे बी फंडिंग एंड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। बट यू बीइंग लुकिंग इट फ्रॉम द ग्लोबल एंगल, हाउ यू थिंक योर कंपनी and your technologies can put an impact among these young people so that ये ज़्यादा से ज़्यादा innovations हमारे साथ इस particular domain में आगे लेके? Thank you for this. Is very special question, and generally when we entered into India, more than, I think now it is more than 25 years. So initial challenge which we faced was we had many of our professionals who visited our facilities and see everything was really great and knee joints are fantastic, foots are good, machineries and state-of-art prosthetic and orthotic clinics across which we built. But there was a big challenge that no one was able to, everybody appreciated it, but nobody wanted to go ahead because of the cost effectiveness. And then we specifically introduced some of the solution which was really cost effective and try to approach. And simultaneously we entered into the National Institute and provided each and individual institute with to make them familiar about how this high technology artificial prosthetic solution can be fitted to the bigger generation. It should reach to the more and more people. And first thing which we did, we educated the trainers. So we initiated the program Trains the Trainer. First we trained them, and simultaneously we provided the training to the students also, while giving them a lecture and requested them to come to our facility where they can see how this kind of a technology can be fitted. So this is the one thing which we incorporated and try to support the Indian institutes and simultaneously the government. We reached to the government as well afterwards. After 10 to 15 years afterwards, we approached the government of India and we started transferring our technology to them. And where we have not only procured the prosthetic devices from Germany, but started building that prosthetic solution here in India. And that is the way now there is a number of users number of patients across the country who are getting the benefit through ADIP scheme. And they are getting a benefit from the technology which we introduced to the industry. This is how, and simultaneously again and again we are approaching
wheresoever we can. Now the CSR is one of the opportunity where we are trying and getting the patient to be treated through that. In southern part of India, there is a CMC HIS scheme, and through that also we are helping the people and helping the patient to get the treatment with the local solutions. Great, Yeah, interesting. thank you. I mean, इसने मेरे दिमाग में 3 चीज़ें ट्रिगर कर दी हैं जो मैं डॉक्टर जितेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा उसके ऊपर अपना व्यूज़ दें. आपने कहा अफोर्डेबिलिटी, जो डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर जितेंद्र ने स्टार्ट किया था, कोई भी टेक्नोलॉजी अगर हम बनाते हैं, हमें जो कस्टमर है उसके लिए सामने रखते हुए उसको कैसे अडॉप्ट करेगा. वन मेजर थिंग इज़ अफोर्डेबिलिटी. सेकंड थिंग यू talked about the awareness, maybe through teaching, maybe guiding, or whatever the campaign you must have forwarded. Third, you talked about the policy intervention also, because unless until the people think from the policy side, from the affordability side, or from all these stories, यहाँ पे जो chambers होते हैं, industry chambers, they play a big role. So Dr. Sir, my request to you is looking into these type of companies who are coming, maybe as in startups, maybe the big companies who want to put their stories for the Indian towards the inclusivity और इनकी हेल्प करना चाहते हैं. इसमें चैम्बर्स के रोल आज की डेट में, मे बी इवन द अवेयरनेस, द कैंपेन्स, ये बड़ा रोल प्ले करते हैं. उसका आप अपने PhD चैम्बर कैसे उसको रोल अदा कर रहा है, उसका बताएं. सबसे जो पहला हमारा जो रोल होता है एज ए चैम्बर इज़ बेसिकली टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जिसमें कि रेगुलेटर्स, पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री, यूज़र्स, development sector organizations, NGOs, they all come under the same roof and discuss what are the issues, challenges, and what are the probable solutions also. Because when I talk of any technology as such, I think at the end of the day, everything boils down to the money. यहाँ बैठ के हम AI assisted technologies की बात कर सकते हैं. We can talk of n number of things. But as we go maybe 50-60 kilometer away from Delhi, जैसे हम और आगे के travel करते हैं, once we go to Tier 2 cities, then we go to hinterlands, rural areas में जाते हैं, तो वहाँ पर ये बातों कोई महत्व नहीं रह जाता. ये बातें यहीं पर एक अच्छे कॉन्फ्रेंस हॉल में डिस्कशन के लिए रह जाती हैं. तो स्टार्टअप्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है डेफिनेटली जब वो शुरू करते हैं, उनको टेस्टिंग का बहुत इशू आता है, प्रोटोटाइप बनाने का बहुत इशू आता है, जो बनाते हैं POC बनाते हैं उसमें बहुत इशू आते हैं. So what we have done, we have tied up with some of the universities wherein we are giving the opportunities and services to startups to use their labs in many engineering colleges, even in JNU also, like LAS, lab as a service. Because हमने देखा कि बहुत सारे colleges में, universities में, they have the best of the, you know, the laboratories, उनका infrastructure बहुत बढ़िया होता है, but normally the infrastructure or the machines or tools or equipments are underutilized. So we are in fact urging the startups to utilize these, you know, laboratories which are very, very affordable. अगर बाहर टेस्टिंग करते हैं या प्रोटोटाइप बनाना, it becomes a very expensive affair. But as a hand holding with startups, they can use these labs, particularly the labs in different academic institutions and organizations. That's a big thing. Already we have tried, and many things already they are in pipeline, and things are actually moving ahead. Second, what I think, everything has to be incentive based. जैसे पिछले सेशन में बात हो रही थी कि टीचर्स शुड डू, कैन डू, कुड डू, ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि अनटिल दो तरीके से ही काम होता है हमारे इसमें. हम नॉर्मली देखते हैं किसी भी जगह पर, या तो सिर पर तलवार लटकी हो या फिर उसका रिजल्ट कुछ इंसेंटिव्स उसका मिल रहा हो. मुझे अगर टीचर्स के लिए, इफ़ यू नो देयर इज़ अ कंपलसरी थिंग कि आपको नेक्स्ट करियर प्रोग्रेशन के लिए यू हैव टू बेसिकली do some courses in special education, how to actually deal with those child psychologists. I think वो जब तक वो enabling tool नहीं डालेंगे जिसमें उनका next level पे वो जा सके, तो वो काम half-hearted होगा. Similarly for the industry, we talk that industry should do this, they can do this, but at the end of the day, each and every industry is, you know, driven by profitability. Until unless they see ROI in their work, return on investment नहीं होगा, तो वो बातें फिर वहीं के वहीं रह जाती हैं. So as we normally, whenever we talk with, you know, regulators, we always urge that they have to basically, you know, incentivize some of the policies wherein industry can
get some subsidies, particularly for making assistive technologies more affordable, more equitable. And as we know that जब हम बात करें कि आजकल now AI is taking everything by the storm, but AI has to be, वो तो artificial intelligence है, so human intelligence आता है कि उस artificial intelligence को कैसे हम चेंज करें जिसमें कि जो हमारे एक्चुअल यूजेज ग्रुप है जहाँ तक वो जाना चाहिए वहाँ पहुँच सके. सो एज ए चेम्बर वी आर बेसिकली कनेक्टिंग ऑल द डॉट्स. ऑलरेडी हमारे बहुत ज़्यादा वी आर टेकन स्ट्राइड्स पर्टिकुलरली फॉर वर्किंग PWDs. हम जॉब मेला करते हैं फॉर PWDs जिसमें कि सिर्फ जो एस्पायरेंट्स होते हैं जो उसमें जॉब लेने आते हैं वो सिर्फ PWD होते हैं और वहाँ से इंडस्ट्री को ऑलरेडी हम पहले ही उनका बायोडाटा वो फिल्टर करके सब भेज देते हैं सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ अ मिस कम्युनिकेशन. वहाँ पर रिक्रूटमेंट ड्राइव होता है सो दैट प्रॉपर मैच मेकिंग कैन बी डन. So these are certain things which are doing in piecemeals, but I think a lot of things need to be done because there's always a lot of room for improvement. Scope is humongous. Opportunities are, so much. They are mammoth. The only thing is the limitation lies only within us. So as an industry chamber, we are trying to, do all what we can do by, connecting the policymakers, the regulators, the industry, the startups, and MSME is also one of the important focuses that we work on. जो भी बड़ी companies हैं सबके जो जितने बड़े OEMs होते हैं सबका जो supply chain के लोग सारे vendors होते हैं वो सारे वो basically MSMEs होते हैं. तो how basically all these big OEMs, ABILYMPICS and all those stuff, how the ancillary industry which is associated with them also they can be getting some sort of benefit in terms of some maybe some discount, some subsidies or some incentives from government that will actually create more enabling ecosystem by which we can actually drive this force of mainstreaming our PWDs, achieving SDG, all SDGs, as rightly said by Vladisab, that SDG 17 is the most important one because otherwise all SDGs they're working in silos, but SDG 17 is only one of the important I'll say models which connect all these SDGs together so that there is a lot of synergy, because normally it is said in synergy 2 plus 2 is not 4, 2 and 2 sometimes become 22 also. So that is one of the I'll say the objectives of the chamber, that how we can create those environments wherein synergies could take place between the startups, the MSMEs, the industry, the development sector organizations. And that's how, like, rather than going for incremental growth, how we can actually using technology we can leapfrog whatever theme, the discussion that is taking place. That leapfrogging should be the major goal rather than growing day by day or maybe year on year or quarter by quarter. So I think this is one of the essences that we do at PhD Chamber of Commerce Industry. Thank you, sir. तो मैं जहाँ से शुरू हुआ था आपके सामने एक कैनवस रखी थी, ये सारे लोग चाहे टेक्नोलॉजी की हेल्प ले रहे हैं चाहे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की हेल्प ले रहे हैं, अल्टीमेटली दे आर सर्विंग द सोसाइटी विद एन इन्वर्टेड कोमा, जिसको हम इवन यूएन में बड़ा पॉपुलर है, लीव नो वन बिहाइंड. सो वी हैव टू लुक इनटू दैट वेरी सीरियसली. कैसे टेक्नोलॉजी एज ए एनेबलर बन रही है वाइल लीविंग नो वन बिहाइंड. कैसे एसोसिएशंस, चैम्बर्स इंडस्ट्री की इंटरवीन करती हैं ऑन ए बिगर प्लेटफॉर्म to define the policies, to help the innovations to scale, to help the startups to scale, and the bigger industry to come and settle down in India and can have their path, which can create more inclusivity through the technology and their applications also, and definitely towards the affordability side. So, मैं ज़्यादा इस डिस्कशन को आगे नहीं लेके जाऊंगा. We have already 2 rounds and already time has already been crossed, which we have given to earlier to us. Single one liner से मैं अभी नहीं define करूंगा. Let me first open the platform for the audience. आपके दिमाग में अगर कोई question है, straight forward you can tell us. We will try to answer it. Please, any question in your mind regarding this particular thematic area जिसके अंदर हम आप discussion कर रहे हैं. Any question? No, is okay? Is okay. Everybody from this side? No. So, last में मैं conclude ऐसे करूँगा इसको. Together as an innovator, we know that we have to take the help of technologies, the industry,
while looking into the interest of person with special abilities. Maybe that will be visual, maybe in teaching, maybe on orthopedic side, or maybe when these technologies have to scale through a platform of chambers so that they can handhold the awareness, their scaling in their funding and all those stories to happen at fast. Just एक छोटी सी चीज आपसे शेयर करूंगा. About 1 year back we started in an experiment. मैं इसको मेरे दिल के करीब है. ये सारा जो पैनल है इनके साथ मैं पिछले कई सालों से काम करता हूँ, स्टार्टअप्स के साथ, इनोवेशंस के साथ. जो इन्होंने चैलेंजेस बोले, हमारे पास इनोवेशन एकेडेमिया से स्टार्ट होती हैं, उनकी अवेयरनेस नहीं होती, हम उसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कैसे लेके जाएं, उनके पास फंडिंग कैसे करें. तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आती थी हिंदुस्तान के टिपिकल फिलॉसफी को लेके, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की. एकेडेमिया सरस्वती के तौर पे बहुत कुछ है उनके पास, लेकिन वो वहीं के वहीं पूजनहार हैं, वहीं पे वहीं रहते हैं वो एकेडेमिया के. जो माँ लक्ष्मी है वो, उसका आपको पता है इन दोनों का ट्रेंड क्या है. भी आपस में इन्होंने कैसे, वो कहते हैं मैं बड़ी हूँ, मैं हूँ तो मैं एकेडेमिया को एनी टाइम आई कैन परचेज एंड डू दैट. वो कहते हैं मेरे अकल के बिना पैसा नहीं आता. सो देयर इज एन ए कन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन when you look into how to innovations can scale, and if they are scaling, how they can earn and create an impact. So I came across one company. The company guy, they were the passionate people who said, let the innovators work, let the business people work at their own level, and let us create something through AI which can scale these stories in a bigger way. And they are also, I met them about 3 days back, उनके पास वुमन के इंक्लूजन और दिस पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के इंक्लूजन के ऊपर दे आर वर्किंग वेरी सीरियसली, और ग्लोबल उसको रिव्यू करते हैं आपके आइडियाज़ को भी. इवन जो आते हैं आपके कोई पेटेंट्स पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के अराउंड अगर आपके पास पड़े हैं, जो आपकी रिसर्च पेपर्स जो कहते हैं इनको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, उनको दे रिव्यू करके दे विल क्रिएट कंपनीज फॉर यू फॉर एन ए ग्लोबल इम्पैक्ट आल्सो. मैं उसका कंपनी का नाम नहीं लूँगा बिकॉज आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग, आई एम जस्ट सेइंग that these types of inclusion at the global level also started approaching to India because there is a huge stories happening in India. Thank you very much with this. Thank you very much.